as far as the Indians are concerned, we are always perennially, in a state of confusion. Yeah. In a state of confusion. Is Ayurveda scientific or not scientific? Should we believe it or not believe it? These are perennial confusions in the minds of especially educated Indians. And I don't blame. I don't blame. Um, we need to question. There is no need to believe something just because it belongs to our past. Not everything in the past would be perfect. There would also be some imperfections. But we pride ourselves and say that, we live in the time of science and rational thinking, which means that we should look at these subjects in an objective way, in an impassionate way, devoid of emotions. We don't have to believe something just because it's part of this country's, culture. So we need to look at it in a very objective manner. So was it past perfect? Which means, did this system of healthcare, was it able to handle the health of the society? Did it keep the Indians perfectly healthy, in perfect health condition? Were there diseases that they were able to handle successfully? Were there diseases they were not able to handle? So was it a perfect system? Is it worth considering it in the present? Because we live in the era of science and technology and research and development, and in contemporary science, era of contemporary medicine. So we know the sophistication of the instruments that are being used for diagnosis and treatment. In such a scenario, can there be a continuity of the past healthcare system, which is Ayurveda? And is there anything that we can use for using it in the future? So let us look at the past, present, and future of Ayurveda. And let us begin with the past. Past is very important, not only in the context of Ayurveda, but for any country. Past, we need to know what our past is. In all its glory, perfection, and imperfections, we need to know it. Because past defines the present. We are what we are because of our past. We will be what we would be because of the present, right? So past is very important. And let us try and connect uh, some important dots from Ayurveda's distant past. So before that, let us look at the quick timeline of evolution of modern medicine. Why do I have to talk about modern medicine? Because it's a system of medicine that we are all very familiar with. Not only that, we have immense faith and trust in that system. There is very little trust in Ayurveda. But modern medicine, we see it working. We are living in a time where research is being undertaken at a global level in modern medicine. So we have immense trust and faith in that system. So let us look at the timeline of this modern medicine before I go on to talk about Ayurveda. So we know that Hippocrates, who lived between 460 and 377 BC, he is the father of Western medicine. He emphasized on logical rather than supernatural explanations for illness, and he relied on logic and asked people to do away with superstitious beliefs. So he laid the foundation for logical thinking in Western medicine. But then
dissection of cadavers were forbidden on religious grounds in those days. And it was Galen who lived between 130 and 201 AD. He was the first one to dissect cadaver, not of human beings, but of pigs. Because it was, forbidden to dissect human cadavers. So it was believed by them that the pigs were close to humans. So they extrapolated human anatomy from that of pigs considered most similar to humans. And pigs' anatomy served as the basis of Western medicine for the next 1500 years. So till 16th century, the human anatomy was extrapolated from the anatomy of pigs, which were considered similar to humans. So in 1539, there was a landmark judgment by an Italian judge. He said that the cadavers of executed criminals can be dissected and anatomy learned from them. So Vesalius was an Italian physician. He corrected the mistaken notions of human anatomy of Galen, used till about 1540 AD. So till 1540 AD, it was the anatomy of pigs that were used to understand the anatomy of the humans. So this marked a crucial step in Western medicine. There were a number of other discoveries which played a crucial role in the development of Western medicine as a scientific discipline. So, for example, circulation of blood, discovery of that by William Harvey, discovery of microscope by Robert Hooke, and this huge compendium on pathological anatomy. All these were landmark, discoveries which helped Western medicine transit to a scientific discipline. So technology and experiments brought in scientificity to Western medicine. Now let us look at Ayurveda, evolution of Ayurveda. So one big difference between Western medicine and Ayurveda lies in the definition of Ayurveda. Ayurveda is not the science of disease, it is the science of life. Western medicine is a science of disease. So it's a fundamental difference between the two disciplines. So the terrestrial evolution of Ayurveda begins with sage Bharadwaja. Of course, there are stories, before dating Ayurveda prior Bharadwaja, but I would like to start with this because the terrestrial evolution of Ayurveda, history of Ayurveda begins with sage Bharadwaja. Who was sage Bharadwaja? Well, we don't know whether he looked like this, but maybe not. So Bharadwaja was a great logician, Tarkashastra. He was a famous teacher of logic. It's mentioned in Udyotakara's Nyayavartika. Even Ayurvedic classical texts mention Bharadwaja as a teacher of logics. And he laid the foundations for Ayurveda's logical concepts from which theories of Ayurveda evolved. People are always surprised when I tell them that Ayurveda is a theory-based system. It is not an empirical system. Of course, it would have started off as an empirical system, as would any medical science, but it has theories. And people would be not surprised, they would be very upset when I tell them that modern medicine does not have theories. Yes, it's a fact. Modern medicine is an empirical science. Ayurveda was also an empirical science. It still is, but it has evolved theories to understand and manage health and disease. So Bharadwaja laid the foundations of Ayurveda's logical concepts from which theories of Ayurveda evolved. He created 8 medical specialties. So if you look at the evolution of modern medicine,
they started off with two specialties. One is surgery, the other is internal medicine, treating with medicines. And later on, there were new specialities which developed. For example, children were considered small adults, and pediatrics as a specialty started only probably about 80, 90 years ago. On geriatrics, another specialty, is just few decades old. Whereas if you look at the evolution of Ayurveda, they seem to have put a lot of thought into it. And it started off with having 8 specialities. And Bharadwaja wrote a number of books and he had many students. And so, what is the timeline of Ayurveda? So, it began with a conference on Ayurveda at the foothills of Himalayas. How do we know it? We have documentation, we have texts which mention this. In fact, I do not know if any of you have heard of this text, Charaka Samhita. It's one of the classical texts of Ayurveda. It is actually a monograph of proceedings of a conference that took place at the foothills of Himalayas. And when did this happen? Well, it's very difficult to say. Lost in the midst of antiquity. Historians give different dates for this, and I'm not a historian, but as a physicist, when I put things together logically, probably around 3000 BC, probably. Anyway, it doesn't matter. What is the content in it is what is important to us. So what happened? It was a historic assembly of Ayurvedic acharyas from not only India, but neighboring countries as far as Greece and China. The names are mentioned in the text, and they aim, surprisingly, to find a solution for the increasing ill health. We are still debating about it. We are talking about increasing ill health in the current time. And in those days also, they were talking of worried about increasing ill health. And they deliberated on the advent of diseases impeding long life and happiness of not only humans, but all creatures, animals, insects, plants. This word sarva bhuteshu is something that is repeated often in the text. It is for Ayurveda, and the quest for health is for all living beings, including plants and animals. So you can see the reference details mentioned at the bottom of the slide. So Bharadwaja explained the science of life and the 3 principles, etiology, symptomatology, and therapeutics, as a means to well-being. These 3 are still the fundamental principles of medicine. The causative factors, the etiology, how the disease has progressed, signs and symptoms of the disease, and the treatment. Just because it was said Bharadwaja, a great acharya who mentioned this, people did not accept this. They deliberated on this, they debated, and only then they accepted these as basic components of a health or a medical system. We generally believe that things were very dogmatic in those days. Ideas were pushed down people's throat, and nobody was given the chance to question. Questioning is not part and parcel of our cultural development. It is farthest away from the truth. In fact, if you get a chance to read the English translation of Charaka Samhita, there are chapters where the students are grilling and questioning the teachers, and they are disagreeing with the teachers. So questioning and debating was part and parcel of development of ancient Indian sciences. And Atreya was Bharadwaja's very famous student, and he chaired this conference which took place at the foothills of Himalayas. And while his teacher laid the foundation of logic for Ayurveda, Atreya ushered in rational and scientific medicine. Atreya was a great rationalist, teacher, and Vaidya. He emphasized on a number of things, and I have just, sharing with you all just a few of them.
He emphasized the importance of scientific and logical thinking in medicine, importance of scientific discussions, debates, conferences, how to hold conferences, how to select the venue of a conference, how to select the theme of a conference, and how to select the topic of discussion, and so on. Very interesting. Some of the chapters on this are. He also laid down elaborate rules and regulations for conducting meetings, choosing topics for lectures, how to write and review scientific work, teaching methods, writing books for lay people, writing book for domain experts, how to arrange and classify medical concepts for books, spotlighting salient points of a subject, how reason and logic are compromised in a hostile debate, how to actually to conduct a debate, and how to identify a true physician from a quack. I mean, imagine that these were things that were discussed and emphasized upon 5,000 years ago. And it's an irony that we Indians call the Ayurvedic Vaidyas quacks. I think it's a big irony. So Atreya had many students. Atreya himself was a student of Bharadwaja, and he had many students. And 6 of his students were quite famous. And they were asked to compile all information into a treatise, complete treatise, and also they were asked to document the proceedings of this conference. And all the 6 compilations were put before the committee, just because they were students of the chairperson. Their whatever they had written were not accepted. They were scrutinized, and the committee found that all the treatises were well written, but that written by Agnivesha was considered the best and most authoritative, and it was declared so. So while Atreya was instrumental in ushering in rational and scientific medicine, Agnivesha, his student, codified and systematically compiled the information for the very first time. So he made a detailed record of the exposition of his teacher Atreya and the proceedings of the conference, and he codified the knowledge and arranged it in the form of a treatise which is called Agnivesha Tantra. What we know as Charaka Samhita is actually written by Agnivesha Tantra. Is known as Agnivesha Tantra, written by Agnivesha. Charaka was a later time Ayurvedic Acharya, and he redacted Agnivesha Tantra, and for some reason Agnivesha Tantra is now known as Charaka Samhita. And it probably is the first record in world literature of a systematic compilation and codification of knowledge of medical science. So from teachers to worthy students, Bharadwaja to Atreya to Agnivesha to Charaka to Dridabala, who hails from Kashmir, at least 1,000 years had passed from Atreya to Dridabala. So you can imagine the number of acharyas would have come in these 1,000 years, how many patients they would have seen, how many observations they would have made, how many diseases they would have encountered, how many failures, how many successes. All these were systematically documented, and our ancestors were great observers and documenting their observations. It is said that prior the 1st century AD, there were at least 500 textbooks of Ayurveda. We have just 2 of them now. We are not even aware of what we had and what we have lost. I don't think there would be any country in the world who are oblivious of what they had and what they have lost. Indians are considered to have the smartest brain in the world, but we don't know our past. We don't know what our ancestors did. We don't know how many treasures we have now and we do not have. The surgical discipline begins with Dhanvantri, is not Lord Dhanvantri, is the
This Dhanvantri is a king of Kashi. So Bharadwaja, another student was Dhanvantri. He specialized in surgery and he was a king of Kashi and he established the university in Kashi. Probably this is the first university that was established in the world and in India as well. And Sushruta, who is considered son of sage Vishwamitra, he was a student of Dhanvantri, he was a great surgeon, and he is the author of Sushruta Samhita. This is another textbook which has survived in its entirety. So in Sushruta Samhita, Sushruta talks about the importance of dissection of human cadavers. He elaborates methods of preparation of a cadaver for dissection, the instruments used for dissection. Please remember that till 1540, in Europe or in the West, it was pig's anatomy which was considered similar to that of human anatomy. So it was after 1540 that the first human cadaver was dissected. So here we are talking about a system which 5,000 years ago or maybe even more, the emphasis it laid on dissection and learning the human anatomy the proper way it has to be learned. So Sushruta talks about how to develop expertise of surgery and the importance of necessity to practice on cadavers and vegetables, importance of anatomy for practicing medicine, sterilization of surgical instruments. So these are not concepts that are the birthright of the contemporary medicine. Various types of surgical instruments and bandages and sutures, and a lot of information in that. Cataract surgery, rhinoplasty, autoplasty, all these are mentioned in Sushruta Samhita. So it's a long list of Ayurvedic acharyas, thousands of them, and I have just named a very, very, very minuscule percentage of the numbers. From Agastya to Tirumular, Kashyapa, Nimi, Jivaka, who was the personal physician of Buddha, Nagarjuna, Vagbhata, Bhavamishra, Madhavakara, Sharangadhara. So with a long list of outstanding Ayurvedic acharyas, the list of milestones that Ayurveda went through is also recorded. So if you look at modern medicine, technology and experiments defined the scientificity of modern medicine. And if you talk of Ayurveda, it was scientific thinking from the word go. From the word go, it was logic, which was the cornerstone of Ayurveda. Scientific and rational thinking was the foundations of Ayurveda. So scientific thinking has played a major role in the development of Ayurveda. And Ayurveda is a melting pot of many, many disciplines. From Vriksha Ayurveda, which is Ayurvedic botany, Mriga Ayurveda, Ayurvedic veterinary, the veterinary science of Ayurveda, yoga, meditation, mantra, astronomy, how the planets influenced one's health, philosophy, because Ayurveda considered humans as having many dimensions of existence, which included physical, physiological, psychological, emotional, and even spiritual. So, philosophy was also part of understanding human existence. Material science and metallurgy, because these were required for making the instruments. Civil engineering and architecture, um, because hospitals were built even in those days. Agriculture, because it gives us our food, and food we know is how it impacts health. Ethics, what are the ethics that people should follow in their life to be healthy, and what are the ethical guidelines of medical professional. Mathematics for calculations, chemistry for making medicines, physics for understanding the nature of reality, pharmacology, culinary science, nutrition, water management, environment, ecology, all these
were various other disciplines which contributed to the development of Ayurveda. So I try to give a very brief bird's eye view of the evolution of Ayurveda. Now let us see what relevance it has in the contemporary world. So the present is the time of increasing ill health. You can see it. I hope you're not missing this one here. Increasing ill health. This is an irony because, as we know and as I said, we live in the era of sophisticated technologies. We have so much nuanced information about how a biological system works. We have awesome instruments which can help us look at the genes and proteins and receptors and whatnot. We have instruments like magnetic resonance imaging and functional MRI, which help us peep into the way mind works, the brain works. So there is no dearth of information, there is no dearth of research and science and technology, there is no dearth of research. So logically, the diseases should have increased. It should have been a healthy environment, healthy world. But we know that it is not. Diseases are increasing by the day and we are running out of names for diseases. Just like we celebrate our birthday, we have World Diabetes Day, World Obesity Day, World Cancer Day. Even in cancer, we have World Breast Cancer Day, we have World Prostate Cancer Day, we have World Liver Cancer Day. I think it's time for all of us to stop in our track and think what has gone wrong. Something is not right, right? We should not be celebrating days, earmarking days for celebration of diseases. And India is a museum of diseases. You name it, we have it. All important clinical trials, people would like to do it in India. Even the rarest of rare diseases, there'll be somebody in India who will have it. I don't know whether we deserve it or not. Our Ayurvedic acharyas don't deserve it. For the amount of hard work they have put, for the wonderful way that they have developed this science and given it to us. Even though we have lost much of it, we still have something left. We are not utilizing it to improve our health. So present is also the time of paradigm shift in thinking in modern biology and modern medicine. From being a reductionistic approach, reductionistic viewpoint, modern medicine and biology, they are having a paradigm shift and they are talking about holistic health, systems approach in medicine, systems biology, and so on. So this is the model of human system. We are all very familiar with it. We study in our school. Anything physical in the world is made up of atoms. Of course, yes. So is our body. Our body, we are all physical entities, although we have other dimensions, but we are physical entities. So any biological system, including humans, it's also made up of atoms. It's a fundamental building block. Atoms make molecules, molecules make organelles, then you see cell, tissue, organ system, and the entire organism. So it's a structural hierarchical model of conceptualizing how a human system is made of. So this is called structural reductionism because we are reducing the entire organism to in terms of the structural components down to the level of molecule. In fact, modern medicine is also called molecular medicine. It understands diseases at the level of molecules and it also tries to treat at the level of molecule. So for example, if you take diabetes, the villain molecule is glucose.
excess of it, or reduction of insulin. So if it's a reduction of insulin is given as an injection. If it is excess glucose, there are wonderful ways to suppress it and get it out of the system. Now here, there is something called emerging complexities, emerging properties. This is what systems biology talks about. So for example, if you look at atom, it does not have chemical bonds. Chemical bond is a feature that you see at the level of molecules. So as you keep moving up the structural hierarchy, you see that there are new properties which emerge. Function, replication, specialized function, more specialized function, and so on, right? So you may say, yes, I mean, intuitively we know, so what? Something very interesting occurs when we go from one level to the next level. Let us take a very small step from atom to molecule. Let us take the example of water molecule. We know that water molecule is made up of hydrogen and oxygen atom. Let us take a small property, very simple property, boiling point. We know that the boiling point of water is 100 degrees centigrade. Does anyone know the boiling point of hydrogen and oxygen? That of hydrogen is minus 252.8 degrees centigrade, and that of oxygen is minus 183 degrees centigrade. They don't add up to 100 degrees centigrade, right? Right? So the moral of the story is that the property of oxygen is not equal to property of oxygen. Property of water is not equal to property of hydrogen plus property of water. So you can look at all the properties of water and you will find that it's not a linear combination, addition of the properties of the individual constituents, right? So from atom to molecule is a very small step, but you see the complexity which has evolved. So if this small step from atom to molecule can give rise to such complexity, you can only imagine what complexity would have evolved, from molecule to the entire organism. It will be multifold complexity. Complexity from molecule to organelle, organelle to cell, and so on. So the question here is, when you try to manage a complex system or a system as complex as a human system, do we manage it at the beginning of complexity or end of complexity? But let us leave this question aside for a moment. Let's see how Ayurveda has conceptualized the human system. If you need to manage a system, which is what Ayurveda was trying to do, just like modern medicine is trying to manage health and disease. Ayurveda is also a medical science, and it also tried to manage health and science. If one has to manage a system, we need to have a model. We need to conceptualize the system. Otherwise, we cannot handle it in an intelligent way. So how did Ayurveda conceptualize the system? They considered the humans as having different dimensions of existence. So for example, they talk of a structural domain, and this is networked through channels. In Sanskrit, the language of Ayurveda, it is called Srotas. So the entire physical body is networked through channels. These would be lymphatic vessels, blood vessels, nerves, and so on. And then they talk of a physiological domain, which is defined by parameters called Vata, Pitta, and Kapha. Some of you may have heard of these terms. And then they talk of a psychological domain, which is networked through a set of psychological parameters called Sattva, Rajas, and Tamas. These are subclassified into 16 subtypes. And then you have the domain of consciousness. And this is connected through levels of awareness. These are called Panchakoshas. And this domain of existence is
dealt with in greater detail in yoga. But this is how Ayurveda has conceptualized the human system. But so each domain is intra-connected, which means that it is connected within itself. And you can see these areas of overlap, whereby the different domains have parameters which connect them. So the domain of structures and the physiology, it is connected through Vata, Pitta and Kapha. The physiological and the psychological domain is again connected through Vata, Pitta and Kapha. The psychological and the domain of consciousness is connected through Sattva, Rajas and Tamas. And I think the beauty is in this last part, where the subtlest aspect of our existence is connected to the gross structural aspect of our existence through this first level of awareness, which is the physical body. So when we talk of awareness, we have to be first aware of our physical existence, right? Then only you talk about something subtler. So you see the kind of way Ayurveda has conceptualized the human system, and it is a seamless interconnected whole. This is the model adopted by Ayurveda. So we are seamlessly mind, body, and soul in Ayurveda. And these are two different ways of conceptualizing the same human system. So one is talking of seamless interconnected whole, and the other talks of structural reductionism and system reduced to smaller components. So this is a testimony of the beauty of human brain. It's the same system. One set of people have conceptualized it this way. There is nothing right or wrong about it. Both models have their pluses and negatives, advantages and disadvantages when you talk about managing the system. So when we talk about management, whether it should be at the end or beginning of complexity, we know that the current management in modern medicine is at the beginning of complexity, and Ayurveda is at the end of complexity. I think it's just logical thinking to know that when you manage a complex system, you need to manage it at the end of complexity, not at the beginning of complexity. You cannot micromanage a complex system. So when modern medicine tries to manage it at the level of molecules, that is why they are facing so much problem. We talk of side effects. We talk of one medicine leading to another clinical problem. It's because at the wrong level that they are managing a complex system. So Ayurveda understands human system as a seamless interconnected whole. And this is in stark contrast to the structural reductionism or structural reductionistic way that modern medicine understands the human system. So this picture brings out the fundamental difference between these two systems. So this is on the left side, you see a landscape of the forest. And from the height of that helicopter, you can capture the landscape in its entirety. You cannot get nuanced information. You cannot get information about the individual trees and the branches and the leaves. No, you can't, because the height is too much. You don't get those details, but you get to see the entire landscape. So if a few trees are uprooted, you can pick it up from that height. You can see how the landscape changes. Now, the picture on the right side is the microstructure of one of the leaf in one of the tree in this forest. So from this level, you lose out on the whole picture, and from this level, you lose out on the nuanced information. So, as I said, present is the time of systems biology and systems approach in medicine. These are concepts which are being talked about now. And
it has not been translated into successful treatment. Lot of research is going on in these areas, but Ayurveda has a systems approach, not only as a concept but as a working concept. So some more information on how exactly Ayurveda handles health and disease at a pragmatic level. You can have concepts, but how cleverly they have been translated into a workable model. So to handle human system, you need to have further classifications. So Ayurveda talks about gross and a subtle body, and the gross body is classified in three different ways. One is based on structures. This deals with the physical aspect of humans. The next is a functional classification, which deals with the physiological and psychological aspect. And then you have a system-wise classification which deals with physical, physiological, and psychological aspects of humans. And then the subtle aspect of human deals with levels of awareness. It deals with psychological and different realms of awareness. So let me quickly give you all an idea about the functional classification, because this runs as an undercurrent to the entire understanding of health and disease and management of health and disease. So Ayurveda has identified three functions which it considers as important for the functioning of a human system: movement, metabolism, and transformation and growth. In the specific context of Ayurveda, these are called Vata, Pitta, and Kapha, VP and K, to make it simpler. And VP and K are characterized by a set of parameters which are biophysical in nature, chemical, physiological, and psychological in nature. And it encompasses all the parameters which comes under VP and K. They encompass the entire psychophysiological functions of humans. So there are no functions which comes outside the purview of this classification. So these are some examples of the kind of parameters that Ayurveda uses. Although these are in English and in terminologies that we are fairly familiar with, I can assure you, please believe me, this is not my imagination. I have taken these from classical Ayurvedic texts. So look at the biophysical parameters that Ayurveda talks about: dryness, fluidity, adhesivity, size, stiffness, viscosity, and so on. pH, of course, Ayurveda does not use the word pH. It talks about acidity. So that is the only terminology I have inferred and put it as pH. Temperature, and look at the psychological parameters. These are not all the parameters that Ayurveda uses. These are just some of them, just to give you all an idea. Creativity, anxiety, confidence, leadership quality, patience, fear, these are all emotions that we can identify ourselves or others with. All these parameters, some physical in nature, some physiological, some chemical, some psychological, all these come under the classification of VP and K. And these parameters are networked. They are connected, associated with each other. So here you can see V1 to V7, P1 to P7, and K1 to K7. These are some parameters which comes under VP and K. And when this network is in balance, it denotes health, and disease is a system perturbation in Ayurveda. I'm specifically using the word system perturbation because this is a terminology that is beginning to be used in modern medicine as well. Modern medicine is moving away from, identifying a gene or a molecule or a protein, as the causative factor of disease. So it's beginning to say that it is a system perturbation, and that's exactly what Ayurveda tells. And look at the clever way in which, by which, our forefathers tried to handle the management of health and disease, because they have understood the humans
based on VP and K. They have brought all factors which impact health and disease onto the same platform of VP and K. Be it plants which are used for food as well as medicine, or animals, lifestyle activities, clinical symptoms, everything speaks the same language of VPK. So it's very easy to transit from one to the other. And the management is a very comprehensive management. There are physical interventions in terms of medicines, procedures, and diet. There are also non-pharmacological interventions in terms of yoga, meditation, mantra, and lifestyle activities. We saw the past, we saw the present, and what about the future? Future is going to be even more complicated. Not only have we prepared ourselves very well for more diseases by having horrible diet and lifestyle regimens, we have also successfully degraded the environment. So whatever can be done to spoil, we have done. We have done a very good job of it. So can Ayurveda offer anything for the future? So this is the medicine of future according to modern medicine. Holistic health is what they are talking of. They are talking of the importance of diet and lifestyle and mental health, societal health, biological health, environmental health. So they are talking about the different levels of existence and how these are connected and how the health of each of these levels is important. Individual self, our emotional, spiritual health, physical health, physiological health, psychological health, emotional health, interpersonal relationships, social health. All these play it is being taken cognizance of the importance of each of these levels in controlling the health of individuals. So this is a multidimensional understanding that is modern biology and medicine, what they are aiming at. And this is the multi-dimensional understanding of health in Ayurveda. You look at the number of dimensions that Ayurveda takes cognizance of while understanding health: sleep, food, physical health, physiological, psychological, environmental, societal, sensorial health, right? What kind of things we hear, what kind of things that we see, whether we overuse it, that is sensorial health. Do we talk in excess? Do we talk in tones and tenor that we should not talk about? Because that affects health. If I'm rude to anybody, if I'm angry at anybody, the first person to be affected is me. My health is going to be affected. The person I'm rude to depends upon his or her mental status. If they are people who are not bothered about what others say, their health will not be affected. But my health is going to be surely affected. So all these comes under sensorial health and lifestyle. And because of this multi-dimensional understanding of health, health is multi-parametric in Ayurveda. There are a whole lot of parameters. There is no dearth of parameters, health metrics in Ayurveda. You can see some of them here. And health is a multimodal delivery in Ayurveda. There are ingenious ways of delivering health that Ayurveda has come up with. Some of them are part of local traditions, part of our local cuisine, incorporated into the festivals, how we celebrate them, what goodies we make and eat. All these are in sync with season and the region and the climate of that area. We have family traditions, regional rules, festivals, age dependent, a whole lot of, I can go on and on and on. But this is just to tell you all how Ayurveda is also futuristic. And these are, again, futuristic concepts in modern medicine. Modern medicine is talking of personalized treatment and health, preventive medicine, promotive health systems approach, circadian rhythm,
and health, mind and health, precision nutrition, therapeutic nutrition, sustainable medicine, environmental and ecological. All these are fashion of the day and in things of discussion these days. And these are concepts which are in working mode in Ayurveda. So Ayurveda has something to offer for future. In fact, it has a lot to offer for future. So let me end with what Ayurveda believes in. Ayurveda is categorical when it says don't make business out of health and disease. This is for all creatures. Everybody has to be healthy. Healthy people make healthy nations. Healthy nations make healthy world. Healthy people means it's also healthy thinking, right? So may all be happy, may all be healthy, may all enjoy prosperity, and may none suffer. And thank you very much. I once again thank the university thank you so much for giving me this wonderful, wonderful opportunity to share some of my thoughts. Every time I speak on Ayurveda, I do not know how much the audience appreciate, but I thoroughly enjoy talking about Ayurveda. Thank you so much. Any of the students want of life sciences, beautiful question. Don't hesitate to ask questions. Forget your teachers are all sitting here. Vaishnavi. Somebody from biochemistry? So, Madam, I have a question out of curiosity that, when we are saying that Ayurveda does not deal in isolated systems, in physics we talk about law of thermodynamics and we talk about closed and isolated systems. So we are saying that when we are talking about the modern medicine, we are talking about atoms and molecules. And when we are talking about Ayurveda, we are talking about uh, a human being as a whole, physiological system. So if I say that, even we can be also treated as an isolated system when we talk about the entire universal aspect or, the, so how would we connect this with? How do we define this? Ki top to bottom approach or bottom to top approach? Thank you for this wonderful question. We are not isolated. Ayurveda is categorical. In fact, there is a beautiful saying in Ayurveda that the whole universe is an expansion of our consciousness. We are not isolated. Everything is interconnected. This is the fundamental, difference between the two philosophies. So, in modern medicine, if you look at evolution, it is bottom up, right? So, started off from atoms, then molecules, then complexities, emerged as we proceeded to higher levels of structural complexities. In Ayurveda, if you talk of evolution, of course, Ayurveda has taken the theory of evolution from Sankhya. So, Ayurveda believes that there is a super consciousness. You can call it God, you can call it Paramatma, you can call it great intelligence, whatever you want. And we have descended from that. So, it is a top down. So the aim of, so all of us have that element of the super consciousness in us. So the aim of a human life is to realize where we have come from and try and achieve it. So there is nothing, and your name is Chaitanya, right? Animals have Chaitanya, even plants have. All these consciousness, which are reflections of the super consciousness, they are all connected. So there is no talk of isolation at all. Psychologically, we can live in isolation. We can think that we are different. We are not. What happens in the society affects us.
What happens in the environmental health affects us, right? So physiologically, we are connected. We are connected. So only, concept wise, you can think we are isolated. We are not. So there is some amount of isolation, but not completely. So everything is an interconnected whole. So in fact, if you look at how this concept of structural reductionism evolved in modern medicine, it is based on classical physics. It is based on Newtonian physics, which is what brought in this reductionism. How atom is the fundamental building block of the entire universe, and everything can be reduced to the level of its fundamental building block. So in this model, which has been adopted by biology to understand the humans, there is a dealing between mind and matter. Mind and matter is different in classical physics. They are two different entities, right? So if you look at this evolution, atoms, molecules, this, where is the role of mind? Did it emerge at some point in time? That question is not answered. Whereas if you look at quantum physics, it talks of an entirely different reality. It talks of a reality where everything is connected with each other. It talks of everything in the form of waves. When you say waves, there is no beginning and end. Everything is connected. Now they are, some very, very interesting experiments or studies are going on in the West, where they are trying to incorporate this fundamental property of the fundamental reality, which is interconnectedness at the level of cells. So they are trying to shake themselves off this classical physics, reductionism, and they are trying to incorporate this interconnectedness at the level of cells. Now, very interestingly, if you look at the way reality is understood by ancient Indians, they talk of interconnectedness. I'm not telling that we knew quantum physics or quantum mechanics, but the essence of quantum physics at a macroscopic level, that everything is interconnected, the reality is interconnected. The same concept we see in Ayurveda as well, that everything is interconnected. And it is because of that understanding of reality that the way Ayurveda has conceptualized the human system has taken place. So nothing is in isolation at all. Saying that it is more theoretical rather than empirical. Do you think that, we never have to question because everything has to be questioned, even in Ayurveda. We need to, don't you think that we should have more empirical data related to Ayurveda? Empirical data can change, right? What is more superior is the theory. What you get out of, we have law of gravity, we have law of thermodynamics, right? These are all laws and theories, right? They are based on empirical observations, right? You make the observation, you do the experiments, and then you come out with a general theory, and that can be applied to the systems. So what Ayurveda, we are talking about a system which is at a very, very conservative estimate is 5,000 years. 5,000 years of, we are now talking of big data. These people must have had huge amount of data. It's not just big data, huge. 5,000 years of observations and documentation. That is most important. You can observe a thing for 10,000 years. If you have not documented it, then it makes no sense. Huge amount of data, and and they have studied this. Now we have all these multivariate analysis, and supervised learning, unsupervised learning, artificial intelligence, and all those. So it's actually very, very surprising as to how they brought order into this data, how they brought their observations and made a theory out of it. So the advantage of a theory
in medical science is huge, because you do not have to do research for all the problems. So if it's COVID, you need to do research in modern medicine. If it is autoimmune disease, multiple sclerosis, research. If it's a dengue, research. Chikungunya research, tuberculosis research, every disease has to be researched in modern medicine because it remains empirical, it does not have a theory. Now, Ayurveda, people always question as to how Ayurvedic Vaidyas, or they make a statement that they can handle chikungunya or multiple sclerosis or COVID. It's because they have a theory. What I said about Vata, Pitta and Kapha is actually a theory of Vata, Pitta and Kapha. All the clinical symptoms comes under this classification. Clinical symptoms don't change, whether it is chikungunya or COVID. Again, the respiratory problem, fever, joint pain, rashes, symptoms are the same. 5,000 years, the symptoms were the same. 10,000 years later, symptoms will be the same. Breathing problem, what else can happen? And these are classified in terms of Vata, Pitta and Kapha. So using this theory, you can diagnose the disease. So it's having a theory is not something to be looked down upon, but it takes it to a higher level, because you don't need research for every damn disease. So we can have one question, last questions. Yeah. Hi. Good morning, ma'am. Myself Sita, and in the beginning you said कि जो आयुर्वेद है वो हमारा साइंस ऑफ लाइफ है, एंड वेस्टर्न जो मेडिसिन है वो साइंस ऑफ डिसीज है. क्या ये दोनों इंटरलिंक नहीं है? क्योंकि फॉर साइंस ऑफ लाइफ हम अल्टीमेटली डिसीज को ही क्योर करना चाहते हैं, जिससे कि सर्वाइवल ऑफ द लाइफ बढ़े. So evolution of the Ayurveda and evolution of the Western sciences, the objective of both the sciences are equal. So basically, where Ayurveda has reached the supremacy and Western sciences isn't in the supremacy. Thank you. Thank you for that lovely question. I have given so many talks of Ayurveda. This is the first time I am hearing this question. See, so disease is where something goes wrong in the system, right? So if you want to handle, and so many things can go wrong in a system. So if you want to understand that, you need to understand the system in its normal form, right? Which means in a healthy way. So you need to understand how a system functions when it is healthy. This is where Ayurveda scores over modern medicine, because modern medicine has started off from understanding the disease. Now, it is only recently that they have started talking about health. It is only recently that they have started talking about the importance of diet and lifestyle. So from disease, they are coming to health. Ayurveda has a good grasp of how system functions in a healthy way. From this, they know it's very easy to work out what are all the things that can go wrong. So the approach to health is different. And that makes Ayurveda ahead of modern medicine, because now you know that many diseases are diet and health, lifestyle related, right? And now we are also talking about how to improve health, preventive health, promotive health. The best is prevention. Prevention is better than cure, right? And cost-wise, economy-wise, prevention will be cheaper as well. It's sustainable. We are talking of sustainable health as well. So that's where Ayurveda will score. Thank you for that lovely question. Okay, I was told that we have about 10 minutes more, so maybe we can take one or two questions. Yes. Madam, myself, Dr. Shashank from Biochemistry Department. So it would be. I'm very frightened of biochemistry. No, Ask me a simple question. Yeah, definitely, I will be talking about very
very simple question to a person having such a pain and sincerity for this Ayurveda. That's why I am asking question. So, madam, this is a question from the student side, where we are lacking in Ayurveda. Where we are lacking. Do we not have faith in this particular system? Because based upon this particular system, the Western countries are making much more money, and the Chinese system they are practicing at at a very huge level, you can say. But where we are lacking. I won't say what we are lacking. I can say what we have: stupidity. Yes. We have honed it. We have honed that skill of, stupid thinking. We either look down on our system past or we glorify it. Objectivity is not there. And we still have a colonial mindset. And if we look at things in an objective way, forget for a moment that we are Indians and look at what is there in the ancient Indian sciences, then we will know the beauty of what is there. And we are so besotted with the Western science and Western way of thinking, and we still have to or in that mindset West is best. And the Westerners are very, very smart and clever. We have to give credit to that. There's no point blaming them. We only have to blame ourselves. I mean, now there is so much talk about yoga. Why? Because the West has endorsed it. But now it's gone beyond endorsement. There are a lot of people who are delinking yoga from India. Yoga is now called cardiac coherence. So yoga is gone out of our hands. And the same will happen to Ayurveda as well. I have no doubt about it. It is going to happen unless we wake up to it. Sure. Just a small query, my brother. Can we just connect the pre-diagnosis with this Ayurveda? So whether we can just connect the pre-diagnosis based upon the recent sciences, and we can just club the Ayurveda with pre-diagnosis. It is one step forward in the case of the prevention of the disease. No, Ayurveda already has a pre-diagnosis. So if you are, thinking of, integrating something from modern science to this, I am probably a loner in this who is not for integrative medicine. I'm the loner. Everybody talks of integrative medicine. I will tell you why. The fundamentals are very different. The way the human system is understood is very different. The metrics used, the parameters used for diagnosis, they are very, very different in Ayurveda and modern science, modern medicine. Ayurveda has a lot of parameters for diagnosis because if it's not able to diagnose, it's not a medical science at all, right? And the methodology it uses for diagnosis is very different. Unless we have technologies which can give information about diseases in terms of Vata, Pitta and Kapha, the pre-diagnosis using these instruments will not be useful to Ayurveda. That said, that there may be specific diseases where the diagnostic technologies can be used. That has to be researched into and thought of. So this is like, integrating, bringing together modern medicine and Ayurveda is like, bringing together physics and chemistry. Physics is physics, chemistry is chemistry. You can have physical chemistry, you can have chemical physics, you can have mathematical physics. But these are two different subjects. Their priorities, the standpoint is different. The parameters used are different. If you are in the chemistry lab, you only use the parameters, which sync with chemistry, right? So if you are in the physics, you don't use chemical parameters. So the standpoint, how a system is looked at, defines what terminologies are going to be used. So Ayurveda has a different perspective on the human system. Allopathy has a different perspective. Terminologies are different. And
trying to get together, bring this together, it will be a death knell for Ayurveda. Goals are different. Goals are different. But what we can do is, we can take the best of both and see how information from both can be used for the benefit of patient. Otherwise, the beauty of these systems should be left alone. I mean, this is my opinion. I don't think anybody would agree on that. Okay, thank you, ma'am. Thank you very much. I understand we are having some more queries from the students, but we can continue at the team. So, thank you very much, ma'am. So, you have did complete justifications with the talk. So, being from physics background, you have given the that enlightenment. You have given that different view to the Ayurveda, means how we should take Ayurveda with all the logics and all the reasonings. Is not that good. That is giving us immediate relief, but it is always a maintenance therapy. If you are having a blood pressure, okay, so it's only maintaining the blood pressure. It is maintaining the diabetes, but it's not providing the cure or the full treatment. So Ayurveda itself is a holistic science. Thank you very much, ma'am. Thank you. So we're having our next speaker, Dr. B. Ramanathan. So Dr. Ramanathan is PhD from IIT Kanpur and postdoc from Germans, Switzerland. So he's currently faculty in the IIT BHU at Department of Chemistry. His area of interest includes laser spectroscopy, Raman spectroscopy, and imaging computational chemistry. So Dr. Ramanathan, is a Fulbright fellow, former fellow of INAS. So INAS is a body of INSA. He's a member of Research Council, History of Science, INSA. He's chairman of IKS position paper of our state and of Karnataka for NEP 2020. So he will be talking about Indian scientific heritage in chemistry, material metallurgy, and overview. So a very warm welcome to you, sir. So I invite you for the talk. Thank you very much. Do I really need a mic or am I audible at the end? Can you hear me at the end? Yes, sir. Yeah, because I would like to move and not stand at one place. First of all, I would like to congratulate the Central University of Punjab for having praised my talk just after the talk of Professor Rama Jayasundar, who is a beacon of inspiration for who is a lot of generation, especially in topics that are slightly non-conventional. And I really congratulate the university and I thank the organizers for placing me just right after her talk, which also makes me quite precarious because to talk after her and in presence of Madam is slightly not only taking risk but also testing my level of knowledge. So in that sense, I am again thankful to the organizers for giving me this wonderful opportunity. Since this event is titled as Indian Science Broad Canopy, mathematics is part and parcel of that science. So for 10 minutes or so, I would also be talking about some aspects of mathematical heritage, given so that we do not have any speakers from that genre, and I'll be also talking something from my own area, which is chemistry and material science. Talking of mathematical heritage, when we talk how we came to reckon numbers, today we use numbers in a very seamless manner. बहुत ही अनायास रूप में आज हम संख्या का अवधारणा कर लेते हैं. But when we look at history, how it's not really it's a non-trivial question of reckoning numbers. संख्याओं की अवधारणा. So one example I've taken it from Subhash Kak's work, where there is a quotation and it says 2,202 yojanas per half nimisha. I don't want to explain anything else, but it just
gives you an impression that you have the concept of number right from a text which is dated as one of the earliest texts in the world, Rig Veda. So this is that Sanskrit quotation. I'll not bother you with, but Tathaja Samarite Yojananam Sahasre Dve Dve Shate Dve Cha Yojane Ekena Nimishardhena Kramamana. So this Sahasre Dve 2000, Dve Shate Dve, Dve Shate 200, Dve 2. So the take-home message from this slide is I want to give an impression that you have the concept of calling out numbers right from a very, very old times. In India, we have been having, I mean, thanks to even to this day, if you were connected with some Ayurvedic literature or classical Sanskrit, you still have the concept of using Indian numbers. So, the next couple of minutes, I'll be introducing to you some concept of Indian number system. Disclaimer, this is not numerology and nothing to do with that predictive aspect of the numbers from that point of view. This is to introduce to you how our ancient scientists, mathematicians, and even the Ayurveda people, how they had used alpha numerals. One of them is Bhuta Sankhya. Bhut, जो हिंदी में घोष का इंग्लिश इंटरप्रिटेशन आता है वो नहीं है. पंचमहाभूत से जो हम इसका अर्थ लेते हैं, भूत का यहाँ वो अर्थ है. तो Bhuta Sankhya, people used vocabularies, words to denote numbers. Say for instance, you had Kha, Akasha, Ambar, Purna to represent the number, numerical number 0. Like similarly, you had Chandra, Indu, or all the Paryayavachi of moon to represent 1. Like Sudhamshu, Nakshatrapati, Rajanisha. For 2, you had eyes and all the Paryayavachi synonyms for eyes. So on and so forth, you had all the numbers coming. Here you had, it is not a one-to-one mapping, because if I give you a word rasa, immediately you could map it to 2 different numbers, Shad rasa, 6 rasa, and Nava rasa from aesthetic point of view. So there may be some one-to-many mappings, but still this system, you can always make use of the context and infer whether that rasa should mean 6 or it should mean 9. So I mentioned the caveat that there is no always one-to-one synonymous mapping, but people who know the context will be able to decipher it clearly. There is another caveat here, because you see the word Veda appears, the word Rama appears. Veda actually represents 4, because we know there are 4 Vedas, and Rama represents 3. Any idea why Rama represents 3? A question to all the quiz question to students. 3 years on us. No. Okay. No. No. There are 3 Ramas actually described in the history. Parashurama, Balarama, and Rama. That's simple. So extra interpretation is not needed here. I made this exercise because there are some Sanskrit verses where this word appears, and people have gone to the extreme of imagination and interpreted in all non-contextual way, because of which a lot of loss has happened. So this is sheer just alpha-numeral representation. That's what I want you to take from here, although with its caveat. How it has been used? This is from Bhaskaracharya's Leelavati, and we had a very beautiful tradition. Like how you write a book today, you had a content page, and then you have a preface. You also have somebody forwarding it. Similarly, you had, which is called a Anubandha Chatushtaya, it used to be called. I will not get into the technical details of that, but one of the requirements of this Anubandha Chatushtaya is to also give you a timestamp, like when this work was done. Okay. Normally, it either appears at the beginning of the book or of a work or at the end of the work. So here it says, Rasaguna Purna Mahisama Shakan Nrupa Samaye Bhavat Mamotpattihi Rasaguna Varshena Maya Siddhanta Shiromani Rachita. So Rasaguna Purna Mahisama. So if you carefully had observed my previous slide, Rasa could mean 6, Guna, 3 Guna, so 3, Purna, 1, Mahisama. So 6, so here 6 is Rasa.
So you should listen here that 6 is Rasa, Guna is 3, Purna is 0, Mahisama is 1. So obviously this translates as 6301. But in our tradition, we had this Ankana Bhavavati, that is from right you need to read the numbers. Numbers reading is not from left to right as we read the lipi. Whenever you have numbers in our text, it used to be read from right to left. Okay. So in that sense, this number decodes as 1036 in the Shakara. So here, Bhaskaracharya tells him that when Rasaguna Purna Mahisama Shakan Rupa Samaye Mama Bhavapati, that I was born in this 1036 Shaka and Rasaguna Varshena Maya Siddhanta Shiromani Rachita. Rasaguna was 6 and 3, so 36. So by the time I was 36 years old, I had completed this work. I'm more than that, and I'm only talking about this work. This was the way Bhuta Sankhya was used, and those of you, at least Carnatic music aficionados here, that you had a system of raga classification. So you had a Hindu Chakra, Netra Chakra. So those comes from this again Bhuta Sankhya. And obviously, people interested in this are interested to know the verse for pi. So here also we have this Vibudha, Netra, Gaja, Ahi, Hata, Hatashana, Triguna, Veda, Veda, Bha, Varana, Bahavaha. So these are the words highlighted in blue are Bhuta Sankhya words. The people who are not aware of the context of Bhuta Sankhya will be having their own multiple imaginations to reinterpret it and do all sorts of nonsensical interpretation. Can you interpret? Yeah. So is Bhuta Sankhya same as Karma? No. They are different. They are different. I'll introduce you to that also. So this it gives you, I mean, I'll not get into the technical detail here of how it comes, but the whole verse tells you that you have this number at the numerator and you have this number at the denominator, Nava Nikharva. Nikharva is 10 to the power 11. Okay, we had different words all the way going from 10 to the power 0 to 10 to the power 36. So Nikharva is 10 to the power 11. So it says you divide this number by this number, you will get the value of pi. So you have this fun demonstration here. But my goal is to introduce Bhuta Sankhya to you and not the value of pi here. Similarly, in the same book you have Vyase, Bha Nanda Agni Hate. So Bha Nanda Agni and Hata. So these are the 4 words here. Vibhakte, that is you divide it. Kha Bana Surye. Kha Bana and Surya. Kha will be 0, Bana will be 5. Why Bana is 5 anyway? Particularly to students. Why Bana? Bana, arrow. Why is it 5? Panch Bana. Pancha Banastu Bana. So this requires that we have to be connected to our own root culture. Unless we know the cultural connectedness, this will not make any sense to us. Okay? But unfortunately, we are as stranger to it as anybody else from the world. So it has become a world subject of study, and we are world experts looking at it. Anyway, so this says that you have this number in the numerator, and then you have Kha 0, Bana 5, Kha Bana Surya. Surya is actually 12, Dwadasha Aditya. So 0, 5 and 12, so 1250, so you get again number pi over here. Anyway, C.P. Brown was one of the Gora Afsar here for a long time, and he is also considered as father of Telugu. Anybody from Andhra here would be able to appreciate that. He has done a lot of work understanding Telugu grammar, Telugu structure, and seeing similarity. He has venerated even today. If you look at the Gazetians in Andhra, where Andhra and Telangana was once, he is a very venerated figure, C.P. Brown. Incidentally, he had a lot of dabbling with mathematics also. So much so that his earlier writings have given us a lot of information on what our forefathers had done. Looking at this Bhuta Sankhya, he devised his own Bhuta Sankhya system in English. So he said 0 for cipher, expressed by air, space, time, so on and so forth. But there's a pattern here emerging. After the word 3, till the 2 it is like exactly Bhuta Sankhya. But after 3 a pattern appears. Can you quickly decipher what the pattern is?
Of course, Harry, that's Letters, like letters, number. number of letters in the word. Like cat, dog, those are three. Ship, boat, brick, 3 or 4. So he devised this kind of a alphanumerical system, but I do not know whether it continued, whether it was pursued or not. But this had its own share of some glory, perhaps. Katapayadi, now coming to. So that was a Bhuta Sankhya which had some kind of a caveat. As I told you, number 6 could mean 6. The word rasa could mean 6, or it could also mean 9. So there could be one-to-many mappings, and wherever you have a one-to-many mappings, you'll always get into trouble. People knew that. But there was another parallel system existing. I'm not giving you an evolutionary picture. They were parallel perhaps. We do not know at this point of time. You have a more technically rigorous system called Katapayadi system, okay, which the definition is quite simple. Nanyavachashta shunyani sankhya katapayadaya mishretu pantehal sankhya nacha chintyo harasvara. So you take na and nya. These will represent 0. Similarly, the matrix I have given you here. So these two, Vyanjan, would represent the number 0. Sankhya, Katapa, Adi. Katapa and Adi. So this Ka Adi, Ta Adi, and Pa Adi. So Ka, etc., Pa, etc., and Ta, etc. will be the numbers representing from 1 to 9. Sankhya, Katapayadeha. Mishretu, Pantihal, Sankhya. Suppose you encounter a word which is having Mishra. That's Mukti. So in Mukti, you have Ka and Ta coming together. So don't worry about the half Vyanjan. You take only that Vyanjan to which the vowel is associated. That's the meaning of that. Mishretu upa antya hal sankhya nacha chintyo haraswara. किसी भी व्यंजन में अगर हल लगा हुआ है और एक स्वर अपने आप पे इंडिपेंडेंट ही है, उसका कोई संख्या नहीं है. So this is actually Katapayadi, and in technically those who are familiar with the Sanskrit Vangmay, you will recognize this is the Vargakshara and this is the Avargakshara. Vargakshara is that which falls in the 5x5 matrix, and Avarga which is beyond the 5x5 matrix. So here Yara Lava Shasha Saha and Ksha gets 0. Ksha, this is a convention, okay? So you'll have to follow this convention, and once this convention is followed, then you'll be able to interpret or decode the number from the word. How it goes? Vidwan. Okay? So Vidwan has got actually 3 letters, but the third letter has got a halant in it. So forget the word letter which has a halant. So it is Vidva, right? And Va will represent 4. Ya, Ra, La, Va, right? So 4. So both the things have got, and Dwa, you have Da with a halant and a Va. So you have to ignore that Da with a halant and take only Va. So whether it is V or Va, it doesn't matter. It has only the letter 4 associated with it, right? So now I requested for the board only for the reason to check you whether you have understood it or not, right? So let's take this name of this university, Punjab. So can you tell me what this word represents? As per the Katapayadi code. Oops. By the time we turn it on, see Kabra Nada, Na Chacha Chacha Nya is 1 to 9 and Nya 0. The Ka Ta Pa. Pa will represent what? Pa will represent 1. Correct. Ja. Ja, no, not 3. Ka Kha Ga Gha Na. Ja. Ka Kha Ga Gha Na. Cha Cha Ja. 8. It represents 8. Similarly, Ba will represent 3. So Punjab will represent for the number 381. As a homework, you can do Kendriya Vishwavidyalaya yourself. Okay. Again, remember, the numbers have to be read from right to left and not from left to right. Again, there have been. If you are discussing how to decode Kendriya, then I will give you 30 seconds. But if you are asking me when to stop, I stop after. So one of us should speak, okay? So again, I repeat, the numbers are read only from right to left, not from left to right. There have been well-meaning scholars who have made blunders because of reading the numbers in the wrong way. Okay? So now you know Punjab will represent the number 381. As a homework, you do Kendriya Vishwavidyalaya.
And also as an additional homework, you can decode what your name represents. Right? Your individual name, how it represents. And this is quite rigorous. You cannot make any mistake by using Katakaya code. Right? And there is a third way of representing also, which is called, and I was inspired to include that looking at the name of the academic block where we are. What's the name of it? And we had Aryabhata by the name of a very great astronomer who had invented another system called Aryabhatiya system. But I will, due to want of time, I will not get into that. This is even more technical, rigorous system. And how many of you have students here who have seen Clark's table? I know all my colleagues here who have seen Clark's table, logarithm table. Clark's table, कभी देखा है किसी ने? I know somebody, Ashwini ji thinking of a museum, right? We should put Clark's table in the museum also. Clark's table एक छोटा सा जो हम लोग एग्जाम में लेके जाते थे, log 3, log 2 क्या है देखने के लिए, ठीक है? Now this guy Aryabhata, in one small verse, he has condensed all the logarithm table in that. I will not get the details because of want of time. This is a verse here. It doesn't mean anything in Sanskrit also. Okay? This is just a code. Maki, haki, haki, thaki. This is a code here. It's not. It doesn't mean anything in Sanskrit also. But it is to represent you some information. But I'll not get into the details of Aryabhata due to want of time. There was some other aspect also which I thought I'll introduce in mathematical aspect, but I've already crossed 15 minutes. So I will rather skip this. Otherwise, this is also an interesting aspect. Like as a homework, I wanted to give you you had this beautiful Kulgeet. You can decode the chand of this Kulgeet and you can see what binary number it represents. Because all the chand that we had, it will have, they were all way of representing binary numbers. Again, can I have some silence, please? I get quite irritated when I have noise in the class. That is my handicap. You may call me a crazy psychotic guy, but I can't sleep when there is noise in the class. I'm sorry about that. So the one very typical comment of all the Indians is that हम लोग अच्छा खाते थे पीते थे और हम नाचने गाने में अच्छे थे. Means we did not do any good science, but we were all good at singing, poetry and other things. But our poetry also had got a lot of mathematics in it, because poetry basically is composed in Matra Chand or Varnik Chand. Okay? And both this Matra Chand and Varnik Chand have got numerical underpinnings in it. One of them, I will not get to the details as I said, but one small thing. What pattern do you see here in these numbers? See, being a teacher, you have an occupational hazard. Sawal se piche nahi hat sakte. And I can't stop asking questions. What pattern do you see here in the last column? Yes. It's addition. What do we call this today? Fibonacci. But these numbers were at least several centuries before Fibonacci. Virahanka had in his commentary of Pingala's Chandasutra. Chandasutra was written, we do not know the date, but Virahanka came and gave the commentary at least 800 years after Chandashastra was written. And it's actually to be called as Virahanka numbers. But today we call it as Fibonacci series because we were occupied by the Europeans. Very quickly, what it tells you is that, like say for instance, all of us would have learned this Doha. There is a rhythm to it, right? Chand means it's a rhythm. So first line you had 13, then 11, then 13, then 11. What this 13 represents? Rahimana. You have 4 Laghu Aksharas. Rahimana. Ra is a Dirghakshara. So it's a Guru. So Laghu and Guru combination, they will add up to 13 if you give the value 1 to Laghu and 2 to Guru. So if you add that, I have shown you that. Pingala asks a question. Now, possibilities of achieving the numerical value using Laghus and Gurus. Suppose I give you the numerical value of 1. There's only one unique way by which I can achieve the numerical value of 1, that is by 1 Laghu. If I give you the numerical value 2, I can achieve by 2 different ways, either 2 Laghus or 1 Guru. If I give you the numerical value 3, I can achieve by using 3 different ways. Similarly, if I have the numerical value 6, I can achieve it by 13 different ways.
So he asks this question, given a numerical value, how many ways of achieving the combinations of Laghus and Gurus I can get? And he has put it in a very cryptic way, which required 800 years of simulation, and later Vidhanka came and gave the explanation that this is indeed this kind of a sequence. Okay. So, moving ahead, Varnik Chand, I'll not get into the details because we really want of time. But this is also a mathematical question. In fact, suppose you have this. No, I'll really not have time if I get into this. So I'll leave it. It's an algorithm to suppose you have 2 power n. How to compute 2 power n in a very quicker way. I'll really not get into this. Otherwise, this was a demonstration of showing a binary number. So if you clearly see, this row will represent all the decimal numbers, and this particular 4 are the binary representation of that. So those of us know basic binary. 2 is represented by 1 0, like 3 is by 1 1. Now if you look at this 4, this is a mirror image of these 4. Okay. And the mirror image, how the mirror image is generated, I'll just stop at that. Mirror image is generated from this. Like you have this 4 gurus. So you give 1 to the number guru and 2 to the number 0 to the number Laghu. So if you just do that, you will get this column. Sorry, guru as 0 and Laghu as 1 if you give it. Then you, from the previous column, you can generate this first 4 rows, and then the mirror image of that is this, which is nothing but a decimal representation of the binary numbers. Okay, so the interconnection is quite obvious here, although I'm not getting into the details due to want of time. Last, Pascal's triangle, of course, Blaise Pascal is a great mathematician, no doubt, but there is a triangle associated which we call Pascal triangle. All of us would have heard at some point or the other. But the summum bonum is this. Pingala just wrote Parepurnam, that's all. That is a two-word word. But then you need a lot of commentators later to explain it. And what is the explanation of that? That explanation gives you this triangle. 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1. What are these? They are the coefficients of the binomial expansion. Suppose you have x plus y to the whole power n. You know x plus y to the whole power 2. You know x square plus 2xy plus y square. And x plus y to the whole power 3 x cube plus 3ax square x 3x square y plus 3xy square plus y cube. That's 1 3 3 1 coefficients. So those coefficients are got from this, like 2, so x square coefficient is 1 plus 2xy plus y square. Similarly, x cube plus 3x square y plus 3xy square plus y cube. So you have the coefficients brought out very neatly in a prastara form. That prastara comes from this particular sutra, Parepurna. But due to some reasons, this is now called Pascal's triangle and not Pingala's triangle. But there is a lot of work. Well-meaning people are trying to rename it. Like some of the things have been renamed. We have a Grigori series, now it is being renamed as Madhava Grigori series. But we'll have to see whether during our lifetime whether we'll see this as a Pingala or this Pingala Prastara associated with this tree or not. Anyway, now I changed gears. Mathematics part is over. In the next maybe 10 minutes. Yeah, 10 minutes, 15 minutes. I will change gear and come to quite a different topic of this, in which I have to also do some work. But before that, again, a quiz to all my students who are yawning and going to sleep. There are some photos depicted here, and this is strictly only for people with a lot of hair on their head, not with people with less hair and grey hair. Okay. So, can you name the 5 people here? People with not longer hair and lesser age. Good, Dr. C.V. Raman, yes. Prafulla Chandra Rai, yes. And it is 3 out of 5 till. Okay, so 3 out of 5 is not bad.
Any 1 out of 3, I'll be really happy. I feel that, okay, our purpose of coming and talking here is almost done. I can write up in 5 minutes. 3 out of 5, not bad. Now, how many out of 3? Even from people from Bengal who are here, or from, say, Gujarat, or from Andhra. Andhra, Telangana, right? My mind space, Andhra, Telangana is tough, always Andhra. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, 0 out of 3. So why there's a purpose for me to be here and talk to you. Okay. Of course, from PC Ray, C.V. Raman, Jagdish Chandra Bose, Satyendra Nath Bose. Many people confuse between both the Boses, and there are instances where people are confused. This is Netaji Subhash Chandra Bose. Such is our what do you call it? WhatsApp University level of understanding. Then you had Meghnad Saha, or many people are away from physics but have even known about him. But the Indian calendar system was, there was a committee which was constituted soon after our independence, and Saha chaired the Indian calendar system. Okay, so talk on that some other day. Interesting are these 3 characters. Kadambini Ganguly, getting from Bengal, one of the first doctors in our country. Okay, more about that you can read later. Yellapragada Subbarao. We all know about the discovery of penicillin, right? Penicillin even got the it went to textbooks, but nobody recognizes him because the next antibiotic we discovered was by him. And he was in today's term we have the term nationalist or Rashtravari. But when he worked, that term was also not in coin, not in currency, but still he wore only khadi, and he had very interesting life that he had led. His supervisor saw to it that his work was completely suppressed. Okay, I have a friend, Ayan Datta, who has written a nice article about him in a magazine. You can share it with the convener, Dr. Chaitanya ji, and you can share it with the students' knowledge. The third figure is even more interesting. Anandibai Joshi. She died at the age of 23, but before then she had a medical degree, and she had also had a practice for a very brief time. She is really credited to have done all sorts of rebellious things. Okay, but unfortunately she passed away very early in 1980. Anyway, now homework of Madam's lecture. At least 2 names of Indian scientists. If you have Madam's lecture, she had a number of scientists there. Huh? Current scientist or No, pass. Charaka Charaka Sushruta, okay, is good. You have one attentive audience. and Bharat Bharadwaja, Atreya, Agnigesha. Okay, good. Now forget ma'am's talk. Any names other than that? C.V. Raman. So he's 100 years old. Nagarjuna, very good. One name comes Nagarjuna. Aryabhatta. Varahamihira. So at least thanks to the well-informed audience here, I don't have to go very long. I'll cut it short. Purpose is there, but I want to go deeper. We have been not only, as ma'am said, honed our stupidity in various aspects. We have been reckless in not even recognizing what our past glory has been. See, we should not just trump ourselves always to say we were that great, we were that great. That's one extreme. But at the same time, we must not also come to a level that we don't even recognize our past. We don't attribute the current knowledge to the past scientists. Because we always have these 3 E's in our life: experience, experiment, and expectation. What we currently do is some kind of experiment, which is based on the experience of the past, with a better expectation for the future. But here we are either by design or by default made to forget our experience. Okay? And we are made to all sorts of experiment with whose expectation in mind also we do not know. So this is something that is very important at conferences like this, where I normally do not, when I go to conference, it has to be either in Raman spectroscopy or computational chemistry. That's everywhere it is being happening. But conferences like this, we get to dwell on this aspect where the past experience is calibrated and measured against the current experiment, and our alignment to the future expectations are in synchronization. Okay.
just a small build-up for that. This is again a Nobel laureate, William Ramsay, and he had to say the country which is in advance of the rest of the world in chemistry will also be foremost in wealth and in general prosperity. And this statement is not just fictitious thinking; it is backed up with a lot of data. For instance, this is just a survey of number of Nobel Prize in chemistry by nationality in the last, say, 120 years. There is a correlation. I have the GDP and I have the Nobel Prize count. Okay? Of course, correlations are always misguided. There is a Journal of New Medicine, American Journal of New Medicine, where you have a correlation between chocolate consumption and Nobel Prize. Okay, that doesn't mean to get the Nobel Prize you should consume more chocolates. So causations are not correlation. Correlations are not causations, but there are a lot of insights that one can gain out of correlations, but one should not go very far-fetched with correlations also. This is a very brilliant paper about which I had a brief opportunity to discuss with the speaker yesterday. Ashwini ji was here. This was a paper that had come out in at least 20 years back, 2003, I believe. First paper and second paper came out in 2006. Angus Maddison is from Britain, and he was commissioned by the government to come out with the GDP history of all the countries. And you see the graph here. Okay? The orange one represents India, and the red one China. Red communists, so obviously the color goes naturally to them. This is not my way of coloring it. Okay, Bhagwa for India and red for China. This is in the paper itself. So you see here, there is a decreased trend from the first AD onwards, and then there is a slight increase. And believe you me, some historians have credited this as a glorious period of Mughals, because they revived the Indian economy. Okay, but revival is from where? Hardly any touching the peak. Okay, and then after the 1700, that is where the British East India Company takes a firm footing in the country. You have just a downhill rolling. And now with all this halabala that is happening here, you see where we are in terms of the GDP. Vishwaguru or 5 trillion economy, those like the buzzword, but this is the state of affairs. And although this is 2003, I believe 2020 graph would be somewhere here. Even if it is here, you can see where we are. Okay. Now correlate this with Ramsay's statement. Material prosperity, economic growth, chemistry is a basic cause. And believe you me, our Indians forefathers had tremendous contributions in various aspects of material science. Be it metal, mineral, gunpowder, ceramic, medicine, dye, cosmetic paint, you name it, we had in terms of materials, processing material science. Not only that, I have my friend Dr. Jitendra from geology here. This slide specifically attached to him. You have certain minerals here, corundum. Of course, sulfur everybody would be using. You have beryllium and beryllium. These are the words which have directly gone from Sanskrit vocabulary. Kuruvinda. In fact, the Lalita Sahasranam, Kuruvinda Manishwarani, Kanakotira Mandita. So Kuruvinda is not something very exotic word. It was in common parlance also. Okay? It represented the word for which it was not a generic word that we had multiple interpretation. Kuruvinda Mani is for a gemstone. So it meant corundum. Sulfur, the word itself comes from the word Shulvari. Shulvasya Ari. Shulva was copper, its enemy, because at that time the reactivity was measured in terms of sulfur. And copper was highly reactive with sulfur. Okay. So Shulvasya Ari, Shulvari. Shulvari becomes cognate with sulfur that we use today. And beryllium with Beluri. Beluri, there is a debate among the linguists whether it is Tamil word or a Sanskrit word. But it has to do with the Vellore also, the current Vellore. Because these deposits are majorly found there. The reason to put this slide is, see, when vocabulary is lifted from one language, one culture to the other, biologists would be able to Homo sapiens when we say, or lactobacillus, or any Latin name that we say today. It gives us a connotation that the Latins were the first to encounter with it, and we have been continuing with that knowledge. So the purpose of lifting words from one language and retaining it in another foreign language tells you this continuity. This does that same thing. If sulfur is used today, it's a continuation of the Indian word Shulvari. But none of our textbooks said that. That's a different matter of a story. The fact of the matter is, sulfur is still used, which has come from the word
nobody should worry. It is not my figment of imagination. This is a true fact. I want to add another word. Super. Super. Means So, there are many such words which are come, but in chemistry and material science specifically, I would say you have these words which are still currency. Talking of metals, of course, every civilization has had an encounter with the metals, not only us, but we were perhaps the early ones to list out. See, gold and silver was the obsession of all the civilizations, Mayan, Egyptian, Sumerian. But we had very clear names, vocabularies for other metals as well, like lead, tin, and iron and copper. So this also tells you one more thing, that in Europe, of course, geologists would agree with me, that you had a different way of classifying the chain of events. That is, you had a Stone Age, then you had a Bronze Age, then you had a Copper Age, Iron Age, and now Diamond Age. But then you have this chronology. But in the literature that we have today access, we see all the metals placed at the same time. So it could only mean two things. That by the time the literature was written, we were conversant with all these metals, we had discovered all these metals. Or all the metals are perhaps discovered at the same time. So both the things are possible. We'll have to, that's a matter of more academic rigorous research. But the fact of the day is we have all those metals listed out here. And there's a continuity. This was written, say, in Rig Veda. I don't want to get into the datings debate. I'll leave it to you for the date. And this was just as recent as 100 years back. When Bhudev Mukherjee was the contemporary PC Ray, he had written Rasajala Nidhi. So the purpose here is to say the way we have been associated with this has not changed for a long time. So he also lists Swarna, Tara, Arkala, Lauhishcha, Yashodatra, Trapusi, Sisakam. So Saptaitani. Here it is Raphael. So he adds two more. What those two more are? Zinc and mercury. Okay. So we know what we had not known at that time, and we know by this time what we had known. Anyway. It's also a mystery that even though gold is very, very, very small percentage, but still this was the obsession of all the older civilization. It calls for what kind of indigenous techniques we would have had to extract the gold. But anyway, the obsession with the metal work is still continuous to this day. I put a blue box again here to check if those who are sleeping to ask a question. This is to do with this artifact here. This artifact is called a mirror. This portion of it is called a mirror. Its reflectance capacity is extremely high, more than 99%. Okay. Can you name from which region it comes from our country? And that was the answer from all the Kerala students. Non-Keralites, this comes from a place called Aranmula, which is quite near to Thiruvananthapuram, and it's a GI. And this is handmade. I have not put the name here, so although the art name is here, it's called a Theva art. Quite 500-600 years of origin from Rajasthan, not very far from here. And this, of course, is from a place where I come, Banaras. The art of drawing metals in very thin wires, that micrometer diameter. So that art still exists. So this to impress upon you the fact that this is not something like a peak at one point of time we were obsessed with something and it died away. So the art is still continuing. It's just that the intellectual circles have not taken cognition of it the way it has to be taken cognition of. Okay. Again, one statement from this paper about Rasaranava, which is a quite text. Not getting into details. Makshika, Vimala, and Sashyaka. These are three different pyrites, ores of copper. Now, this author, A.K. Biswas, a professor from IIT Kanpur, he writes saying that our ancestors knew that Makshika was different from Vimala, Vimala was different from Sashyaka. That difference is well recognized because morphologically they are very different. But what they knew was that if you process them, even if you process them differently, the end product was the same. That was copper. Now, this requires a leap of not just imagination, but a lot of, now we may take it very granted, but this requires a lot of academic understanding. So he says, this observation made centuries before the discovery of elements and Daltonian chemistry cannot be belittled. Okay? Now, this kind of sentences get hidden in academic papers, but never find the day of light in textbooks.
But thanks to NEP 2020, we can somehow do something better than that. There are a lot of descriptions of chemical apparatuses in the both Ayurveda text as well as later chemistry texts, some of which I'll be showing you here. So this is called Dola Yantra, that is the cross-section image is shown here. Similarly, this is called Shvedani Yantra to have some hydrolyze it. This is the Patana Yantra, that is you will have some reactive species stacked at the top, then it will gather at the bottom. Patana Yantra, and this is the Triak Patana Yantra, which is still prototype of it used in the chemistry lab, but the thing that we don't use mud, we use glass instead of that. Now, this is still used in places like Kannauj, not very far from where I live. Kannauj, Chitrika, the capital of perfume. But there are actually historians who credit to Mughals for this kind of setup there. But when you have text describing this kind of Triak Patana Yantra thousands of years before Mughals came, I wonder how the historians are able to come to that kind of a conclusion. Okay. This is one verse from Rasalnava. All that I want you to do is take 30 seconds and just tell me roughly what it means. Okay, do not try to interpret it. Don't try to get into the depth of it. Avartamane kanake pita are sita samaprabha shulve neela nibha tikshne krishna varna sureshwari. Anybody listens to Sanskrit slowly feels some Pandit is chanting someone. This is the whole Sanskrit part. Just give you an impression what you get when you read this or see this. Avartamane kanake pita are sita samaprabha shulve neela nibha tikshne krishna varna sureshwari. Yellow like gold. Yellow like gold, okay, very good. Something else? Specifically to students or for that matter my senior colleagues also? Okay. Just 5 seconds. Give me some impression that you get out of this. Sorry? Samala, okay. Color represents Kanaka, gold it represents. If I tell you this is the description of salt test that chemistry people do in the labs, that we introduce this salt, the flame color changes to this. We introduce this salt, the flame color changes to this. It is a description of that. Okay? So, I'll not get into the details of it, but Avartamane kanake, Avartamane, you bring the gold to the flame color changes to this. Shulva is copper. You bring copper, Neela nibha, Neela, blue, nibha, color. So you bring the copper, it takes a blue color. So this is the first ever documented description of flame test. And tell you how many from chemistry here? All of you done chemistry in high school, right? Some of you, but none of our textbooks told this. Right? So that's I'll skip all these things. Zinc, there is a lot of yesterday also we were discussing with Jitendra the kind of knowledge that our ancestors had with respect to zinc. That's quite amazing. It suffices, I'll not get into the details, but this was very indigenous invention of which we were discussing yesterday. Zinc is a very dicey metal. It's both boiling point and vaporizing point is very, very close. So much that when you melt zinc from its ore, it gets easily vaporized. So it's very tough to collect it back and condense it to the solid form. But these people had a it's a closed furnace where you stack the zinc ore on the top, heat it from the top. There's a bellow which supplies oxygen for fuel, and when the zinc melts and the reaction changes, of course there's a temperature change, and at the temperature change it gets sealed. Okay, and then after 24 hours you come and dig it out. You break open the top part and dig it out and bring up the zinc from below the ground. And mind like this, when people have done this, do you think somebody would be sitting in meditation and some, like how they're showing Ramayana and Mahabharata, some like spark of light will come on their head and then they will start building up all these things? This is nothing but empirical science. People would have experimented it for a long time, would have optimized it, and then would have given it as a practice in the textbook. We don't realize it now. Now we are seeing it as just one picture. But the effort that would have gone into it, who knows how many years they would have struggled for it.
And they are not, if you go to Jhavar mines today, you will find archaeological remains of it. Okay. Anyway, this is not my statement, but this is the statement from this paper that I've taken. Many tens of thousands of tons of zinc was produced. And this is the earliest known center for zinc production in an industrial scale. They have been very careful in saying earliest known, although their carbon dating now, if you see, 2120 plus or minus 60 before present. Okay, this paper had come out sometime in 1983. Okay, so you can imagine, even though this marks to roughly 0 BC or 1 AD, still they are saying they are the earliest known centers. Perhaps my last slide. Suvarnam, Rajatam, Tamram, Tichnam, Mungam, Bhujangamam, Lohan to Shaktinam, Tatcha, Yatha, Purvam, Tat Akshayam. This is like, they have arranged it in a series of reactivity with sulfur. Suvarna is least reactive. Then Rajata, Rajata is silver. Then Tamra, copper. Tichna, iron. Vanga, tin. Bhujanga is lead. Okay. Now, this is not again an empirical thing that one fine day in meditation, somebody comes and reveals to me that arrange the 6 metals in this way. This is out of experiment that has come. But we are again being told often that we have never done an experiment. Kapol kal pe baatein karte hain. So this is for against. Anyway, this is again a text from astronomy text by Lalla from Kashmir. Shishya Dhi Vriddhi Tantra. Okay. It is called again. I repeat, Shishya, disciples, Dhi, Dimag. Vriddhi, इसका वृद्धि करने का तंत्र है. Okay. Now in maths presentation also you have a word Agnivesh Tantra. This is a matter of linguistic curiosity. That for some subject we use the word Shastra, for some subject we use the word Tantra. What's the difference? What has to be very. I'll leave it to you as a homework to find it out. But this text is called Shishya Dhi Vriddhi Tantra, and there, half of the book is devoted to what is pseudoscience and how to question pseudoscience. One such example, details I will not get into. There was a belief that this earth is floating on a tortoise shell and the tortoise shell is floating. So, Kamathadivi Udrita Mahi Yadite Kena Drita Avasthita Ata Esham Biyati Thitir Yadi Shiti Golasya to Kena Varyate. If you say the earth is floating on a tortoise back, he is asking where is the tortoise floating then? And if you give me some other object on which the tortoise is being kept, then he asks, it's an infinite regression. Where is that thing floating? So this book, I mean, those of us interested in sociologists should actually go through this book because it deals how to harm pseudoscience. When we live for say even 1,000 years, a lot of knowledge and a lot of pseudo knowledge also accumulates. How to question them is one primary thing of the knowledge society. And one such example is from here, and this is from again 700 or 800 AD. Okay. My last slide again. In the Bhuta Sankhya, I said that we need to be connected with our rooted culture. This is one shloka again from Rasaranava, chemistry text. Rasavasti loha matango, yamna gandhaka kesari, nikantya gandha matrena, yadva makshika kesari. ऐसा कोई भी धातु शेर जैसा धातु नहीं है, ऐसा कोई भी हाथी जैसा धातु नहीं है जो गंधक जैसे शेर से पराजित न हो सके. ऐसा कोई हाथी जैसा धातु नहीं है जो गंधक जैसे शेर से पराजित न हो सके. Now you may wonder why शेर and elephant. वीरू जंगल का राजा कौन है? अपना राजा जो है कैसे स्थापित करता है अपने राज्यत्व का? वो केवल हाथी को मार के ही स्थापित करता है. And you know when can a lion kill an elephant? Only the lion comes as a back attack. अगर एक I'm sorry. Okay, this needs to know surrounding the ecology. किस तरह के हम वातावरण में रह रहे हैं, हमारी सभ्यता की जो मूल बातें क्या है. Unless we connect all those things, just dry science, approaching dry science will be useless. And thanks to the NEP 2020, where stress is laid
on interconnectivity. Unless a student knows that a lion, if it comes and attacks the elephant from the back, then only the lion establishes its prowess. This interpreting this shloka will be meaningless to them. Okay. Anyway, last this is the 150th year of Aurobindo. Many of us may not know it. It was born in 1872. One of the early thinkers, what we are now doing this manthan of, where are we going and all. It was done 150 years back, this man, Aurobindo. And this quotation is very impressive to me. Break the modes of the past, but keep safe its gain and spirit, or else thou hast no future. With that, I'm sorry to have exceeded the time, and thank you for your patience. So, thank you very much, sir. So now, because we're running with shortage of time, so we can have, if you have a few questions, so at the tea time. So really, we are having two very important and thought-provoking sessions from morning. Professor Rama ma'am, so she has spoken about the Ayurveda, and Dr. B. Ramanathan, he has spoken about the knowledge treasure our ancestors were having, and the things we have forgotten. So we need to revisit all those things. Thank you very much, sir. Now I'm inviting the members of the organizing committee. So please come to the dais. So, yeah, for facilitations of the of the guests. So Professor Rajesh. Dr. Rajendra, you can join too. So I request you, ma'am, please, for the facilitations for token of love and respect from Central University of Punjab. Beta. So thank you very much, ma'am, for your wonderful talk. So thank you, ma'am. A very warm welcome to our former Chancellor. So I request Dr. Ramanath, please.
I humbly request the students to vacate the first 2 rows for the faculty, please. The first 4 rows, sorry. The first 4 rows kindly vacated for the faculty members. नमस्कार। सभी अपने स्थान ग्रहण कर लें। हम अपना दूसरा सत्र आरंभ कर रहे हैं। पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी के इस दूसरे सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का ये जो दूसरा सत्र है, ये इंडियन एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स पर आधारित है और इसमें आज हमारे मध्य में पद्म भूषण अवार्डी आचार्य सरदारा सिंह जोहल जी तथा खेती विरासत मिशन पंजाब के निदेशक संस्थापक श्री उमेंद्र दत्त जी इस सत्र में हमारे मध्य में उपस्थित हैं। मैं हमारे इन अतिथियों के साथ में माननीय कुलपति आचार्य राघवेंद्र प्रसाद तिवारी जी, इस सभागार में उपस्थित गणमान्य अतिथि, हमारे विश्वविद्यालय के प्राध्यापकगण, कर्मचारीगण, शोधार्थी एवं विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे मध्य में ये हमारा सौभाग्य है कि आज पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय के पूर्व कुलाधिपति, एक उत्कृष्ट कृषि अर्थशास्त्री तथा एक गहन गंभीर व्यक्तित्व के स्वामी पद्म भूषण से सम्मानित आचार्य सरदारा सिंह जोहल जी हमारे मध्य में। आपने अर्थशास्त्र में मास्टर की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात पंजाब विश्वविद्यालय से ही डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की तथा उसके पश्चात पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि और ग्रामीण विकास से अपना करियर करते हुए पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में एक सहायक प्रोफेसर के रूप में तथा बाद में एक प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। साथ ही अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र विभाग के प्रमुख पदों तक आप पहुंचे। यहाँ पर आने से पूर्व पंजाबी विश्वविद्यालय, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर भी आप कार्यरत रहे। साथ ही उन्होंने कृषि लागत और मूल्य आयोग की अध्यक्षता की तथा रिजर्व बैंक के केंद्रीय बैंक ऑफ गवर्नेंस में भी आप
विराजमान रहे। आपने अलग अलग केंद्र सरकारों, पंजाब सरकार के कार्यकाल के दौरान आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में तथा तमिलनाडु सरकार, गुजरात सरकार, श्रीलंकाई सरकार, खाद्य और कृषि संगठन के सलाहकार के रूप में भी कार्य किया है। आपकी कई सरकारी रिपोर्ट समय समय पर आपके माध्यम से तैयार हुई, जिसमें प्रमुख है पंजाब में बिजली दरों का युक्तिकरण, पंजाब में कृषि का विविधीकरण इत्यादि। इन्हीं कारण आपको समय समय पर अनेक सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें प्रमुख है डॉक्टर मदन स्वर्ण पदक पुरस्कार, प्रोफेसर मोहन सिंह फाउंडेशन के महान पंजाबी पुरस्कार, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय स्वर्ण जयंती उत्कृष्ट पूर्व छात्र पुरस्कार, मुख्य खालसा दीवान शताब्दी पुरस्कार, पंजाब विश्वविद्यालय ने 2005 में DLIT मानद उपाधि से आपको सम्मानित किया तथा भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण जैसे श्रेष्ठ नागरिक सम्मान से 2004 में आपको सम्मानित किया जा चुका है। ये मेरा सौभाग्य कि ऐसे समाज, देश और अर्थशास्त्र को समर्पित व्यक्तित्व का मैं आप सबके मध्य में परिचय प्रस्तुत कर रहा हूं। आदरणीय सर, पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय परिवार द्वारा आपके ही संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। तथा मैं आदर भाव के साथ आपको अपने वक्तव्य के लिए आमंत्रित करता हूं। Honorable Vice Chancellor, Dr. Tiwari ji, faculty members, participants of the seminar, dear students, it's my great privilege and pleasure to be here with you this afternoon. I have been the chancellor of this university for about 70 years plus, and it was not a sit-back chancellor. I was actually working in collaboration with the vice chancellors of this university. I have the honor to start this campus, lay down the groundbreaking ceremony in the presence of the then Chief Minister. And my coming here is just like coming home. Although my health didn't permit long distance travel, but Honorable Vice Chancellor insisted to give me this honor to be with you. I'm a bit slow thinker, slow speaker, please put up with me. I would prefer actually questions from your side. I respond better to the questions rather than imposing my lecture on you one-sided. So I would try to be brief as much as possible for me. The subject is very important because it provides a base for the agriculture production. I have been concerned about this land ceilings because when you talk of the agriculture reforms, it involves land, that's the production system, its technology, and marketing.
So on land, the major reform was the putting of the land ceilings on the land holdings. It was in 1972. I was working as a visiting professor of Ohio State University in USA, Columbus. I was there on 5 years mission as a visiting professor, but my vice chancellor, Dr. Emerson Lava, ordered me to come back. I had not completed even 2 years. And I was a little surprised, but when I came back, because I had great respect for him, he asked me to write a paper logically defining what should be the ceilings. So I wrote a paper, Farm Size, Economic Efficiency and Social Justice, and justified the ceilings at least at 30 acres of land, double crop irrigated. And for one crop or for dryland farming, it could be higher. And he got printed about 5,000 copies of that paper and sent to all the parliamentarians and some chief ministers and MLAs. To my good luck, the first ceiling was put at 30 acres. It was later that it was reduced to 17.5 acres. And a stage came that in about, I think, 87, 88, the Ministry of Rural Development, they prepared a document to reduce the ceilings to 12.5 acres. And they circulated to the states. It was governor's rule at that time in Punjab. To my surprise, they also agreed to this. When I saw the document, Chaudhry Devilal was the agriculture minister and deputy prime minister at that time. So I wrote him about 6-8 page letter to him in Urdu because he could read only Urdu. And he was upset. I told him, you'll be surprised. There were conditions, so hard conditions, that no farmer could move out of the farmland. The farmer had to live within 5 kilometers radius from his land to keep that long land as his own. So I told Devilal that you cannot sit in this chair if you want to keep the land with you. So he was surprised and he called the meeting of the governors and chief ministers. And then that case was dropped altogether. He said, first put ceiling on urban areas, urban lands, and then on agriculture. So that was saved. It was actually very hodgepodge thing. States like Madhya Pradesh, they put ceiling at 56 acres. Some put at a lower level. And there was no uniformity in the country. Surprisingly, there was a provision that you could buy 500 acres of land. I don't know what it means. So this reform actually failed. Land was distributed in small portions of even 0.5, 0.4, 0.3 acres. And they were labeled as farmers. Many of them sold it out, and others might have given it on contract. I was working at that time in the United Nations. I wrote a letter to the Prime Minister that this is not the way to distribute the land. Consolidate these lands into reasonable farm size and call them corporations, farm corporations, not cooperatives, and distribute the shares to the eligible
farmers or non-farmers, whomsoever you want to. I gave the total system, how to manage it. Provide them managing director. They would choose the board of management of 3 people every 2 years, like that. And one manager can be, if they're small size, can be more than corporations managing directors. Similarly, scientists provided, extension specialists provided. But nobody listened. Anyway, this whole system actually flopped. And the situation is the same as before. Some people, to keep the land, even divorced their wife, and they made 2 persons, 2 families to keep the land. So it created many problems. The second reform was consolidation of land holdings. That was a very successful reform in Punjab. At that time, Haryana was also a part of Punjab. Earlier that, in 1947, when we migrated from Pakistan, at that time the roads were actually channels. When there was rains, there was no way to pass through, and transport was usually with the bullock carts. So with the consolidation, the holdings were maximum 2 lots. It was one place or 2 places was consolidated, and every holding was provided the independent access. And some land was left for Punjab town purposes. These reforms was taken up by Punjab and Haryana and but most of the states didn't take it. The result is, in Punjab and Haryana at that time, because farmer could make an individual decision, he was not dependent upon neighbors. And the green revolution technology was easily adopted. But in the rest of the country, it was difficult to adopt it because one farmer depended upon the other, but all of them would do only that thing individual can do. So Punjab and Haryana showed the highest yield when the green revolution technology came. Now, fragmented holding actually do not permit the size economies. But here the size economies were there with the consolidations. Even scale economies were also harvested. The second is the technology. There was a big reform because it's agriculture reform, not land reforms only. The research was reorganized in states like Punjab. There are different systems in different states, but first agriculture university was created at Pantnagar in 1961. The second was in Punjab in 62. Pantnagar University was established on the pattern of the land grant colleges. They were given a huge land and to get income from that and from the university. But Punjab University was owned by the state government. Now, what Punjab did was different than, when I'm talking about Punjab, I mean Haryana also at that time. Punjab had 3 campuses. One Ludhiana, other Hisar, other Palampur, which later on became independent agriculture universities. Here the total responsibility of research and teaching was given to the university. No research was given to the department. Department of Agriculture was responsible for field level extension only. And university as a link
the extension specialists at every district. So there was a link up and there was independent responsibility. As a result, the research plant of the university developed very well. By middle of 60, actually we were importing about 13 to 14 million tons of food grains under PL40, where we paid money in rupees, and it was at the disposal of the US to spend the money as they like in India. So that influenced the administration. But in 1965-66, we imported in bulk the dwarf wheat seeds from Mexico. It was a big risk because weeds also came a long way. But it was a daring step, and then further improvement was made in the university because the university research plant was ready to absorb it. Both Pantnagar and Punjab and IARI, they developed variety according to taste and requirement of the areas. Then we developed the coordinated research projects on various crops on this. So technology became available and farmers are ready with the consolidated holding available of water, and technology spread so fast. The system was so good in that sense that the university started holding the fairs, Kisan fairs. And on Kisan fairs, they would give small packets of the breeder seed. And the breeder seed, then they would give the small packets just as a for 1 canal or 1 eighth of acre and so on. So replacement becomes very easy. Quickly replacement were coming up. So therefore in Punjab and Haryana, the progress was very high. In 1970-71 came the seeds of the rice from IRI, International Rice Research Institute, Philippines. And then when we were importing about 13, 14 to 15 million tons of food grains. It was shipped to mouth situation in the mid-60s. In mid-70s, we became surplus in food grains, irrespective of supply and demand, not actually needs of the people. So this is the success story of the technical development in India. But most of the states couldn't do it because they were fragmented holding with them, and water could not be easily reach the holdings, so they were handicapped in that sense. Now the other story is of marketing. So you have production aspect, you have technology aspect, and then comes the marketing. It was 1936 that the Agriculture Produce Markets Act was passed. Earlier, what used to happen was that the transaction between the seller and the agent, commission agent, were undercover. So I don't know how they played with the figures and decided the price. The farmer was not able to see what is happening to his produce. So in this act, the mandis were established, markets were established, and the open auction was introduced. The farmer could see how the bidding is coming up. The mandis were a uniform pattern in Punjab at that time. There was a Chardiwari, you call it, and there were the shops of the commission agents. In the center there was a well, and there were some trees for the farmers to rest, and also their oxen and the carts. So because why it was needed? Because the producer doesn't know who's the buyer. The buyer doesn't know who's the supplier, who's the seller. So commission agent would bring them together and get some commission. And commission first was only 1%. From 1%, it was increased in
60, 70 rather, 60, end of 60, say 70, 60. Because the Punjab government at the time used to depend upon the university to make such suggestions. I was head of the department at that time of economics and sociology. The commission agent demanded 2%. And reason was that the prices have increased. When they came to us and said prices have increased, your commission has also increased 1%. The university didn't recommend it. But somehow they got it 2%, then becomes 2.5%. It, in my opinion, was also a very illogical on this. But anyway, so this commission system, this regulated market, agricultural produce market set were a reform to the advantage of the farmers, to the advantage of the producers. But then the government started, buying themselves under the MSP. The buyer was known, the producer was known, there was no need of a commission agent. But that institution continues. Anyway, so this was the reform of the market. Then, to give a flip to the production, government introduced the system of MSP so that the farmers in gluts and slums do not get the market slums. For this purpose, the commission was created. Earlier it was Agriculture Prices Commission, then it was made Agriculture Costs and Prices Commission, which I chaired for 4 years. Idea was to provide a price to the farmer so that he doesn't go out of the business. Idea was not to provide him remunerative prices at that time. It was minimum support price so that the farmers remained in business. So all costs were not included. But later on, when the Cost and Prices Commission, then all costs were included again. So this was to assure the prices. Then to handle that, we have no use of the prescribing or announcing minimum support price unless until it is procured at that level. So for this purpose, the FCI was created, Food Corporation of India. They would buy through the states or themselves directly. The states acted as agents. And FCI bought this, and then there was a public distribution system. So a complete system was set up, and that gave a flip to the production. At that time, I visited the World Bank, and they asked for a seminar. I went there for a lecture. And they pressed, why not border prices should be the prices of for the farmers. So my answer was that we don't want to import the gluts and the shortages of the rest of the world to us. So we have to manage ourselves more. But somehow it developed into an institution which has gone illogical. Under this system, about 2 dozen crops are now MSP. But purchases only wheat, rice, and some cotton for government mills only by the Cotton Corporation of India. Rest of commodity, bajra, coarse grain was a responsibility of the NAFED, but they seldom buy. So 24 crops MSP is announced. Most of the time, MSP is kept below the market price so that there is no need to buy. And if there need arises, they don't buy. So because the government needed these food grains for distribution purposes, therefore they did it for wheat and rice only. Now, these are the major reforms. Now comes the marketing. The remedial measures. Problem with India is
That's a country of very small farmers. There are 86.2% farmers are small and marginal farmers in India. 86.2%. And they have only 47.3% area. Then there are marginal farmers, they are 76.5%. Marginal means less than 1 hectare. And they occupy 34.5% area. Out of these marginal farmers, more than half of them sell their produce under distress sale because they have taken loans, they have to pay that loan back, and the same crop is bought by the farmers later on in the lean period at a high price. That's why they go under debt. So problem is of that small farmers. Then the question is how to handle it. The economics people know it. There are some growth models. It's a classical growth model, which means as the technology improves, the labor is rendered surplus in agriculture sector. But as the technology improves, gainful employments increase in the secondary and tertiary sectors, in industry and services. If those both things happen in a balanced manner, the growth comes up. For us, unfortunately, technology has rendered the agricultural labor surplus. And it is a push effect which is being pushed these labor outside our farm. But secondary and tertiary sector didn't develop to that level to absorb that labor, the gainful employment. Here comes the crux. If you see the Western world, for example, America, they have only less than 2% of the farmers of the population, only less than 2%. And their population is 1/4 of our population. Therefore, the farm are large. They are corporations, they are secondary and tertiary sectors which have absorbed that labor. Not only their own labor, but they are demanding from labor from outside also. We run to those countries. Whether it's Canada, whether it's USA, whether it's Europe, all these countries have developed their secondary and tertiary sector so much that the demand is more than supply. But in our case, supply is more than the demand because we didn't develop that. So answer is to develop the secondary and tertiary sectors. And along with this, you see problem, what is the problem? In Ludhiana, for example, in some other city, a little bit, we provide jobs for 9 lakh outside workers from Bihar, from UP, from Rajasthan. But there's unemployment in the farmer youth, Punjab youth. It's a contradiction. Why? Because these people who come from these outside states, they live in a very deplorable situation. I have a sympathy with them. In Chuggi Chompadis, in Charles, where 30, 40 families live together, there is no privacy, a few washrooms. So, in this condition, Punjab youth doesn't come. Only those come around the cities who can cycle down or come through motorcycles or otherwise easily. Otherwise, from the deep areas, they don't come. And as they get frustration and get addicted to the drugs and
intoxicants. Answer lies to take the job to the doorsteps of the people. Whereas you are developing industry and businesses, take the services and small and medium industries to the rural areas, take the job to the doorsteps of the people. So the person gets up in the morning, works for the day, comes back. There's no problem of residence, there's no problem of food. So this is the model, both of them work together, industrial and services sector development, as well as spread up the industries and startups up like this in the rural areas. Then it comes to marketing reforms. Very thoughtfully, the central government copied the laws passed by the Punjab state. In Punjab, 2005, Punjab government allowed the private individuals entry into the market of the Punjab. It was the Congress government at that time. In 2012-13, the Akali government passed the Contract Act. And the central government only copied those acts and applied in the rest of the country. No doubt there were two, in my opinion, two shortcomings. One of them was it was done very hurriedly. There was no need of a ordinance. Once between putting the bill to the parliament and the ordinance, this time could have been used as public discussion, put it on public domain, discuss with the stakeholders, and then take to the parliament, modified as it is. But here, unfortunately, the hurriedly done. Within 2 months, the bill was introduced, no discussion was allowed, and select committee was demanded by the opposition, which was not given. The sheer majority, it was just passed in 2-3 days. And same thing happened in the Rajya Sabha. In 2 days, President's signature was there. So that created a trust deficit. That is the major problem. And that trust deficit led to this agitation. And otherwise, the acts are very good. Some amendments were needed. Like the state role was removed, that should have been introduced. There were one or two small amendments were needed. And the government was ready to do this, but unfortunately, small-time politicians and petty politics that played this role and they were cancelled. Now the Punjab is again back in the same rut, in the same slush, where the farmer doesn't get even 20% of the money what the consumer pays. In the market, if the price is 20 rupees, to the consumer it costs 100 rupees or 80 rupees. So the retailer's margin is too high and nobody so far has tackled that. With these acts, some relief could come, but unfortunately, they were withdrawn. So these are the brief I have said about the agriculture reforms, which include production system in the land, which include technology for the research, and which also includes the market regulations. So I would stop here, and I'll invite the questions if you have any. You must have many, but don't expect me to answer everything. I'm not knowledgeable in every respect, but I'll try to answer if you have the questions. That's why I put it very brief, so that there's some discussion and question answer coming up. Thank you very much for this.
there's a written document, I think you have. Kindly sit, take Uh, a seat and then. I have deviated from that quite a bit, but anyway. Good afternoon, sir. Someone is asking. गुड आफ्टरनून सर माई सेल्फ सीता सर एक बेसिक सा क्वेश्चन था नॉट फ्रॉम दी लेक्चर सर जब हम इस यूनिवर्सिटी में अभी 2022 में इनरोल हुए हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है सर उन्होंने हमको बताया कि जब ये यूनिवर्सिटी स्टार्ट होना था तो ये ऐसा नहीं था जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में आज हम हैं तो सर आप इतनी अच्छी पोजीशन पे थे उस वक्त उसके बाद आपने इस यूनिवर्सिटी को स्टार्ट करने के लिए इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया कि हाँ मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करूंगा सर ये चैलेंज एक्सेप्ट करने के पीछे का बेसिक रीजन आपका क्या था Thank you. I don't know how to answer it. I didn't know. I was sitting in my brother, reading newspaper, and the vice chancellor called me, come here to it. I said, what? He said, you have been appointed chancellor of this university. I was pleasantly surprised. How come I'm made chancellor? At that time, the government had set up about 12 universities in 50 states. Now there are more. Normally, the chancellor of the central university is the vice president of India. And the state university's chancellor is the governor of the state. Since there are so many universities, so they appointed the chancellors. So Dr. Manmohan Singh, Prime Minister, was appointed as chancellor of the Bengal University, Central University. Meera Kumar was appointed the chancellor of the Bihar University. Amartya Sen was appointed the chancellor of the Nalanda University. And my friend Arak was appointed as chancellor of Gujarat University, and I was given the seat. It was quite a surprise for me. But anyway, I accepted this. It is a great honor to be chancellor for an ordinary person like me. So I actually worked in conference with the vice chancellors. I don't think Dr. Manmohan Singh has ever visited Bengal, or Meera Kumar have ever visited Bihar. I thought he said, give it to me, let me justify it. So I was constant contact with the vice chancellor. The vice chancellor whatever I could contribute. So this is what the story is. But I myself know what happened. Because I had earlier been a vice chancellor of two universities, one Punjabi University, and I was the chairman of the Crisis Commission of India. Worked with four prime ministers as on the advisory. So I was known to them. That's why I was given the chance. Thank you, sir. It was really inspiring for us to take challenges in this world. Thank you, sir. Technical सवाल करो भाई. Is it all flat or you understood everything? Because scholar बैठे हैं. But कम से कम तो मैं कुछ जवाब दे. Hello, sir. I am Dr. Chidanand Patil. So my question is that, as you mentioned about minimum support price. So minimum support price has become something called as maximum retail price for the farmers. Okay. So and also as you mentioned that the farmer share in consumer rupee has declined. So what policy decision can will help to increase the farmer share in consumer rupee? देखिए साहब मैं अपना हिंदी में कुछ उर्दू में कुछ करता हूँ.
फार्मर्स ने जो स्मार्ट टाइम लीडर्स थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा झूठ बोला था। वो झूठ ये था कि फार्मर कहा कि तुम्हारी जमीनें चल जाएंगी। वे जो एक्ट है वो जमीनों को प्रोटेक्ट करता है। इसमें क्या है, स्पॉन्सर जॉब कंट्रैक्टर है, वो जमीन को खरीद नहीं सकता फार्मर की जमीन, वो फार्मर की जमीन को लीज पर नहीं ले सकता, वो फार्मर की जमीन को मॉर्गेज नहीं ले सकता। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट पर लेता है ठेके पर, तो उसको जमीन को ठेके के बाद उसी सूरत में वापस करनी पड़ेगी। अगर उसने कोई कंस्ट्रक्शन किया है उसको डिमोलिश करना पड़ेगा। अगर वो बिना लिमिट पीरियड नहीं करता उसका मालिक फार्मर हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट में जो स्पॉन्सर है उसके पाँव में संगल डाले हुए बंधा हुआ है, लेकिन ये झूठ से क्या बोला कि ये तुम्हारी जमीनें चले जाएंगी, कारपोरेट ले जाएंगे। एक्ट तो बना ही इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, पहली बात। अब उन्होंने एमएसपी उसने लगा दी। देखिए एमएसपी जो है इस वर्ल्ड में इस वक्त 61 कंट्रीज हैं जो फार्मर को सब्सिडी देते हैं। कोई फार्म सेक्टर किसी भी कंट्री का सब्सिडी के बगैर नहीं बढ़ सकता। ये देखो कि स्टेट यूएसए 42 बिलियन डॉलर्स की सब्सिडी फार्मर को देता है, और वो 2% से भी कम है उस पॉपुलेशन के, और हमारे से 8 गुना कम है। हमारे तो 65% फार्मर है, हम उतनी सब्सिडी दे नहीं सकते। जापान से 4 टाइम्स देता है, चाइना सबसे हाईएस्ट सब्सिडी देता है फार्मर को, और यूरोप देता है। कोई कंट्री नहीं जो सब्सिडी फार्मर को नहीं देता, लेकिन कोई भी कंट्री नहीं उसको जो एमएसपी दे रहा हो। डायरेक्ट सब्सिडी है, उनके अकाउंट में जाती है, पर एकड़ के हिसाब से मिलती है। इसी को मैं प्रोपेगेट कर रहा था। आप जो किसी को एमएसपी नहीं है, तो आप यूएसए को देख लीजिए, 1998 से लेकर 2 डिकेड में उनकी जो फार्म की प्राइस 25% बढ़ी है, लेकिन फार्मर की जेब में पैसे पड़ गए, कंज्यूमर को पैदा हो गया। गवर्नमेंट पर तो लोड पड़ने तक पड़ गई। हमारा क्या सिस्टम है कि हम एमएसपी देते हैं, गवर्नमेंट पर लोड है, उसकी प्राइस बढ़ जाती है, कंज्यूमर बढ़ता है। फार्मर को सब्सिडी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन इज हाउ यू गिव इट। तो आई एम अगेंस्ट दी एमएसपी। मैं कहता हूँ डायरेक्ट सब्सिडी दो और उसको फोकस करो स्मॉल फार्मर पर, उसको ज्यादा लो, और थोड़ा बड़े उसको दो, बड़े आदमी जो 10 हेक्टेयर से ऊपर है उनको ना दो। सो क्वेश्चन इज सब्सिडी इज रिक्वायर्ड, बट हाउ यू गिव दिस सब्सिडी, जैसे फ्री बिजली है, दैट्स नॉनसेंस ऑलटुगेदर। मैं पंजाब की बात करूं, अगर बहुत दफा एनालिसिस करके बताया कि भाई जो आप सब्सिडी देते हैं ये फार्मर के ये में नहीं पड़ती। जब आप सब्सिडाइज करते हैं बिजली को, पानी को, तो जो क्वेश्चन है सीएसईपी वो सिर्फ फार्मर की कॉस्ट को कंसिडर करता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने दी है, वो कंसिडर नहीं करता, उसको कॉस्ट में नहीं आता। आपने बिजली फ्री दे दी, उसकी कॉस्ट में नहीं दिया, वो उसकी एमएसपी कम लगे तो उसको कोई फायदा ना हुआ। लेकिन जब एमएसपी कम हुए तो उसकी इशू प्राइस कम हो गई, तो फायदा तो कंज्यूमर को हो गया। 20-22 मिलियन टन का फूड ग्रेन को जो कंज्यूमर को पंजाब से पाल जाता है, ये सब्सिडी को और फार्मर के बड़े कुछ नहीं पड़ा। वो माना फ्री दो, उनको ये नहीं पता कि ये उनकी जेब में पड़ती नहीं जेब नहीं। सो इट्स ए डिजास्टर अगर एमएसपी को लीगल कर दिया। 24 क्रॉप की अगर लीगल कर देंगे आप, तो फार्मर इज नॉट ए ट्रेडर, गवर्नमेंट इज नॉट ए ट्रेडर। गवर्नमेंट का काम गवर्नमेंट करना होता है, ट्रेडिंग करना नहीं होता। वो कैसे हैंडल करेंगे?
तो अब इसका उसकी कंडीशन एमएसपी की ये है वो मार्केट प्राइस से ऊपर हो. Everybody would like to sell every last grade to the product to the government. The demand on that. क्या करेगी government? It will be a complete disaster अगर उसको legal कर दिया. Government should buy only what it needs, but provide the farmers with the direct support. This is the message. Does it make sense? महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि जैसे कि अभी आपने बताया उपभोक्ता के द्वारा जो कीमत कृषि कीमतों की खाद्य पदार्थों की जो दी जाती है उसका केवल 20% किसान प्राप्त करते हैं. किसान Okay, sir. My question is, what the price consumer pays for agricultural commodity is just 20% what the consumer pays. Farmer gets. The rising per capita income, the changing in the structure of food processing sector, urbanization, and different areas that are making a large space for agriculture or food processing sector. This hurt the income of farmer and that affect the investment in agriculture sector. After taking back the farm laws by the central government, what ways you see to increase the income of farmer or the payment that is being made by consumer go to the farmer? बात ये है कि प्रोसेसिंग जो है सिर्फ एक कॉस्टली है. प्रोसेस प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाएगी. जो गरीब आदमी है वो अनप्रोसेस प्रोड्यूस लेता है तो उसको वो उसकी कीमत बढ़ जाती है. देन इट गोज टू एलीट सोसाइटी. हायर इनकम पीपल के पास जाती है वो पैसे देते हैं तो उसका मार्केट ज्यादा हो जाता है. ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग थी इसमें क्या है, हब एंड स्पोक सिस्टम है. एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया फार्मर से और मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ. मैं ईरान में कहा वहां पर हमने कारखाना लगाया शुगर बीट का. That's why my proposal, क्योंकि ये साउथ में गन्ना ग्रो होता था फिर शुगर बीट. It was a new crop. In fact, it should be the new crops and new product which we should be, the people should deal. और उसको हमने ये किया कि फैक्ट्री को रिस्पॉन्सिबल किया कि वो सीड ले आए, वो मोनोजत सीड ले आए, वो फार्मर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. ना फैक्ट्री को पता है कि कहाँ ये सीड दिया, किसको सीड दिया, वो सारी टेक्नोलॉजी दी, हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी. वो जैसे जैसे जरूरत पड़ी वो ले आए. It was established in 1975, 76. मैं 2003 में गया, वो चल रहा था, ठीक चल रहा. फार्मर्स वाले उनको पता था कि मुझे प्राइस मिलेगी, कॉन्ट्रैक्ट है, नुकसान होगा तो फैक्ट्री का होगा. उनको फिर यही जो फार्म एक्ट था ना, इसमें यही प्रोवाइडेड था कि फार्मर की प्राइस सेटल कर ली. जब तक फार्मर को प्रोड्यूस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं देता तब तो उसका वो मालिक है. उसके अगेंस्ट जो है जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कर्जा भी नहीं ले सकता. जब वो डिलीवर करेगा अगर उसकी प्रोड्यूस कम रहेगी तो उसका नुकसान फैक्ट्री को होगा, फार्मर को नहीं होगा, क्योंकि उसने अगवाई है, वो उसने टेक्नोलॉजी दी है, उसने मशीनरी दी है, सब टेक्नोलॉजी है, तो उसको ग्रेड भी नहीं कर सकता. समझे ना, अपने लेवल पर ग्रेड. क्योंकि अगर अनग्रेड चीज को फेंकता है तो उसका नुकसान होता है. सो ये है सिस्टम जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का किया था. इट वाज ए वंडरफुल थिंग व्हिच वाज विथड्रॉन बाय द पीपल. तो इसका आंसर यही है कि हब एंड स्पोक सिस्टम हो, बड़ी बड़ी फर्म आए, उसका एक सेंटर हो और उसके दूसरी जगह जगह पर उसके सेंटर पर कलेक्शन सेंटर हो, उनको टेक्नोलॉजी दें, उनको सीड दें, वो फार्मर ग्रो करें और फिक्स प्राइस आपने दें तो ठीक रहेगा. तो एक आंसर यही है जो 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 कि उन्होंने फेल कर दिया. और आपने देखा ही है कि पंजाब में क्या हुआ. उनकी एम्बिशन थी पॉलिटिक्स और सभी की जमानत जब्त हो गई. जो चीफ मिनिस्टर बनने को मिलता है उसको 10,000 वोट पड़ेगा. मेरा कहने का मतलब
पीपल समझते हैं लेकिन मिसलीड करते हैं। ये पहले 2006-7 में 6 में रिलायंस का ने ये सिस्टम दिया था पंजाब को कि हम एक सेंटर बनाएंगे और सेंटर गिराएंगे, कंट्रैक्ट फार्मिंग करके हम उसको प्रोसेस करके हाई एंड मार्केट, ये बड़े बड़े होटलों में एक्सपोर्ट के लिए वो प्रोसेस होके जाएगा। तो एक बड़ा ड्यूल सिस्टम है, एक डायरेक्टली रॉ मटेरियल जो कंज्यूमर के पास जाए, गरीब आदमी के पास जाए, एक ये प्रोसेस मटेरियल जो हाई एंड मार्केट में जाए। तो ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम इसको एक्सप्लेन करने के लिए टाइम चाहिए। Namaste, sir. Sir, I have one question. There is always a skepticism when we hear the term private players. Sir, is it audible now? Sir, there is always a skepticism when we hear the term private players, or when we say we always label them as pro-corporate. But for the economic reforms, majorly agricultural reforms and related to allied activities, what we see is that majority of small and marginal farmers actually to increase their say so that their upgradation can happen. Actually, even cooperative firms and many other government institutions, don't we think that they also need to take the route where private players need to be introduced for increasing efficiency? How can they be made more useful to the farmers actually? Because private players, whenever there is a debate on taking them into the policy options also, we are very skeptical. We think that it's pro-corporate. So how can they help in these agricultural reforms per se? Thank you, sir. बात ये है जो मैं समझा हूँ, ये कॉर्पोरेट हमारे पास ये एक फोबिया बन गया है, लेकिन कॉर्पोरेट के सिवा चारा कोई नहीं है। इन्वेस्टमेंट तो वही करेगा जिसके पास पैसा है। मैं नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकते, फार्मर नहीं कर सकते। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो ग्रोथ कैसी होगी? मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। अब कोई कॉर्पोरेट, चलो आप अदानी ले लो, अंबानी ले लो, तो कितनी रोटियां खाते हैं, उनको भूखे लगती, टेंशन है, कितने पलंग पर सोते हैं, उनको नींद नहीं आती। वो तो परमात्मा के श्रापे हुए लोग हैं। और जो पैसा का कितना प्राप्त हो गया वो कहाँ जाता है? इन्वेस्टमेंट, वो एक्सपेंड करते हैं, जिससे एम्प्लॉयमेंट होती है, जिससे ग्रोथ होती है। कोई वेस्टर्न कंट्री जो है, अगर चाइना में कॉर्पोरेट हो सकते हैं, जापान में कॉर्पोरेट हो सकते हैं, रसिया में कॉर्पोरेट हो सकते हैं, जापान में हो सकते हैं, यूएसए में हो सकते हैं, तो हम क्यों नफरत कर रहे हैं? मैं मिसाल देता हूँ, प्राइम मिनिस्टर को उस का ये पेप्सी वालों ने मांगा कि भाई हमें आने दो। They were resistance from the investors. पेप्सी को रेजिस्टेंस थी। तो मैं मीटिंग हुई, उसके बाद मैंने प्राइम मिनिस्टर के आप उसको क्यों इजाजत नहीं देते? मुझे कहते हैं ये फार्मर के हक में है। मैं कहा कैसे? मैं कहते देखो इसी पेप्सी की जो है कॉन्ट्रैक्ट है रशिया से, यूएसए साथ उस वक्त उनसे कॉन्ट्रैक्ट ये है कि अगर $1 का वो पेप्सी पेस्ट ले आएंगे ना, टमाटो पेस्ट, तो $1 का दूध का एक्सपोर्ट करेंगे। और चाइना में ये है कि अगर $1 का वो पेप्सी का पेस्ट लाएंगे तो किसी भी चीज को अपनी चाइनीज की वो $1 की एक्सपोर्ट करेंगे। कम्युनिस्ट कंट्री है ये। मैं क्या दे रहे हैं? अगर $1 की पेप्सी का पेस्ट लाते हैं तो $4 की यहाँ ही प्रोड्यूस करके वहां पे देते हैं ही आपको। सेकंड है ही ओके।
उन्होंने वो टेक्नोलॉजी लाए। कैन यू इमेजिन, फार्मर ने फेल कर दिया उनको। अधूरा में प्लांट लगाया उन्होंने प्रोसेस का टमाटो का, वैरायटी लेके आए और उन्होंने टेक्नोलॉजी से 2.5 टाइम तो यील्ड बढ़ गई और 15-20 दिन अर्ली होगी, 15-20 दिन लेट होगी। जब अर्ली हुई तो इनका कंट्रैक्ट था 3 रुपए किलो का, तो वो बाजार में 10-12 रुपए किलो हो गया। फार्मर ने उनको टमाटो बेच दिया। जब दिलाटा है तो कई रुपए की नोट आए, उन्होंने को पैसे को उठाओ। जब लेट हुआ फिर 10-12 हो गए, भेज नहीं दिया। वो फ्रस्ट्रेट होके वो उसको बेचते हैं, वो फिर हो गए। तो क्वेश्चन ये है कि इस तरह के जो कंडक्ट है कॉर्पोरेट जो वही डिलीवर करते हैं, ये नेस्ले क्या है, कॉर्पोरेट नहीं है। पहले से चल रहा है, कॉर्पोरेट तो पहले ही हमारे पास है एंड दे आर सक्सेसफुल। नेस्ले ने अपने अराउंड एरिया में ऐसा नेटवर्क लगाया हुआ है कि उनके स्कूलों को भी पैसे देते हैं, उनके डेवलपमेंट के पैसे भी देते हैं, एनिमल्स के लिए मेडिसिन भी देते हैं और ऐसे तरीके से विद इन 1 आवर बिल्कुल आके चले कर देते हैं। बेका का कलेक्ट करते हैं, बड़ी दूर से कलेक्ट करते हैं, पता नहीं 4 घंटे लग गए, पा लेते हैं, मिट्टी रोड पड़ जाता है उसमें। तो कॉर्पोरेट जो है उनका सिस्टम जो है वो है, लेकिन हम तो एक नकल कर बैठे। ये अदानी का ये क्या इसका नाम है, मोगे के करीब वो सैलून है गंदम के, उसमें वो आदमी बापर खुली बंडी में लेके आता है ग्रेन्स ट्रॉली में। वो जब एंटर होता है तो वहां पर उसका सैंपल किया जाता है। जब तक वो तुलता है, उसको वेवमेंट होती है, उसका सैंपल की रिजल्ट आ जाते हैं। अगर वो ठीक है तो डायरेक्ट जाके प्लेटफॉर्म पर वो अनलोड कर देता है। अगर उसमें नुकसान को एक साइड से बाहर निकाल देते हैं, ठीक करके ले और वो 15 मिनट में जाके पैसे लेके घर चल जाता है। 50 रुपए का पर क्विंटल ज्यादा देता है वो पैसे। इन्होंने जाके उनको बंद कर दिया। अच्छा, इसी तरह से एक ड्राई पोर्ट है। ड्राई पोर्ट पर यहाँ पर एक कंटेनर जो डिलीवर होते थे, यहाँ पर डिलीवर आते थे। 4000 उन्होंने बंद कर दिया। 4000 आदमी को न 400 प्राइवेट को डायरेक्ट खत्म हो गई। 2000 फैमिली जो ट्रक वगैरह करते वो अनएम्प्लॉयड हो गए। गवर्नमेंट का 5000 का 5 करोड़ का जो टैक्स जाता रहा और सारी इंडस्ट्री को नुकसान हो गया। वही कंटेनर उसी की बंदरगाह पर बम्बई में डिलीवर करेंगे जाते। ये है हमारी सोच। So without the people, unless there is investment, cannot be growth. If there is no growth, there is no employment. ये for employment और उसकी मैं ये बोलूँगा कि don't hate them, they work for you. ये खुद सराहते हुए हैं और आपके लिए काम कर रहे हैं, कर रहे हो। हाँ जी, मेरा नाम जसपिंदर सिंह है, खेती लॉ सबमिशन। मेरे सर 3 सवाल ने ਇਹ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਲ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਮਾਲ ਫਾਰਮਰ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਲ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਅ ਕਿਤੇ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਲ ਫਾਰਮਰ ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ खेती जो बाहर ही हो जाते बड़े बड़े फार्म में। पहला सवाल है बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल फार्मर ने बात नहीं करना। छोटे छोटे फार्मर आन करके प्रोड्यूस करते हैं अपने, बड़ा फार्मर तो बड़ा प्रोड्यूस कर रहा है, छोटे को का मार्केटिंग सॉरी एक मिनट तेरा सवाल है लो गालिया। ये जो छोटा फार्मर है ना, ये एक उसके लिए फायदेमंद है। 2 एकड़, 1 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़, और ये उसको गोभी ग्रो करते हैं, 4 एकड़ गोभी ग्रो करेगा, कॉन्ट्रैक्ट पर उसको दे देगा। प्राइस फिक्स्ड है। अगर वो वैसे मार्केट में लेके जाएगा तो इस्लाम आ जाएगा। इसे फ्री डिटरमिन की इस प्राइस पर इन्होंने और उसके साथ एक क्लास दिया करती है कि ये मिनिमम प्रॉफिट में इतना लूंगा, भूल हो सकती है।
तो ये जो इनफैक्ट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, दिस इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्मॉल फार्मर। अदरवाइज फार्मर को क्या क्या करेगा, रो करके मंडी में ले जाएगा, मंडी में नेगेट प्राइस देना। नहीं सर, इसमें ये भी कर सकते हैं ना ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਤੇ ਲੋਕਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਟਰਮ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈਣਾ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸਮਾਲ ਫਾਰਮਰਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਹੋਣਗੇ, ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। तो स्मॉल फार्मर तो चाहोगे नहीं कि स्मॉल फार्मर अभी ठीक है, नहीं है जो स्मॉल फार्मर है वो लेबर इंटेंसिव है, वो फसल की देखभाल ज्यादा कर सका बड़े फार्मर। बड़ा जो बड़ा फार्मर है हम सारी जो बड़ा फार्मर है वो टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है। बड़े फार्मर को तो फायदा होना ही होना है, चाहे एमएसपी है चाहे कुछ भी है। छोटे फार्मर को नुकसान होता है। हम एमएसपी पर जोर डाल रहे हैं, ये एमएसपी तो भाई उसके लिए जिसके पास बेचने के लिए, बड़े आदमी को जो है वो उनका हर सूट से ज्यादा फायदा होना ही मालूम है। चले ठीक है, ये एक ही नहीं, ये तो इकोनॉमी ऑफ साइड है, इसमें स्मॉल फार्मर को मार्केट अवेलेबल है, फिक्स कीमत पर अवेलेबल है, अदरवाइज मार्केट है या नहीं है उसके लिए वो किस प्राइस पर देगा ही नहीं। सर डेवलप कंट्री में स्मॉल फार्मर्स का दिखाई नहीं देता, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? देखो स्मॉल फार्मर के लिए इनफैक्ट मस्ट क्विक, मैंने आपको मॉडल दिया है। मॉडल अगर हमारा टर्शरी और सेकेंडरी टर्शरी से डेवलप होता है, वही फार्मर शुड बी देयर, अपना कॉन्ट्रैक्ट पर जमीन पर काम करेंगे आके। छोटे फार्मर जो आज उनकी 75% इनकम फ्रॉम आउटसाइड है। जापानीज मॉडल देखो, 90% फार्मर्स आर पार्ट टाइम फार्मर, स्मॉल है, और उनकी 95% इनकम फ्रॉम द आउटसाइड सोर्स। दिस इज ए मॉडल फिर ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਅ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਾਰਮਰ ਤੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। यार मैंने सही लगी, असली में लेबर है, चलो बाहर जाके लेबर करने के लिए कर रहे हो, चटियां भी साफ कर रहे हैं। चलो जने करते हैं, मेरा कहने का मतलब बाकी लेबर इनकम लेनी है कि नहीं? मैंने बे एक एकड़ के फार्म पड़े हो, गंगा सोने लगी थे वो तो होटल वाला शुरू कर रहे हो, तो ये नहीं काम को थोड़ा नहीं हो। नेक्स्ट अपना वो मॉडल है मतलब why farmers should be bottled up there in the sector। हम तो उनको बॉटल कर रहे हैं, उनके पास इनकम, जो छोटा फार्मर है अगर फार्मर से लेगा इनकम, कैन ही अपने बच्चों का एजुकेशन देगा, उससे हेल्थ देख लेगा, इमरजेंसी के पैसे दे देगा, तो उसको कोई सोशल वर्कर उस पर पैसे उसके पास हैं, वो कर्जा ही है। अगर उसको जॉब मिलती है तो जॉब से रेगुलर इनकम आएगी उसकी, he can invest it back in small farm। तो मालिक भी होगा ना करता है। दूसरा सवाल मालिक ही है, मगर पहले की मैंने सब लगी चलो ਸੈਕੰਡ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੀਜ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਸੀਡਸ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸੀਡ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਸੀਡਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਸੀਡਸ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ जेनेटिक इंप्रूवमेंट ਜਿਹੜੀ ਆ अनस्टॉपेबल, यह लोगों ने लड़की की मुंह के द्वारा आ गया, ये ਜਿਹੜੀ टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट तक नहीं ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਆਲਰੇਡੀ ਸਰ ਯੂਰਪ ਨੇ ਤਾਂ ਬੈਨ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਯੂਰਪ ਕਿਉਂ ਬੈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਯੂਰਪ ਨੇ? ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯੂਰਪ ਬੈਨ ਕੀਤਾ? ਯੂਰਪ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਸੋਂ ਦੀ ਕੋਣ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੇ ਕਾਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਜੋ है। मैं ये काम ना बचाएं ठीक है वगैरह
कुछ दे दिया लेकिन उन्होंने दे दिया चलो तो हमने निशान नहीं लगता कि हम इधर की ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਆ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ज्यादा एसेंशियल कमोडिटी एक बढ़ कर रहे थे बीकेजी का जो मान वो ट्रालियां लेके दिल्ली गया एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को खत्म करो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर गवर्नमेंट ने एक्सप्लॉइट किया पावर से मंडियां ने तो जिन्हें लेकर बैन आता कि एक जिले दूसरे प्रोड्यूस निकाल दे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट और प्राइवेट ट्रेडर बात कर रहे हैं ताकि प्राइस एमएससी के थले आ जाए गड्डियां देनी बंद कर दी उन्होंने अपना स्टॉक नहीं कर सकते और वो बैंक को पैसा नहीं दे सकते तो गवर्नमेंट ने मोनोपोलाइज करके प्राइस को थले रखा अदरवाइज प्राइस ऊपर जाए वही भी केजी का प्रेसिडेंट ट्राली जाके दिल्ली जाके कर दिया जो भी करते था हम रिपीट किसी बंदे से बहुत बहुत धन्यवाद समय अभाव कारण अभी हम प्रश्नों को मेरा नाम हितांश शेवकानी है First of all, sir, I would like to thank you for such an informative lecture on agricultural reforms in independent India, sir. Thank you so much, sir, for that. Sir, we talk about the agricultural chemicals and their harmful effect on the health. We also talk about their harmful effect on the soil. Sir, we will be very glad if you share your views on organic farming, sir. very good I am for organic farming जो कुछ हो रहा है वो नहीं है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए आपको 3 साल जमीन खाली करनी पड़ती है उसके बाद आपको जो चीज बीजोगे उसकी हर साल इंस्पेक्शन होगी एक्सटर्नल एजेंसी 3 साल चलेगा वो उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यहाँ पर उठा के ले जाते हैं ऑर्गेनिक है जिसको फर्टिलाइजर आराम है यू कैन से दीज पीपल प्रोड्यूस के ये उसका लेबल लगा सकते हैं इसमें कोई केमिकल यूज नहीं किया लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं है ऑर्गेनिक के लिए बहुत उसकी ट्रेसेबिलिटी होती है देयर इज ए सिस्टम एक हमारी एक कंपनी है इंटरनेशनल ट्रेसेबिलिटी सिस्टम्स दिल्ली में उन्होंने आईटीआई दिल्ली के कोऑपरेशन से और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हॉर्टिकल मिशन के से उन्होंने एक सिस्टम पैदा किया ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो माइक्रोब बेस्ड था उन्होंने इसी जमीन से 2 ग्रुप माइक्रोब्स के लिए इसी जमीन से आइसोलेट किया एक 9 माइक्रोब्स का है एक 7 माइक्रोब्स का है जो 9 माइक्रोब्स का है वो फर्टिलाइजर देता है और उससे इंसेक्ट कंट्रोल होते हैं वो कैसे होता है कि वो 1 किलो की उनकी पैकेट है अनर्ट मटेरियल के साथ आप 1 क्विंटल गोहा ले लें उसको जो कुछ 1 क्विंटल में वो मिक्स कर दें जैसे उसको डाल दो 1 हफ्ते में वो सारा सफेद हो जाएगा 2 या 3 टन जो है आप खाद डालो खेत में उनको माइक्रो को भी ऑर्गेनिक कार्बन चाहिए तो 20 की बजाय 3 टन से आप उसको एक एकड़ में डालता है ये मैंने कंडक्ट कराया था और उसके मेरे पास है अपनी मैंने वो इंडिपेंडेंट डेटा यूनिवर्सिटी से वो पंजाब में 3000 हेक्टेयर पर उन्होंने वो किया और उसमें था ये करेला इडली मकई और सिट्रस और लखनऊ में उन्होंने किया था आम फल उधर कोई 3 साल किया तो उसको ट्रेसेबिलिटी सिस्टम है
वो बहुत कामयाब था। मैंने उसका ऑर्गेनिक कार्बन 3 साल में देखा। पहले साल में यील्ड कम थी, उसको फर्टिलाइजर नहीं डाला था दुनिया, और उसी दूसरे साल में उसके ऑर्गेनिक मैटर तकरीबन बराबर आ गई। तीसरे साल में यील्ड बढ़ गई क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर हो गया। हम क्या करते हैं, तो देसी कीट कर रहे हैं, सारी ये कोई बर्निंग हो रही है आजकल, आग लगा रहे हैं, जमीन देसी कीट होगी, उसको फर्टिलाइजर की एफिशिएंसी दी नहीं होगी। अगर उसमें ऑर्गेनिक कार्बन फर्टिलाइजर एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो मैंने वो सारी क्रॉप्स देखी, मेरे पास डेटा है, और उसी माइक्रो ग्रुप को आप पूरे के थोड़ा डाल के बड़े पानी के ड्रम में डाल दें, हफ्ते के बाद एवरेज को डिकेंट करो, दैट कंट्रोल्स ऑल द इंसेक्ट्स। वो जो साथ वाला है वो भी फर्टिलाइजर है, उससे डिजीज जो है वो कंट्रोल होती है, तीसरा तैयार कर। इनमें कोई 10-15 ग्रुप के फार्मर लिए थे, उस पर एक सुपरवाइजर गया था, पंजाब में 30,000 हेक्टेयर पर गए। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट था, उन्होंने उसके पैसे नहीं दिए। ये इट इज पॉसिबल, बट नॉट द ऑर्डिनरी वे कि भाई हम इसको ग्रोए की खाद डाल दी, उससे काम नहीं पड़ेगा। ये अगर माइक्रो बेस होगी ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये काम यूनिवर्सिटीज का है। मैं आपकी भी माइक्रोवेव की केस है, आप डिपार्टमेंट है माइक्रोवेव का, जी सर, उनको ये ड्यूटी दो के अगर चाहो तो मैं आपको सैंपल दवा के दे सकता हूँ, इसको एनालाइज कर लो, और इसी जमीन से आप आइसोलेट करो, माइक्रो तो नई चीज नहीं आनी उसमें। There is a possibility, and for organic farming, a system has to be created. It's a lot of research is required. The present जो कहते हैं organic farming, organic product नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। विषय ही ऐसा है कि हमारे मन में कई प्रश्न भी हो जाते हैं, लेकिन हर एक सत्र की अपनी इनको देखते हुए अब मैं माननीय कुलपति महोदय जी से निवेदन करता हूं कि वे अपना उद्बोधन हमारे पर दें। Respected Professor Sardar Singh Jolji, former Chancellor of Central University of Punjab, resource persons for this seminar, participants, teachers and dear students. एक बहुत ही प्रश्न आया था चांसलर का, क्योंकि यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट हैं, so I would like to further clarify. Chancellor's role in the university is like President of India, and Vice Chancellor's role is like Prime Minister. Vice Chancellor is the executive head, and Chancellor is the tutorial head, and Chancellor advises, and he has two well-defined roles to perform in the university. We have been lucky that a person of stature of Professor Sardar Singh Jolji has been the longest serving Chancellor of Central University of Punjab, and whatever university is today, in whatever shape it is in terms of quality infrastructure, in terms of quality teachers, students, and other support services, that all these have developed under the very kind vigil and guidance of Professor Sardar Singh Ji. You know, he is 95 years old, but he has so much attachment with this university that on our request, at this age also, he spared his valuable time and shared his thoughts about this very particular and pertinent issue. What I liked most in him and what I am inspired actually is his frank expression of his ideas without mincing words. He always speaks his mind, and most of the time I have seen myself that what he speaks, that makes really sense, and that is very relevant for the farming sector of our country. You know, he has given a brief write-up where he has thrown several ideas,
You know, he is actually the creator of knowledge. He is creator of ideas, and he is original thinker. His thoughts are not influenced by what he reads and what he listens from others. He is a person of very strong liking and disliking. I'm thankful to you, sir, for sparing your valuable time at this age, and I'm sure that whenever we need your guidance and we need inspiration from you, you will always be available to us. You will always be kind to us. You know, several things have happened, several questions have come, and the last one, organic farming. Sir has said very clearly, he said 3 years. I said 10 years are needed to detoxify the soil of our nation. Minimum 10 years. We have toxified it so much that it will take 10 years. That's one issue. And organic farming is not only producing food grains through organic means. It is a complete system, right from production. Then like gehu, kanak, how you make atta from that. Then how you cook that. And then with what combination you eat it. This is complete organic farming cycle and organic lifestyle. You know, we had to go green. And you know, that is very essential. Not only in seminars like this, in our lifestyle, we had to embrace green lifestyle and lifestyle which makes the natural resources sustainable, not over exploitation. You see, another problem is over exploitation of the resources. I am of the strong view that we are producing food grains, we are producing vegetables, we are producing fruits, then exporting them. Along with these items, essentially we are exporting the water of our nation, and we are also exporting the soil nutrients. That we have to keep in mind. Here we have, you know, and you will be listening, a person of very high dedication to the farming sector, Mr. Umendra Duttji. He will interact with you. He is devoting his whole entire efforts, entire lifetime, energy, everything for millets, for production of millets. He will be talking to you. You know, the entire, thing has become topsy-turvy, has become upside down. And then we talk about so many things. Our entire lifestyle, farming system has gone sea change. You know, when I was child, you know, I did my, up to class 11, I studied from my village. I lived with my grandfather. I have seen what used to be the actual farming in India. In the same plot, 5, 6 things were grown in the same plot. Professor Umendra ji must, I think we'll be surprised to know that in the same plot, 2 types of millets, jowar and kodo, in the same plot. Then there used to be til in the same plot. Then amari, uski skin se hum log rope banate the, jitni bhi tarah ki rassiyan ki जरूरत पड़ती थी गांव. The village life was self-contained, it was self-sustained, and everything that was needed for livelihood, everything was produced from the field, and everything was biodegradable. And that was, and that is how, and not only that, every farmer, how small he or she was, used to leave at least 1/4 of his land or plot for regenerating or for increasing soil nutrients. And only in the remaining part, they used to cultivate. Even if they were very poor, but they will not cultivate the whole plot. 1/5 to 1/4, they will leave it uncultivated. And in every 4th year, at least once the plot will not be cultivated. This traditional wisdom of farming, from where it came? It came from our good practices. It came from our lifestyle. It came from our values. Now there is a very strong competition for, in every 6 months, I should be able to change my car. The latest model I should be able to buy by any means. I should change my class every 3 months. I know an officer in Delhi, morning he goes with one dress, afternoon he changes his dress.
So the lifestyle and so much burden on the natural resources that that is happening. So we had to, and COP27 talks about several things, but nobody talks about how to live sustainable lifestyle. And unless every creature on this earth, and now we have destroyed the entire ecosystem, biological ecosystem, everything we have destroyed. We used to study in books earlier that the earthworms are the friends farmers. In general knowledge also question used to come. Who is the friends farmer? Earthworm. Now there's no earthworm in any field. You go anywhere in India, nowhere, even in the hills. And earthworms, we know what is the critical role that play. The earthworms play in increasing the fertility. Several other things. Every household used to have compost pit to produce, green manure. Now where are all these things? So unless we revisit our past and the past practices of agriculture alongside every practices of entire lifestyle, nothing is going to change. Now, earlier, millets were the food grains of poor. Now millets are the food grains of rich people. So everything is changing. Now we'll be back to original one from where we were, and as soon as we come back, that is safer for us. That is safer for this planet Earth. Otherwise, we have very doomed future for all, not only for all of us. I was traveling a train and I was interacting with some young boys. They were IT professionals, and then we started discussing this particular issue, and I was surprised to listen from them. They said that I'm born to enjoy life. I don't bother what will happen to future generations. See, that is the mindset that we are developing now. We don't want to see the continuity of this great humanity because we do not know how difficult it has, how long time and in what difficulty the protozoans, the single cell animals have become metazoans, and how much time it has taken and what struggle all life in different stages, in different forms might have undergone to produce Homo sapiens. That we do not know. If we realize that, then we'll all be determined to save humanity on this matter. Thank you again, sir, and I'd like to compliment the organizers again for organizing this beautiful discussion and for roping in experts from different parts of the country for shaking the mind of the students of our university and giving them proper direction. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे मुख्य अतिथि का आप सम्मान करें, क्योंकि परंपरा अनुसार अतिथि का स्वागत सभी से निवेदन है कि स्थान पर खड़े होकर ताली बजाकर हमारे अतिथि का स्वागत करें, सम्मान करें। इससे पूर्व के सत्र में वी रामानाथन जी का भी सम्मान अभी सर आपको आइए।
अच्छा तुम लंच कराइए
माननीय श्री सुधीर जैन जी, IIT मद्रास के निदेशक माननीय प्रोफेसर बी कामाकोटी जी और तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री के अन्नामलाई जी, आप सभी का आदरपूर्वक स्वागत और साथ में स्वागत வரவேற்று மாண்புமிகு உத்தரப்பிரதேச ஆளுநர் திருமதி ஆனந்திபென் பட்டேல் அவர்களையும் மாண்புமிகு உத்தரப்பிரதேச முதலமைச்சர் திரு யோகி ஆதித்யநாத் அவர்களையும் மாண்புமிகு மத்திய கல்வி அமைச்சர் திரு தர்மேந்திர பிரதான் அவர்களையும் மாண்புமிகு மத்திய தகவல் ஒலிபரப்பு மத்திய இணை அமைச்சர் திரு என் முருகன் அவர்களையும் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் திரு இளையராஜா அவர்களையும் மேலாள் மத்திய இணை அமைச்சர் திரு பொன் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களையும் காசி இந்து பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் திரு சுதீர் ஜெயின் அவர்களையும் சென்னை தொழில்நுட்ப கழக இயக்குனர் முனைவர் காமகோட்டி அவர்களையும் தமிழ்நாடு பாரதிய ஜனதா பார்ட்டியின் தலைவர் திரு அண்ணாமலை அவர்களையும் வருக வருக என வரவேற்கிறோம். இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பதற்காக வருகை புரிந்திருக்கிற ஆதின கர்த்தர்களையும் அனைவரையும் மீண்டும் வருக வருக என வரவேற்கிறோம். मान्यवर सदियों पुरानी संगमम की परंपरा को पुनर्जीवित करने की माननीय प्रधानमंत्री जी की अप्रतिम कल्पना आज काशी तमिल संगमम के रूप में साकार होने जा रही है। तमिल समाज, तमिल संस्कृति और काशी के साथ उनके कालातीत प्रगाढ़ संबंधों को रेखांकित कर माननीय प्रधानमंत्री जी की एक भारत श्रेष्ठ भारत की महान सोच का ही एक आयाम है काशी तमिल संगम। மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் மாண்புமிகு மத்திய கல்வி அமைச்சர் தமிழ் பாரம்பரிய முறையில் அங்கவஸ்திரம் அணிவித்து நினைவு பரிசினை வழங்கி இப்போது சிறப்பிப்பார்கள். माननीय शिक्षा मंत्री श्री नरेंद्र प्रधान जी से सादर अनुरोध करते हैं कि कृपया स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र प्रदान कर माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें। தமிழ் மக்களின் உள்ளத்து கழிப்பை தெரிவிக்கும் வகையில் காசி தமிழகம் நெடுங்கால தொடர்பு என்னும் நூலினை மேனாள் மத்திய இணை அமைச்சர் திரு பொன் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் தமிழ்நாட்டின் சார்பாகவும் தமிழ் மக்களின் சார்பாகவும் தற்போது மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்களிடத்தில் வழங்குகிறார்கள்। और माननीय श्री पोन राधाकृष्णन जी से सादर आग्रह कि कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी को पुस्तक काशी तमिलागम कनेक्ट भेंट करें। इस पुस्तक में काशी और तमिलागम के बीच इतिहास के विभिन्न बिंदुओं के आधार पर विभिन्न तथ्य और घटनाएं संकलित की गई हैं। 3 भाषाओं में इस पुस्तक को माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट किया जा रहा है। मॉरिशस के तमिलनाडु भ्रमण से लेकर काशी के तमिल समाज से जोड़ने वाले विभिन्न प्रसंग इनमें सम्मिलित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। தகவல் ஒளிபரப்பு, மீன்வளம், கால்நடை பராமரிப்பு மற்றும் பால் வளத்துறைகளுக்கான மத்திய இணை அமைச்சர் டாக்டர் என் முருகன் அவர்களை வரவேற்புரை ஆற்றுவதற்காக அன்போடு அழைக்கிறோம்। माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एन मुरुगन को स्वागत संबोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। புனித பூமியில வாரணாசியில காசி தமிழ் சங்கமம் இந்த நிகழ்ச்சி ஒரே பாரதம் உன்னத பாரதம் இந்த பாரதியாருடைய கனவை நனவாக்குகின்ற இந்த தமிழ் காசி தமிழ் சங்கத்திற்கு வருகை தந்திருக்கின்ற நம்முடைய மாண்புமிகு மரியாதைக்குரிய பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்களை இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருக வருக என வரவேற்று காசி தமிழ் சங்கமம் காசியில நம்மளுடைய உத்தரப்பிரதேசத்துல இந்த மாநிலத்துல சிறப்பான ஒரு வரவேற்பை வழங்கி இருக்கின்ற மாண்புமிகு
அவர்களையும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஐயா இளையராஜா அவர்களையும் மாண்புமிகு முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் அண்ணன் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களையும் பனாரஸ் இந்து யூனிவர்சிட்டி வைஸ் சான்சலர் திரு சுதீப் ஜெயின் அவர்களையும் சென்னை ஐஐடியினுடைய டைரக்டர் திரு ராமகோடி அவர்களையும் தமிழ்நாடு பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தலைவர் திரு அண்ணாமலை அவர்களையும் இங்கு வருகை புரிந்திருக்கின்ற ஆதினங்கள் பெரியோர்கள் தாய்மார்கள் உங்கள் அனைவரையும் இந்த நிகழ்ச்சியில வரவேற்று காசிக்கும் தமிழ்நாட்டிற்கும் உள்ள ஒரு மிகப்பெரிய பந்தம் இருக்கிறது. அந்த பந்தம் ஆண்டாண்டுகளுக்கு முந்தைய பந்தம். அந்த பந்தம் ஆண்டுகள்ல கணக்கிட முடியாத ஒரு பந்தம். பாண்டிய வம்சத்தை சேர்ந்த அதிவீர ராம பாண்டியன் காசிக்கு யாத்திரையாக வந்தார்கள். அவர் இன்று திரும்பி சென்ற பிறகு தென்காசியில மிகப்பெரிய ஒரு சிவாலயத்தை நிறுவினார்கள். அதே போல அவருடைய மூதாதையர்கள் நம்முடைய சிவகாசியில ஆலயத்தை நிர்வகித்தார்கள். ஸ்கந்த புராணத்தின் தமிழ் பாடல்களாக ஆசி காண்டம் அவர்கள் பெரிய உறவை இந்த நிகழ்ச்சி பிரதிபலித்துக் கொண்டிருக்கும் விதமாக நாம் வாரணாசி வழக்கத்தில் சொல்லுவோம். நம்முடைய ராமேஸ்வரம் போயிட்டு காசிக்கு வருவோம், காசியில ராமேஸ்வரம் வருவது பெரிய ஒரே பாரதம், உன்னத பாரதம். தமிழ்நாட்டினுடைய கலாச்சாரம், தமிழ்நாட்டினுடைய பண்பாடு இன்றைக்கு உத்தரப்பிரதேசத்துல எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த அருமையான தமிழ்நாடு கலாச்சாரம் மட்டுமின்றி கல்வியினுடைய மிகப்பெரிய ஒரு கல்வி ஸ்தாபனம் பனாரஸ் இந்து யூனிவர்சிட்டி இருக்கிறது. அவர் தமிழ்நாட்டினுடைய புதிய தேசிய கல்விக் கொள்கையை இன்றைக்கு இந்த எடுத்துக்காட்டு விதமாக ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இணைப்பு நிகழ்ச்சியாக இந்த நிகழ்ச்சி இருந்தது. நம்முடைய பாரதியார் அவர்களுக்கு எங்களுடைய பாரதியார் சுதந்திர போராட்டத்திற்காக வெற்றிட்டவர், பெண் அடிமையை எதிர்த்தவர், பெண் சுதந்திரத்தை பாடுபட்டவர். அவருக்கு பனாரஸ் இந்து யூனிவர்சிட்டியில ஒரு இயற்கையை கொடுத்து நம்முடைய பாரதியார் அவர்களுக்கு பெருமை சேர்த்த நம்முடைய பிரதமர் அவர்களுக்கு தமிழக மக்கள் சார்பிலும் தமிழ்நாட்டின் சார்பிலும் அவர்களுக்கு நன்றியை சொல்வதோடு ஒரே பாரதம் உன்னத பாரதம் மூலமாக தமிழ்நாட்டினுடைய கலாச்சாரம், தமிழ்நாட்டினுடைய பண்பாடு, தமிழ்நாட்டினுடைய காஞ்சிபுரம் புடவைகள், பனாரசினுடைய புடவைகள் தமிழ்நாட்டிற்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இணைப்பு பாலமாக இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்திருக்கின்றோம். பெரியவர்கள் ஒரு மாதம் கார்த்திகை மாதம் இந்த நிகழ்ச்சியானது முழுவதும் நடைபெறுகிறது. தமிழ்நாட்டினுடைய கலாச்சாரத்திற்கு இந்த நிகழ்ச்சியில் வருகை தந்திருக்கின்ற பெரியவர்கள் அனைவரையும் மீண்டும் ஒரு முறை வரவேற்று வரவேற்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். ஜெய் ஹிந்த், ஜெய் பாரத். काशी के साथ तमिल का एक बहुत बड़ा धार्मिक है। रामेश्वर क्षेत्र से मिट्टी लेकर काशी की गंगा में डालकर फिर वापस रामेश्वर में रामनाथ स्वामी को अभिषेक करना है, यही काशी यात्रा का पूर्ति। काशी तमिल संगमम कार्यक्रम के लिए माननीय प्रधानमंत्री के अभिनंदन और धन्यवाद देकर माननीय केंद्र राज्य मंत्री श्री एल मुरुगन जी स्वागत भाषण दिया। காசிக்கும் தமிழகத்திற்குமான தொடர்பில் இசைக்கு இடையற்ற பங்குண்டு. இந்துஸ்தான் இசையும் கர்நாடக இசையும் ஒன்றுக்கொன்று சகோதர உறவு பூண்டவை. இங்கே மோகனம் என்றால் அங்கே பூபாரி, இங்கே சிந்து வைரவி என்றால் அங்கே வைரவி, இங்கே கேதாரம் என்றால் அங்கே நடகா, இங்கே தன்யாசி என்றால் அங்கே தனாஸ்ரீ. இப்போது இசைக்கிற இந்த காசி தமிழ் சங்கமத்தில் உரையாற்ற வருகிறார் இசை ஞானி இளையராஜா. तमिल संस्कृति में रचे बसे तमिल संगीत के सम्मानित जाति में राज्यसभा सांसद माननीय श्री इளையராजा जी, माननीय सांसद महोदय अपने उद्बोधन के लिए आमंत्रित हैं। மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்களே, மாண்புமிகு உத்தரப்பிரதேச ஆளுநர் மற்றும் முதலமைச்சர் அவர்களே, மதிப்பிற்குரிய மத்திய அமைச்சர்களே, நாடாளுமன்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர்களே, காசி தமிழ் சங்கமத்தில் திரளாக பங்கேற்றுக் கொண்டிருக்கும் தமிழ் பெருமக்களே,
மற்றும் காசிவாசிகளே, உலகம் வியக்க பார்த்து கொண்டிருக்கும் இந்த காசி தமிழ் சங்கமத்தின் நிகழ்வுகளை காண வந்திருக்கும் திரளான பெருமக்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை, மகிழ்ச்சியான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தமிழுக்கும் எவ்வளவு தொடர்பு இருக்கிறது என்பதை இங்கே விளக்கி அனைவரும் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள். பாரதியார் இங்கே 2 வருடம் இங்கே படித்திருக்கிறார். இங்கே படித்து அவர் கற்றுக்கொண்ட விஷயங்களை உலகர் பெருமக்கள் உரையாடியதை, அவர்கள் விவாதத்தில் பங்கு கொண்டதை நாம் நேரிலே பார்த்திருந்து காசி நகர் புலவர் இங்கே செய்யும் பேச்சுக்களை காசியில் கேட்க ஒரு தயாரி செய்வோம் என்று இந்தியாவிற்கு எந்த விதமான முன்னேற்றமும் இல்லாத நேரத்திலே அவர் அந்த பாடலை பாடியிருக்கிறார். கங்கை நதிப்புறத்து கோதுமை பண்டம் காவிரி வெற்றிலைக்கு மாறுபடுவோம் என்று அப்பொழுதே அவர் வங்கத்தில் ஓடிவரும் நீர்மூழ்கையெல்லாம் நகைத்து நாடுகளில் பயிர் செய்வோம் என்று நதிகள் இணைப்பு திட்டம் வருவதற்கு முன்பு அவர் 22 வயதில் பாடிவிட்டு போய்விட்டார். அப்படியாக பாரதியார் தன்னுடைய 9 வயது முதல் 11 வயது வரை 2 ஆண்டுகள் இங்கே இருந்து பயின்று அவர் அறிவு பெற்றிருக்கிறார் என்பது மிகவும் தமிழ் பெருமக்களுக்கு மிகவும் அரிய விஷயமாகும். அதே போல் நீங்கள் அறியாத, இதுவரை குறிப்பிடப்படாத ஒரு விஷயத்தை இங்கே சொல்ல விரும்புகிறேன். கபீர் தோஹாவளி பாடினார், 2 அடிகளிலே பாடுவது. அங்கே தமிழில் திருவள்ளுவர் திருக்குறள் என்ற நூலை இயற்றினார் 2 அடிகளில், 2 வரிகளில். தோஹாவளியை 8 சீர்கள் அமைந்திருக்கின்றன. திருக்குறளில் 7 சீர்கள் தான். முதல் அடி 4 சீர், 2ஆம் அடி 3 சீர். இந்த நிகழ்வுகளையும் நாம் ஒப்பிட்டு பார்க்க வேண்டும். இந்த 2 அடிகளில் பாடிய கபீர்தாஸ் ஆன்மீகத்தை பற்றி பாட திருவள்ளுவர் உலகையே அதை 1330 பாடல்களாக எழுதினார். இன்னொரு விஷயத்தை, யாரும் குறிப்பிடாத விஷயத்தை இங்கே சொல்லுகிறேன். முத்துசாமி தீட்சிதர் இங்கேதான் கர்நாடக சங்கீதத்தின் மாமேதை என்று போற்றக்கூடிய மும்மூர்த்திகளின் ஒருவரான முத்துசாமி தீட்சிதர் இங்கே வந்து நிறைந்து பல இடங்களில் தேசாந்திரமாக பாடிக்கொண்டு சென்றவர். கங்கை நதியில் மூழ்கி எழும் பொழுது அவர் கையிலே சரஸ்வதி தேவி வீணையை பரிசளித்திருக்கிறார். அந்த வீணை இன்னும் இருக்கிறது, அருங்காட்சியகத்திலே வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதையும் இங்கே சொல்லியிருக்கிறேன். அப்படிப்பட்ட பெருமை மிகுந்த இந்த காசி நகரிலே தமிழ் சங்கமத்தை எப்படி நடத்த வேண்டும் என்ற இந்த எண்ணம் நமது பிரதமர் அவர்களுக்கு எப்படி தோன்றியது என்பதை நான் மிகவும் வியந்து கொண்டிருக்கிறேன். I cannot express my feelings only because the thought you have to make தமிழ் சங்கமம் in this புண்ணிய பூமி காசியிலே நடத்துவதற்கு உங்களுக்கு எப்படி இந்த ஆலோசனை வந்தது என்பது நான் வழங்குகிறேன். எல்லாம் அந்த இறைவன் உங்களுக்கு நீண்ட ஆயுளும் நிறைந்த புகழும் மென்மேலும் ஓங்குக என்று வாழ்க்கையை உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுகிறேன். வணக்கம். श्री इलैयाराजा जी ने भाषण दिया, उसका संक्षेप। कबीर के उसके साथ तिरुवल्लुवर के तिरुकुरल दोनों भी 2 वाक्य में है। तमिलनाडु और काशी ये दोनों के बड़ा पुराना संबंध बनाने का एक महा उत्सव है ये काशी तमिल संगम। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद देने चाहते हूँ। गंगा देवी वनमिக்க வளர்ந்த உத்தர பிரதேசம் வயநாட்டரை கீழடியிலும் பொருளேக்கரை ஆதிச்சநல்லூரிலும் இன்னும் பழமையாக சென்னை பல்லாவரத்திலும் அதிலும் பக்கத்திலும் தொல்லியல் எச்சங்கள் கிடைத்துள்ளன. அதுபோலவே காசிக்கும் தமிழுக்கும் 12 பழைய தொடர்பு உண்டு என்பதை ஊர்ஜிதப்படுத்தும் வகையில் உத்தரப்பிரதேசத்திலும் பழங்கற்கால தடயங்கள் அப்பர் ஆர்கியாலஜிக்கல் ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் கிட்டியுள்ளன.
மாண்புமிகு உத்தரப்பிரதேச முதலமைச்சர் திரு யோகி ஆதித்யநாத் அவர்களை இந்த தருணத்தில் வாழ்த்துரை வழங்குமாறு அன்போடு அழைக்கிறோம். और आने कृषि काशी का माननीय प्रधानमंत्री जी की अनुपम कल्पना के अनुरूप विकास करते हुए इसे पुरातन संस्कृति और आधुनिक विकास के समागम की नगरी बनाने में लक्षित सोच के साथ प्रयासरत है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। काशी तमिल संगमम के आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल माननीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री माननीय श्री एल मुरुगन जी, माननीय सांसद श्री वी राजा, पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय श्री पोन राधाकृष्णन जी, भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु के अध्यक्ष के अन्नामलाई, IIT चेन्नई के निदेशक प्रोफेसर डी कामाकोली, BHU के कुलपति प्रोफेसर सुनील जैन जी, आज के इस काशी तमिल संगम के इस कार्यक्रम में तमिलनाडु से पधारे हुए पूज्य सभी पूज्य और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, पूर्णकारी काशी द्वारा काशी में आपका स्वागत है। विश्वेश्वर की पवित्र धरा पर रामेश्वरम की पाठशाला से बुलाए सभी अतिथियों और महानुभावों का स्वागत है। காசி நகரின் இந்த புனித பூமியில் விஸ்வேஸ்வரரின் திருக்கோயில் அமைந்துள்ள இந்த புனித பூமியில் ராமேஸ்வரத்திலிருந்து வந்திருக்கின்ற விருந்தினர்களை நான் வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன்। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में कार्तिक मास की पवित्र अवधि में काशी तमिल संगम का आयोजन किया जा रहा है। इससे दक्षिण का उत्तर से अद्भुत संगम हो रहा है। सहस्त्राब्दियों पुराना संबंध फिर से नवजीवन पा रहा है। பாபா விஸ்வநாத் அவர்களின் திருக்கோயில் அமைந்துள்ள இந்த காசி நகரில் தமிழ் கார்த்திகை மாதம் முழுவதும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கின்ற இந்த காசி தமிழ் சங்கமம் என்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் மதத்திலிருந்து வடக்கு வரை நம்முடைய ஒருமைப்பாட்டை நிரூபிக்கும் வண்ணம் இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और काशी के लोकप्रिय सांसद
माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी काशी तमिल संगम का उद्घाटन करने के लिए स्वयं पधारे हैं। இந்திய திருநாட்டின் பிரதிநிதி பிரதம மந்திரி திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் இந்த தொகுதி நரேந்திர மோடி அவர்கள் காசி தமிழ் சங்கம் என்ற இந்த நிகழ்ச்சியை தொடங்கி வைப்பதற்காக இங்கே வருகை புரிந்துள்ளார்। माननीय प्रधानमंत्री जी का इस अवसर पर आप सभी की ओर से उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। भारत பிரதமர் மாண்புமிகு திரு நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கு இந்த நகரின் மக்கள் அனைவரின் சார்பிலும் உங்கள் சார்பிலும் நான் என் இதயபூர்வமான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்। इस अवसर पर उपस्थित उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल का केंद्रीय मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी और अन्य केंद्रीय पदाधिकारियों के साथ ही पूज्य अभिनव तमिलनाडु से पधारे सभी सम्मानित अतिथियों का भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं। இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொள்வதற்காக வருகை புரிந்துள்ள உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தின் ஆளுநர் அவர்களையும் மத்திய மந்திரிகள் அவர்களையும் தமிழ்நாட்டிலிருந்து வந்திருக்கின்ற முக்கியமான விருந்தினர்களையும் வரவேற்று நான் வணங்கி மகிழ்கிறேன்। यह आयोजन आजादी के अमृत काल में अपने प्रधानमंत्री जी एक श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को जीवंत कर रहा है। இந்த விழா இந்த உற்சவம் சுதந்திரத்தின் அமிர்த காலத்தில் மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்களின் ஒரு தொலைநோக்கு பார்வையின் மூலமாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது। काशी तमिल संगम में तमिलनाडु से छात्र शिक्षक शिल्पकार साहित्यकार सहित अध्यात्म उद्योग जगत विरासत नवाचार व्यवसाय देवालय व्यवस्था ग्रामीण पृष्ठभूमि का संस्कृति जगत से जुड़े 12 समूह काशी का भ्रमण करेंगे और विषय विशेषज्ञों से संवाद भी करेंगे। इसके बाद प्रयागराज व अयोध्या भी जाएंगे। காசி தமிழ் சங்கமம் என்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் மாணவர்கள் ஆசிரியர்கள் சிற்பிகள் கலாகாரர்கள் இலக்கியவாதிகள் இலக்கியத்தை ரசிக்கின்ற நண்பர்கள் புதிய சிந்தனை உடைய மக்கள் விவசாயிகள் ஆலய பணிகளில் தொடர்புடைய நபர்கள் கிராமப்புறத்தை சேர்ந்தவர்கள் கலாச்சாரத்தை பிரதிபலிப்பவர்கள் என 12 குழுக்கள் தமிழகத்திலிருந்து இங்கே வரவிருக்கிறது। காசியை மட்டுமல்ல பிரயாகராஜ் அயோத்தியா நகரங்களுக்கும் இந்த குழுக்கள் செல்ல இருக்கிறார்கள்। इधर वो देखो
नमस्कार। पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के दूसरे दिन के इस भोजन अवकाश के बाद के सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारे मध्य में अनेक अतिथि, अनेक सम्मानित व्यक्ति आ रहे हैं तथा 75 वर्ष के बाद के भारत पर चिंतन मनन करने के लिए, अलग अलग तरह की उपलब्धियों पर बात करने के लिए हमने अलग अलग सत्रों में ये अपना विषय रखा। कल उद्घाटन के बाद से अब तक 3 सत्र हो चुके हैं। इस चौथे सत्र में हम आज, वैसे तो एक हमारे जो अतिथि हैं कुछ हर सत्र की अपने कुछ मर्यादाओं को ध्यान में रखकर, लेकिन हमें भी ऐसा चाहिए था कि भोजन के बाद एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा, वैसे भोजन ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन भोजन के पश्चात एक ऐसा उद्बोधन हो जिसमें हमारे भीतर की ऊर्जा जागृत हो, जिसमें हम आगे बढ़े। इसलिए हमारे बीच में श्री उपेंद्र दत्त जी, जो कि खेती विरासत मिशन के संस्थापक के रूप में पहचाने जाते हैं, वो हमारे मध्य में। तालियों के साथ उनका स्वागत करें सब। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता, खेती विरासत मिशन के संस्थापक तथा एक संपादक कवि के रूप में भी पहचाने जाते हैं। पंजाब में ही जन्म लेने के पश्चात आपने यहाँ पर हिंदी विषय से ही अपना मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की तथा उसके बाद समाज सेवा में आप लग गए। आपके माध्यम से स्वदेशी पत्रिका का भी काफी समय तक संपादन होता रहा तथा परंपरागत खेती कैसे लाभदायक है, उससे अधिक आय कैसे बढ़ाई जा सकती है, इन सब पर आपने अपने जीवन में काफी हद तक कार्य किया। 2005 से आपने खेती विरासत मिशन की स्थापना करने के पश्चात खेती और पर्यावरण के लिए इस बीच में आपने कई पदयात्राएं भी की और आज की एक बहुत बड़ी समस्या पराली की समस्या को लेकर जो है, और आपके माध्यम से जिन किसानों ने सीखा वो पराली को जलाते हुए नहीं बल्कि उसका उपयोग खेती के संदर्भ में करते हुए आपके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। इस प्रकार एक प्रेरणा के स्रोत हमारे मध्य में है। यही नहीं, आपको समय समय पर अनेक पुरस्कार सम्मानों से भी सम्मानित किया जा चुका है। आप प्राकृतिक खेती पुरस्कार, लीडरशिप एक्सीलेंस अवार्ड, पंजाब गौरव पुरस्कार, मानव सेवा पुरस्कार, मोहनलाल भार्गव यंग अचीवर पुरस्कार, पर्यावरण कार्यकर्ता पुरस्कार, सुहावी पुरस्कार आदि अनेक पुरस्कार आपको समय समय पर प्रदान किए जा चुके हैं। ऐसे समाज एवं पर्यावरण को जो अपने आप को समर्पित किए हैं, ऐसे हमारे मध्य में उपेंद्र दत्त जी हैं। उनका स्वागत करते हुए उन्हें अपने उद्बोधन के लिए यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। अच्छा, सबसे कठिन होता है भोजन के बाद बोलना, क्योंकि श्रोता ऊँघ रहे होते हैं, नींद आ रही होती है, तो नींद ना आए उसके लिए जगा के रखना ये भी एक चुनौती होती है। और वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को कहा था
कि भोजन के बाद अक्सर हॉल खाली होते हैं, तो आधा खाली हो गया वैसे, कोई बात नहीं। मित्रों, अच्छा रहता अगर डॉक्टर एस एस जौहल के सामने मैं बोलता, क्योंकि मैं एक दूसरे पैराडाइम की बात करने वाला, एक दूसरा पक्ष रखने वाला हूँ। तो अगर मुझे उनकी बातों का खंडन करना था तो यही था, उचित होता कि मैं उनके सामने बोलता और उसका खंडन करता। वो चर्चा का श्रेष्ठता उसी में है। अब वो जा चुके हैं तो उनकी पीठ के पीछे उनकी कुछ बातों का खंडन करना उचित ना होने पर भी मैं अपनी बात को ढंग से कहूंगा। मैं उस परंपरा का व्यक्ति हूं जो धर्म को मानता है, जिसको लगता है ये जीवन धर्म पर चलने के लिए है, और धर्म पर जब जीवन चलता है तो मैं उस अर्जुन को आदर्श मानता हूं कि द्रोणाचार्य और भीष्माचार्य उसके पूजनीय थे, उनकी चरण वंदना करता था। तो पहला बाण तो उनके चरणों में उसने जमीन पे मारा कि मैं आपको प्रणाम करता हूं, पर क्योंकि आप धर्म के साथ नहीं खड़े तो अगला बाण मैं आपकी छाती में ही मारूंगा। तो मैं उस परंपरा को माना। तो शायद जौहर साहब से आज हम कुछ कर उनकी आयु का ख्याल रखते हैं, पर कुछ हमारे तीखे मतभेद हैं, वो गलत है। हम वैज्ञानिक पर विश्वास नहीं कर सकते, सीधी बात है। कोई वैज्ञानिक हो जाए तो वो विश्वसनीय है, ये कैसे भाई? देखिए उदाहरण के लिए डीटीटी आपने सुना है ना सबने? तो डीटीटी जिन्होंने बनाई थी, जॉन पॉल मुलर, उसको नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है ना? और नोबेल पुरस्कार मिला उसको 1938 के आसपास, और 1962 आते आते डीटीटी पर बैन लगाओ, ये बात उठनी शुरू हो गई। रिचर्ड कार्सन की एक किताब है द साइलेंट स्प्रिंग, अगर आप नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। साइलेंट स्प्रिंग, और मैं कहूंगा, मुझे मालूम नहीं कौन सा डिपार्टमेंट करवाएगा, साइलेंट स्प्रिंग आप लोगों को सबको पढ़नी चाहिए, मानना चाहिए। साइंस से बड़ा फ्रॉड कुछ नहीं है, सॉरी, साइंस भी फ्रॉड है बहुत बड़ी। कौन व्यक्ति किसके, देखिए किसके हाथ में धनुष बाण है? साइंस तो एक वो है, धनुष बाण है, किसके हाथ में है ये निर्भर करता है। तो जिस जॉन पॉल मुलर को नोबेल पुरस्कार देके कहा गया कि डीटीटी का आविष्कार हो गया, अब मलेरिया कंट्रोल, मच्छर मर गया, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्या हुआ? 1962 1962 आते आते बात ये हो गई कि उसके ट्रेसेस आपको ह्यूमन ब्लड में मिलने शुरू हो गए। 71 में अमेरिका ने बैन लगा दिया डीटीटी पर। और डीटीटी कब इस्तेमाल की गई थी? बहुत पहले ना। और कहां की गई थी इस्तेमाल? जहां मच्छर होते हैं या खेती होती है तो कीड़े कंट्रोल करने के लिए। आज डीटीटी कहां पाई जाती है? दुनिया का रिमोटेस्ट एरिया जहां इंसान नहीं रह सकता, अब आजकल रहता है बहुत तरह के तामझाम करके। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल का पोलर बियर और साउथ पोल का पेंगुइन, अगर आज उनके ब्लड में अगर डीटीटी है, आप कैसे कहेंगे कौन सा विज्ञान है भाई? आपने तो कहा था मलेरिया मच्छर कंट्रोल होगा, मलेरिया कंट्रोल हुआ क्या? मलेरिया कंट्रोल नहीं हुआ। महिलाओं को, यहाँ बहनें और बेटियां बैठी हैं, सबसे ज्यादा महिलाओं का जो कैंसर है, महिलाओं को जो 2 तरह के कैंसर ज्यादा होते हैं, वो उसका सबसे बड़ा कारण डीटीटी के मेटाबोलाइट्स हैं। आपने तो कीड़े कंट्रोल करने के लिए डाला था, वो विज्ञान था सर। तो हम कोई वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक पर विश्वास कीजिए, इसलिए विश्वास कर लें कि वो वैज्ञानिक है, बिल्कुल नहीं है, ये नहीं होगा, ये अनुभव से है सिद्ध। एक नहीं, मैं सैकड़ों एग्जाम्पल दूंगा। इसलिए जौहर साहब कहेंगे कि अपने वैज्ञानिकों पर विश्वास करो, वो हो नहीं सकता, क्योंकि वैज्ञानिकों ने बहुत कुछ वो किया है जो बहुत गलत है। दूसरा ये है, देखिए मुझे लगता है कि आपने कहा कि कृषि में सुधार करने हैं, कृषि सुधार का आपने विषय रखा था, रिफॉर्म्स की बात की। रिफॉर्म्स का क्या मतलब है? खाली आर्थिक सुधार है? रिफॉर्म्स का मतलब क्या है? खाली इकोनॉमिक्स और उसकी जो फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट आएगी, या कुछ और भी है? हमारे लिए अगर सुधार होने थे तो वो सुधार होने चाहिए थे सस्टेनेबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशन इन द फूड, और एग्रीकल्चर मींस इट इज अ फूड प्रोडक्शन सिस्टम। खेती कोई ट्रैक्टर और कुछ स्प्रे पंप्स और ट्यूबल्स और खेत खलिहानों में कोई उगी हुई घास और फसल, वो नहीं है। एग्रीकल्चर मींस फूड, एंड फूड मींस न्यूट्रिशन एंड हेल्थ।
सर आपने उससे तोड़ दिया। आप मुझे बताइए, मैं यहाँ पूछना नहीं चाहूंगा, लेकिन बहुत से हमारे बच्चे छोटी उम्र में ऐसे हैं जिनको क्रोनिक फटीग रहती है, उनकी पिंडलियां दुखती हैं। पिंडलियां समझते हैं ना आप, ठीक है ना, घुटने दुखते हैं, पीठ की दर्द होती है। 16 साल की उम्र का बच्चा या बच्ची हो और उसको क्रोनिक फटीग हो, क्यों भाई? क्योंकि आपके फूड में न्यूट्रिशन नहीं है। आपने फूड पैदा किया, फूड ग्रेन से घर भारत के गोदाम भर दिए, पर दैट फूड हैज नो न्यूट्रिशनल वैल्यू। आज पेट भरने के लिए हम खाते हैं। आज मेडिकल स्टोर में सबसे ज्यादा कौन सी दवाइयां बिकती हैं? न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स। एक और चीज है, थोड़ा अभद्र है, उसका रिश्ता भी वही है, दैट इज सेक्स स्टिमुलेटर्स। ये कैसे आ गया? ये कहां, कौन सी खेती दी आपने? तो सर अगर इसलिए अगर मुझसे कोई पूछता कि खेती में एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की बात होनी चाहिए थी, तो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स का मतलब होना था एग्रीकल्चर शुड हैव द रिलेशन विद द फूड एंड हेल्थ। आज खेती का रिश्ता भोजन से नहीं है, और भोजन का रिश्ता स्वास्थ्य और पोषण से नहीं है। उदाहरण है, NIN की एक स्टडी है, नेशनल इंस्टीट्यूट न्यूट्रिशन जो है ना हैदराबाद में, उसकी स्टडी है। यहाँ से 25 साल पहले, जब मैं शायद आपसे भी उम्र के छोटा रहा हूंगा, उस समय एक सेब अगर मैं खाता था और मुझे जितना न्यूट्रिशन मेरी बॉडी में जाता था, आयरन खासतौर पे, अगर उतना आयरन मुझे अपने शरीर में सेब खाकर देना है तो मुझे एक नहीं 18 सेब खाने पड़ेंगे। इसका क्या मतलब है? कि आपके सेब में से न्यूट्रिशन, आयरन चला गया। पंजाब में सबसे ज्यादा जिंक डेफिशिएंसी है लोगों को, यहाँ के लोग जिंक की गोलियां खा रहे हैं। अरे भाई, ये तो वीट ईटर्स का स्टेट है, यहाँ जिंक डेफिशिएंसी कहां से आ गई? क्योंकि आपकी मिट्टी में कुछ नहीं बचा। खेती का मतलब कुछ आंकड़े नहीं है। फूड सिक्योरिटी डजंट मीन्स कि आपने बड़े बड़े गोदाम भर दिए हैं। ये फूड सिक्योरिटी का एक रिडक्शनिस्ट विचार था, वो नहीं हो सकता। और फूड सिक्योरिटी का मतलब खाली जिसको ये कहा जाए कि व्हीट एंड राइस, ये दो इनसे गोदाम भर दिए और बाकी कुछ नहीं है, ये नहीं चल सकता। आज भारत अपने लिए जितनी पल्सेस इंपोर्ट कर रहा है, ऑयल सीड्स, एडिबल ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। रसोई में कभी आप सब जाते होंगे वैसे तो, है ना, पर किसी ने कभी कितने प्रकार की चीजें वहां रखी हैं जिसको फूड वेब कहते हैं। आपकी थाली में जो भोजन बन के आता है उसमें कितना कुछ डलता है, कभी किसी ने गिनती की उस चीज की? मुझे ध्यान है, मैं बहुत छोटा था, जब बहुत ही बचपन में था, तो मैंने अपने माता की रसोई में एक छोटे से रसोई में एक छोटा सा वो थी, स्टोर कह सकते हैं रसोई का, तो उस पर 98 डिब्बियों पर लेबल लगाए थे मैंने, और ज्यादा थे सामान, कुछ थे वो एक बड़े डिब्बे में थोड़ा थोड़ा डाला था, उन पर लेबल ही नहीं लगा था। आजकल क्योंकि वो मसाले पिसे पिसाए आ गए हैं, खड़े मसाले रहे नहीं, तो जो 5-10 मसाले होते हैं वो एक ही छोटी सी डिब्बी में आ जाते हैं, तो आजकल के बच्चों को मालूम भी नहीं होगा, नाम भी नहीं मालूम होंगे। लेकिन 1 चम्मच जलने वाला जीरा या आधी चुटकी जलने वाली दालचीनी क्या हेल्दी है? एक दिन आप घर में खाना बनाइए, हल्दी ना डालिए। ये जो हमारी बेटियां बैठी हैं, इनके घर में जो खाना बनाती हैं, एक दिन हल्दी मत डालना या नमक मत डालना, क्या होगा? शायद कोई माता पिता कुछ कहेंगे, क्या हो गया आज तक, ठीक है ना, बहुत छोटी सी चीज है। तो क्या वो फूड सिक्योरिटी की जो वेब है वाइडर, जो उसका बड़ा जो उसका कैनवस है, क्या उसका हिस्सा नहीं है वो? तो आपने तो मान लिया कि पूरे देश को गेहूं चावल खिला दिया, फूड सिक्योर हो गया, वो तो बेड़ा गर्क हो गया। आज ओबेसिटी, शुगर, ब्लड प्रेशर, यानी कि डायबिटीज, आज चाइल्डहुड डायबिटीज का ये देश बनता जा रहा है, और खासतौर पे पंजाब। भाई ये कैसे हो गया? और एक और बात है, पंजाब में
जिसको आप एनीमिक पॉपुलेशन कहते हैं, वो देखा जाए तो बड़ी बदतर हालत है पंजाब की। पंजाब में न्यूट्रिशन अवेलेबिलिटी, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के एंगल से पंजाब बहुत पीछे है। उल्टा है, जिन प्रदेशों में इरिगेशन नहीं पहुंची, जो रेनफेड एरिया है, वहां न्यूट्रिशन सिक्योरिटी का ग्राफ पंजाब से अच्छा है। पंजाब में 97% लैंड इज अंडर इरिगेशन, और पंजाब उनसे पीछे है। क्यों भाई? ये कंट्राडिक्शन कहां से है? तो दोस्तों, भाई और बहनों, खेती में सुधार चाहिए, पर यह पक्ष भी तो सोचना चाहिए। ठीक है, बाकी सब चीजें सरकारों ने किया। एक बात तो समझ लीजिए, सरकारें वरकारें कभी किसी काम की होती नहीं, ठीक है ना। ये सरकारी यूनिवर्सिटी है, फिर भी मैं कहूंगा सरकारें वाले किसी काम की होती नहीं है। कारण ये है, ये सरकारों का जो वर्तमान सिस्टम है, ये वर्तमान सिस्टम तो पिछले 100 साल में विकसित हुआ, जिसमें समाज की भूमिका नगण्य है। समाज कहीं है ही नहीं, पूरी उसकी कोई भूमिका नहीं समाज की। सब कुछ जो सत्ता में आ गए और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या टेक्नोक्रेट्स हैं, वो सब उन्हीं के दिमाग से चलेगा। बस उनको जो समझ में आ जाए वो ठीक है, फिर वो जेनेटिकली मॉडिफाइड चीज भी खिलाएंगे। और ये जो जौहर साहब कह के गए जीएम फूड, हम तो चाहेंगे, हम तो ओपन डिबेट करना चाहेंगे। वी आर ओपन रेडी कि जीएम फूड इज अ पॉइजन फॉर द ह्यूमैनिटी, इज गोइंग टू बी पॉइजन फॉर द होल ह्यूमन रेस। उस पर हम बात कर सकते हैं। और दुनिया में आगे ना 31 देश, 31 कंट्रीज थे जिनमें जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड अलाउड था। 4 ने टोटल बैन लगा दिए, वो 27 रह गए हैं। और बाकी में भी जो फूड है वो नहीं कर रहे, वो क्या कर रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड मेज, मक्का, उससे इथेनॉल बनाने के लिए वो कर रहे हैं। कुछ और चीजें फूड में कम होता जा रहा है और भयंकर विरोध उसका। मैं अगर आपको आज उसकी प्रेजेंटेशन नहीं है, हम कभी दिखाएंगे तो आप बाद में कहेंगे नहीं जीएम फूड नहीं खाना। और एक बात और है, ये वैज्ञानिकों के नाम पे अगर मैं जीएम मस्टर्ड की बात कर दूं एक, क्योंकि वो ताजी बात है, जीएम मस्टर्ड में ना ये ख्याल रखिए, सरसों में उसकी यील्ड बढ़ाने की बात कही जा रही है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन का एक सबसे बड़ा जो नुकसान है वो टॉक्सिसिटी, हम बाद में करेंगे, जेनेटिक मैनिपुलेशन की बात बाद में करेंगे। पहली है प्राइवेटाइजेशन ऑफ जीन पूल ऑफ सीड्स। वो सीड जो है अब पेटेंट हो जाएंगे। वो जो सीड्स हैं वो किसी एक कंपनी या किसी व्यक्ति की मलकियत में चले जाएंगे। एक उदाहरण दूंगा, कोई स्टूडेंट है मालवा पट्टी पंजाब के कॉटन बेल्ट से यहाँ बैठा हुआ, कहां से आप? कपास होती। आप बेटा कहां से हैं? देखिए सुनिए, कपास बीटी कॉटन आने से पहले कपास के बीज का रेट था लगभग 100 रुपया किलो, 125 रुपया किलो। और उसमें एक टेक्नोलॉजी फीस, उसका अलग अलग नाम है, ये बड़ा वो एक नाम रखते, वो घुमा देते थे जरा उलझाने के लिए उसमें। पर रॉयल्टी के लिए टेक्नोलॉजी फीस कहिए, उससे मोन्सेंटो ने हर साल लगभग 10,000 करोड़ रुपया कमाया। और वो जो बीज आपके पास फ्री में उपलब्ध था, आप अपना बीज मल्टीप्लाई कर सकते थे। कहा गया कि कीड़ा नहीं लगेगा, ये कहा गया था, हुआ क्या? मैं तो जो कह रहा हूं पर मैं आंकड़े किसके कोट कर रहा हूं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट है या सेंटर है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट कॉटन रिसर्च नागपुर। ये CICR की स्टडी है कि बीटी कॉटन लाने का कोई फायदा नहीं हुआ। आपने कहा था कि बीटी कॉटन आया है, और मैंने खुद सुना है पंजाब में बोलते थे वैज्ञानिक और ये सब तमाम कंपनी के लोग कि अगर बीटी कॉटन आ गया, किसान की पीठ पे जो स्प्रे की ढोलकी लदी हुई है ना, वो उतर जाएगी। उतरी क्या? नहीं उतरी। उल्टा वो जितने पेस्टिसाइड स्प्रे होते थे बीटी कॉटन की इंट्रोडक्शन से पहले, उतने पेस्टिसाइड वापस आ गए। नंबर 1 वो तो वापस आ गए। 2-3 चीजें और हो गई। जो कॉटन आपकी रेनफेड क्रॉप थी, बहुत कम पानी पे होती थी, आपने इसको वाटर गजरिंग क्रॉप में कन्वर्ट कर दिया। ये दूसरी बात हुई। तीसरा, अब आपकी जो कॉटन जो है वो हाइब्रिड है, तो बीज नहीं बच सकता। अब बीज बचा भी लोगे तो अगले बढ़िया F2 बनेगा नहीं ढंग का वो।
और आपको बीज हर साल खरीदना पड़ेगा, आपकी डिपेंडेबिलिटी बन गई मार्केट के ऊपर, घर के बीज खत्म हो गए। और तीसरी चीज यूरिया, आप उसको केमिकल फर्टिलाइजर, क्योंकि वो केमिकल रिस्पॉन्सिव क्रॉप है, हाइब्रिड है, उसको केमिकल चाहिए। तो कुल जमा जो आखिरी में कैलकुलेशन किया तो ध्यान में आता है वो घाटे का सौदा बना। तो हम कैसे विज्ञानियों पर, वो जॉल साहब कह गए कि विज्ञानियों पर भरोसा करो, हम तो नहीं कर सकते, ये हमारे साथ हुआ और ये आसपास हुआ। सो मेरा ये कहना है कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स अगर होने थे देश में तो वो इकोनॉमिक एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स एंड इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो बात अलग थी। पर मुझे लगता था हमारी खेती का रिश्ता जिंदगी से जोड़ना चाहिए था, वो नहीं जोड़ा, वहां बात नहीं हुई। ये बात तो सवाल खड़े करने वाली थी ना कि भाई इस देश में पिछले 15 वर्षों में मोटा मोटी 4 लाख किसान अगर आत्महत्या करते हैं, दैट मीन्स देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद एग्रीकल्चर मॉडल। कहीं कुछ बड़ा घपला है। क्यों 4 लाख किसानों ने आत्महत्या की? किसको शौक होता है आत्महत्या करने का? ऐसा होता है कि मेरी हॉबी आत्महत्या करने की? ऐसा तो नहीं होता, मजबूरी है। लोग कहते हैं किसान फिजूल खर्चा है, किसान ने किया, लेकिन स्टडीज बताती हैं कि हमारी खेती में हमने जो ये सिस्टम खड़ा किया कि किसान उगा रहा है कैश क्रॉप, वो मंडी में गिरा के आ रहा है, और उसके बाद क्या है, उसको घर के भोजन के लिए वो बाजार से चीजें ला रहा है, या हमने उसको अब दे दिया कि तुम जो है ये राशन की दुकान से लो, अब तुमको जो है ये मनरेगा में से मिलेगा, उसमें गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी की जो स्कीम्स हैं वहां से तुमको अनाज मिलेगा। अनाज उगाता था, एक बार। दूसरा, हमारी बायोडाइवर्सिटी खत्म हुई ना खेतों में, उसकी चिंता किसने करनी थी? आज हम जाएं तो बायोडाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो थी, उसकी बात नहीं किसी ने नहीं की। फिर जैसे बीज है, मैं अगर बीजों की बात करूं तो हमारे हाथ से बीज चले गए। आज हमारे प्रयास, मुझे मालूम नहीं आप में से किसी ने कभी बैंगन का बीज का पैकेट खरीदा मार्केट में जाके? तो जरा किसी कंपनी के बैंगन का बीज, टमाटर का, भिंडी का बीज जाके खरीदिए, तो कितने रुपए किलो हो सकता है? अंदाज होगा किसी को? हाँ जी, अनुमान लगाओ, बोलो। 10,000 रुपए किलो। और ऊपर बढ़ो, 1,80,000, 2 लाख रुपए किलो, ये रेट है। और आपके हाथ से बीज तो चले गए हैं। तो आपने इस प्रकार का खेती का विज्ञान लेके आए जिसने कहा यील्ड बढ़ेगी। वो यील्ड कितनी बढ़ी ये विवाद का विषय है। बीज हाथ से चले गए ये पक्का है। और दूसरा, उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसके बारे में भी बहुत सवाल खड़े हो गए। आज हमारे पास बहुत लोग आते हैं, हम तो देसी खेती की बात करते हैं, लोग कहते हैं भैया देसी बीज मिलेगा जी, देसी बीज चाहिए, खुद खाना है। तो लोग हमसे देसी बीज मांगते हैं, और जिसको हम एक बार बीज दे देते हैं, अगर वो थोड़ा सा विज्ञान और उसकी कला ये दोनों समझ ले तो दोबारा बीज खरीदने की उसको आवश्यकता नहीं है। हर साल वो अपने बीज खुद बना सकता है, और हम वो सिखाते हैं। यही हमारी खेती थी। भारत जब सोने की चिड़िया कहलाता था तो क्या यहाँ कबूतर और कौवे सोने के थे क्या? नहीं। तो कैसे थे भारत? सोने की चिड़िया कैसे था भारत? भारत क्या एक्सपोर्ट करता था? मसाले। इसके अलावा एक और चीज थी बहुत बड़ी, कपड़े। कॉटन, रॉ कॉटन नहीं थे, कपड़े थे। तो भारत का बना कपड़ा दुनिया भर में विख्यात था। अरे भाई, बाद में तो हमारे कपड़ों को तो बर्बाद किया गया ना, हमारी पूरी कला को। तो भारत ने, मतलब कपड़ा आया, कपास आया, इट इज एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो भारत सोने की चिड़िया तो उसी से बना था। वो हम जिससे बना था वो कैसे घाटे का सौदा बन गया, ये सवाल आता है। सो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की अगर फ्यूचर की बात करनी है तो मुझे लगता है इसकी बात होनी चाहिए। दूसरा वो ये कि
दुनिया में एक ही तरह के वैज्ञानिकों की बात आज देश में भी दुनिया में वही हो रही है। मैं एक नाम बोलूंगा, अगर आप लोग नेट पे भी सर्च करेंगे तो अच्छा रहेगा। डॉक्टर R.H. रिचारिया, ये इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक के डायरेक्टर थे और इन्होंने इंडियन जर्म प्लाज्म, ट्रेडिशनल जर्म प्लाज्म ऑन पैडी वो इकट्ठा किया था, डॉक्यूमेंट किया था। अच्छा, आपको अंदाजा है भारत में कितनी वैरायटीज रही होंगी इसकी पैडी की, धान की? तो अंदाज लगाएगा? हाँ जी, हाँ 400। और बोलिए भाई। हाँ जी, कोई जुर्माना नहीं लगने वाला, कोई बात नहीं, आप बोलो जरा। 5000 और 1 लाख से ऊपर वैरायटीज इस देश में। जो इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का जर्म प्लाज्म जीन बैंक था, उसी में लगभग 35,000 तरह का जीन है हमारे पास। तो इस देश में चावल हर क्षेत्र का, हर गांव का, भाई 6 लाख गांव हैं और 1 लाख से ज्यादा आपके पास वैरायटीज हैं। इसका क्या मतलब है? हर गांव की अपनी वैरायटी थी लगभग। तो भारत में वो इलाका भी है जहां पानी बरसता है पर पहाड़ी इलाका है, वहां के लोग भी चावल खाते हैं, तो वहां की वैरायटी अलग थी। वो भी इलाका है जहां वर्ष में 3 महीने 4 महीने बाढ़ रहेगी, वो भी चावल खाते हैं, वहां अलग थी। पर वो भी है कि जो समुद्र के किनारे है जहां खारा पानी भी बीच में आएगा, वो भी इलाका है। पर वो भी इलाका है जहां बहुत कम पानी होता है। तो अलग अलग प्रकार की वैरायटीज थी। ये जानना चाहिए। मुझे मालूम नहीं आप में से कितने लोगों को ये रुचि है। अच्छा, ये सबसे आखिर की लाइन के जो बच्चे बैठे हैं ना, वो आपस में बात करना बंद करो। बिल्कुल आखिरी लाइन। ऐसा है, सुनो, मैं ना किसानों के बीच काम करता हूं, मैं एकेडमिक आदमी नहीं हूं, तो मैं तो सीधा कहूंगा उस वहां से खड़ो के आ गया हूं। तो ये ख्याल रखिए जरा। मैं ऐसा, हाँ नहीं, मैं ऐसे बात कर सकता हूं क्योंकि मैं तो रोज किसानों के बीच वो भाषण देता हूं ना, तो मुझे मालूम है। ये ख्याल रखिए, बात नहीं करनी आपस में। और ये जो पूरा विषय है, तो मुझे लगता है खेती के सुधार की बात आनी चाहिए थी। आज मैं जो आप पूछूंगा, खेती से आपका लोगों का क्या रिश्ता है? इमीडिएट अगर रिश्ता पूछूं, क्या रिश्ता किसी का? हैं जी, बोलिए बोलिए। खेती से माँ और बच्चे का रिश्ता है, ठीक है। सबसे बड़ी बात है, खेती हमारा पोषण करती है, वही है। और आज की खेती वो हमारा कितना पोषण कर पा रही है, ये सवाल कहीं ना कहीं खड़ा करना चाहिए। ये भी करना चाहिए कि खेती में आपने कैसा फूड प्रोडक्शन सिस्टम दिया पिछले लगभग मोटा मोटी 50-55 वर्षों में, कि आज पंजाबियों के खून में अगर 26 तरह के, क्योंकि स्टडी पंजाब की है, बाहर भी हुई होगी, 26 तरह के अगर कीटनाशक ब्लड में है, अगर हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट पैथोलॉजी, अगर उसकी स्टडी बताती है कि जिसको हम गर्भनाल बोलते हैं, प्लेसेंटा, उसमें अगर पेस्टिसाइड है, ब्रेस्ट मिल्क सैंपल्स में अगर पेस्टिसाइड है, मां अपने बच्चे को दूध पिलाती है कि बच्चे के जन्म के बाद कि वो बच्चे के लिए अमृत है, अगर उसमें डीटीटी है, एससीएच है, बीएचसी है, इंडोसल्फान है, मैं नाम ले सकता हूं कईयों, उसका क्या मतलब है? अगर गर्भनाल में, प्लेसेंटा में पेस्टिसाइड है, तो आप कौन दोषी है? कैसा फूड प्रोडक्शन सिस्टम दिया आपने कि भोजन ही जहरीला है। और विचित्र ये हो गया कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करे, देखिए जो तो मिलाए जहर, उसको किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जो बेचारा जहर ना मिलाए, वो उस बेचारे को 10 तरह के सर्टिफिकेट जुटाने पड़ते हैं। ये विचित्र स्थिति आई है। इसलिए मैं जौहर साहब की उस बात से भी सहमत नहीं हूं। वो सर्टिफिकेशन की बात करके गए, मुझे लगता है कि उसको उनको उस विषय में पूरा एक मोटा मोटी जानकारी है, अच्छे बुजुर्ग आदमी है। पर मैं क्योंकि जमीन पर विचरता हूं और संयोग से खेती विरासत मिशन
भारत की उन गिनी हुई 55 एनजीओ में से है जिनको रीजनल काउंसिल का दर्जा हासिल है फॉर द प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग एज द रीजनल काउंसिल फॉर अंडर पीजीएस सिस्टम, पार्टिसिपेटरी गंट्री सिस्टम। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाएंगे, पीजीएस पोर्टल, उसमें खेती विरासत मिशन का नाम है। तो वो हम करते हैं एक ये विषय। तो मुझे लगता है कृषि में सुधार चाहिए थे। तो कृषि के सुधार के मेरे हिसाब से 4 आयाम थे। पहली बात, ये कृषि प्रकृति से जुड़नी चाहिए थी, जहर मुक्त होनी चाहिए थी, एक। नंबर 2, कृषि में सुधार की आवश्यकता है और उस कृषि में जो है वो पर्यावरण से कैसे सुसंगत, वहनीता, सस्टेनेबिलिटी कैसे आए, कम पानी कैसे चले। आपको अंदाज है, आप जिस बठिंडा में बैठे हैं, आज तो यहाँ धान होता है, एक समय ये धान का इलाका नहीं था, ये चने और बाजरे का इलाका था, मिलेट्स का इलाका था। तो आपने इरिगेशन ले आए, इरिगेशन लेके आपने वो रेत के टीले गायब कर दिए, हम पंजाबी में टिब्बा कहते हैं, वो गायब कर दिए, धान लगा दिया, अब धान हो गया। और क्योंकि वो यहाँ का है नहीं, तो बाद में पराली जलाने का सबसे बड़ा एक संकट खड़ा हो गया। आज एनजीटी से लेके सुप्रीम कोर्ट से लेके सब वो लक्ष्य लिए घूम रहे हैं कि पराली जलाना बंद करो, और पराली जलाना बंद नहीं होता। सरकार जो, क्योंकि खेती का मॉडल गलत है, आपने किसान का मनोविज्ञान गलत ढंग दिशा में आप लेके गए। सो अगर ये सुधार अगर चाहिए था, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स चाहिए थे, तो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में सस्टेनेबिलिटी वो बात आनी चाहिए थी। फिर अगर खेती सुधारों की बात होनी थी, तो मैं कहता हूं, फर्ज कीजिए आप किसी गाड़ी में बैठे हैं, यहां से बठिंडा जाना है, और 2-4-5 किलोमीटर जाने के बाद आपने देखा सड़क पे जिस जा रहे हो उस पे जो माइलस्टोन लगा है उस पे बठिंडा नहीं लिखा, उस पे लिखा गंगानगर 25 किलोमीटर। तो आप कहेंगे रुको 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 भाई, तो कहीं गलत सड़क आ गई यार, रुको बीच में, कहाँ जा रहे हो। जब आपको 1967-68 में अपने ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया, 80s आते आते उसके एडवर्स इंपैक्ट के संकेत मिलने शुरू हो गए थे, तो आप भी ब्रेक लगाते हैं ना, थोड़ा सा गाड़ी को रोक लो। आपने कहा नहीं नहीं नहीं, ये गंगानगर लिखा, और तेज से चलो, हम बिल्डा ही पहुंचेंगे। तो फिर कहीं और जाके पहुंच गए आप। आज आप कहते हैं कि देश में 4 लाख किसान मर गया है, खेती के सुधार की आवश्यकता है, और वो जो अंधी गली थी, अंधी गली समझते हैं ना, आगे कोई रास्ता नहीं है, अंधी गली में किसान को सबने मिलके चढ़ जा बेटा सूली पे, राम करेगा भली, उसको धक्का लगा के अंदर फंसा दिया। अब जो फंस गया, डेड एंड आ गया, अब किसान कहता है बाहर निकालो। अब हम कहते हैं, सरकारें कहती हैं नहीं तुम खुद बाहर आ जाओ। तो भैया आपने तो पूरा एक सिस्टम खड़ा किया था ना, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पूरा ये मंडियों का जाल, सड़कों का जाल, प्रोक्योरमेंट एजेंसीज, एक्सटेंशन सर्विसेज, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, रीजनल सेंटर्स, कृषि विज्ञान केंद्र, आत्मा, सॉइल डिपार्टमेंट, कितने प्रकार की संरचनाएं खड़ी की थी। हजारों हजारों लोगों को आपने ग्रीन रेवोल्यूशन के मॉडल को जिंदा रखने के लिए एम्प्लॉय किया था। अब जो मॉडल कोलैप्स हो रहा है, किसान फांसी चढ़ रहा है, तो आप कहते हो अरे अपना बाहर आ जाओ भाई, ये कैसे होगा, ये नहीं चलेगा। आप आज अगर किसानों की 4 लाख किसानों ने आत्महत्या, तो वो हत्याएं हैं, आत्महत्या नहीं है। उन हत्याओं के दोषी वो वैज्ञानिक हैं। अब मैं जिम्मेदारी से कहने जा रहा हूं, हम वैज्ञानिकों को माफ नहीं कर सकते, नहीं विश्वास कर सकते। उनको मालूम था रास्ता गलत है, गलत रास्ते पे ब्रेक नहीं लगाई। ये 4 लाख हत्याओं के अपराधी वो कृषि वैज्ञानिक हैं, वो अर्थशास्त्री हैं, जिनको दिख रहा था गलत दिशा में जा रहे हैं, ब्रेक नहीं लगाई। अब फिर कहते हैं कि अब वैज्ञानिक पर विश्वास करो। कैसे कर रहे हैं, हमारी आंखों के सामने हुआ भाई। मुझे ये थोड़ा वो क्या यूनिवर्सिटी के आयोजन करताओं से थोड़ा ये मेरा गिला है, काश ये बातें मुझे उनके सामने बोलने को मौका मिलता तो डिबेट अच्छी रहती, क्योंकि ये अभद्रता है, पर ये जरूरी था, ऐसा नहीं। मैं चाहता हूँ रिकॉर्ड करके उनको भेज दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी जो बात है वो ये कि अच्छा, आप में से ये जो भोजन है ना, खाना हम जो खाते हैं, हमारे यहाँ भोजन की एक कल्पना है। तो भोजन क्या होता है, फूड का क्या मतलब होता है, जो पेट भरे या कुछ और भी है।
आप में से कोई एक नहीं, कोई खड़ा होके जरा थोड़ा एक लाइन में 2 लाइन में बोल देगा, अच्छा लगेगा थोड़ा मुझे डायलॉग करने में। कोई भी बोले, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। बहुत बढ़िया, बहुत हद तक ठीक है। तो हमारे यहाँ भोजन का मतलब होता है, भोजन देता है ओज, तेज, बल, बुद्धि, वीर्य, शक्ति, वाक, सिद्धि। भोजन इतना कुछ देता है हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ तो भोजन के बारे में बहुत बड़ी कल्पना है, इसीलिए अन्नपूर्णा देवी की कल्पना इस देश में, इस देश में अन्नपूर्णा देवी की कल्पना है। ये वो देश है कि भोजन इतना कुछ देता है। तो क्या ये भोजन वो दे रहा है आज? आज हम ज्यादा बीमार इसलिए हैं क्योंकि भोजन हमारा बीमार है, हमारा भोजन बीमार है, इसलिए बीमार है। मैं जब कभी मैं 10th के आसपास पढ़ता था तो सुनते थे कभी, मतलब उस उम्र के आसपास, कि पंजाब में एक ही कैंसर हॉस्पिटल था, कभी कभी उसका नाम सुनने को मिलता था, वो था मोहनदेई ओसवाल कैंसर हॉस्पिटल लुधियाना, या पीजीआई में एक ऑन्कोलॉजी कैंसर वार्ड था। अच्छा, आज कितने कैंसर अस्पताल हैं? तो आज बठिंडा में 10 हैं, मोहाली में 10 हैं, संगरूर है, होशियारपुर है, फरीदकोट है, जलंधर है, लुधियाना है। आपने भर दिया सारा पंजाब। हमारे मुख्यमंत्री पिछले 15 साल में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को मिलते थे तो क्या मांगते थे? बहुत कुछ मांगते होंगे और भी। एक चीज हर मुख्यमंत्री कहता था, एक कैंसर अस्पताल और दे दो। तो ये आप मतलब कहां चले गए आप समझो। और अगर वो कैंसर ट्रेन, अच्छा वो कैंसर ट्रेन नाम मैंने ही दिया था वैसे, 2004 की बात है वो, अगर वो एक गाड़ी का नाम कैंसर ट्रेन पड़ा और इतने कैंसर के अस्पताल होने के बावजूद वो नहीं मामला समझ में आ रहा, दैट मीन्स कहीं हमने एक बड़ी गलती कर दी है। ये जो पेस्टिसाइड्स हैं, ये जो केमिकल्स हैं, ये कि एक बड़ी गलती कहीं हमसे हो गई है, उनके सामने खिलवाड़ किया, एक विषय। दूसरा एक और बात है, ये कैंसर की तो है ही है, ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, ये सबसे बड़ा क्राइसिस आज इशूलेस कपल्स, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शंस, यानी कि पति पत्नी संतान चाहते हैं पर संतान होती नहीं है, गर्भपात होता है। हमारे पास हमने जो स्टडीज की जब फील्ड में घूम घूम के, तो हमारे पास ऐसे गायनाकोलॉजिस्टों की बहुत स्टेटमेंट डाटा है। अगर मैं आपको नटशल में कहूं, वो ये, फर्स्ट प्रेगनेंसी यानी कि 90% ऑफ फर्स्ट प्रेगनेंसी आफ्टर मैरिज इज गेटिंग स्पॉन्टेनियसली अबॉर्टेड ड्यू टू टॉक्सिसिटी। 90% विवाह के पश्चात, 90% पहली जो गर्भधारण होता है एक बेटी का, वो इसीलिए गर्भपात हो रहा है क्योंकि उसके ब्लड में या उसके पति के ब्लड में टॉक्सिसिटी लेवल ज्यादा है। ये आपने कैसी रचना की, कहां का विकास लेके आए आप? ये सवाल वैज्ञानिकों से करना बनता है। कृषि एफसीआई के गोदाम भरने के लिए नहीं है, कृषि कुछ आंकड़ों और जुमलों के लिए नहीं है। कृषि भोजन है और भोजन का मतलब जीवन है। आपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर दिया। मेरा ये निवेदन है वो ये कि अपने को शायद अंधेरा है, तो आप जैसे जो मेरे छोटे भाई बहन, बेटा बेटी भी कह सकता हूं, इतनी उम्र है मेरी, अब आप लोगों के पास है कि आप लोगों को किस दिशा में आगे बढ़ना है। आप में से यूनिवर्सिटियां आजकल अक्सर क्या करती हैं, विज्ञापन निकालती हैं बड़ी बड़ी, आजकल प्राइवेट यूनिवर्सिटियों ने ज़्यादा वो किया हुआ है, बड़े बड़े फुल पेज एडवर्टाइजमेंट आते हैं 2-2 3-3 पेज के, कि हमारे फलाने स्टूडेंट को इतने करोड़ का पैकेज मिला, इतने करोड़ का पैकेज मिला। ये करोड़ों का पैकेज बांटने वाले जिंदगी नहीं बांटते, ये ख्याल रखना। इस देश में जिंदगी बांटने का काम नानक ने किया था। तो नानक ने पैसा कमाया था क्या? नानक ने तो सच्चा सौदा किया था ना। सच्चे सौदे की कहानी मालूम है नानक की? बतानी चाहिए आपके टीचरों को।
कि पिता ने नानक को कहा ये पकड़ पैसे 20 रुपए, पुराने जमाने की बात है ना, ये 1520 के आसपास की बात है। तो नानक को कहा जा, ये जाके वो करके आ, व्यापार करके आ। तो नानक गए, उनको रास्ते में साधु दिखे भूखे, उन्होंने उस पैसे का लंगर लगाया और सब खाना खिला दिया, वापिस आ गए। तो पिता ने पूछा अच्छा भाई बिजनेस किया, क्या इन्वेस्टमेंट किया, क्या पूछा, उस भाषा में पूछा होगा उस काल की, तो क्या सौदा किया। तो नानक ने कहा मैंने सच्चा सौदा किया है, भूखों को भोजन खिला के आया हूं। संस्कृतियां ऐसे बनती हैं, संस्कृतियां कबीर बनाते हैं, शंकराचार्य बनाते हैं, बिल गेट्स संस्कृतियां नहीं बनाते, अंबानी संस्कृतियां नहीं बनाते। ख्याल रखिएगा, आपके आदर्श गलत कर दिए गए हैं। आप में से बहुतों के कमरों में हो सकता है, आपको तो नहीं होगा, विवेकानंद की फोटो। अच्छा कोई है किनके कमरों में विवेकानंद की फोटो है? जरा कितने पास है? 2 ही हाथ खड़े हो, 3। भगत सिंह की फोटो कितनों के पास लगी हुई? 5। तो मुझे लगता है सवाल इससे ज्यादा बड़ा है। ये एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स वो जिनको करना वो करेंगे, आप लोग पहले अपने में रिफॉर्म लेके आओ। मैं थोड़ी कड़ी बात कहने वाला हूं बच्चों, क्षमा करना, क्योंकि मैं इस देश को प्यार करता हूं और मुझे लगता है ये मेरा अगर देश है, आपका भी यही देश है ना। तो अगर ये देश है तो इसके सामने की जो चुनौतियां हैं उनका जवाब कौन देगा? उनका जवाब देने की बात है। तो कहीं हमको अपने आदर्श ठीक करने की आवश्यकता है। आज हमें हमारे गलत तरह के नायक, आज हमें फिल्मों वाले नायक, हमको हमारे लिए वही नायक है, हम उन्हीं के स्टाइल को फॉलो करते हैं। हमारे नायक शायद, अच्छा आप में से मदनलाल ढींगड़ा का नाम कितनों ने सुना? हाथ खड़ा करो। मदनलाल ढींगड़ा, 4 हाथ खड़े हुए, और मतलब 2 तो बड़ी उम्र के लोग हैं, उनको तो कहूंगा नहीं। वो पीछे, आप पढ़ते हैं कौन सी क्लास में बेटा? हाँ बोलिए बोलिए, आप ही को कह रहा हूं बेटा। हाँ खड़ो, है पीएचडी कर रहे हैं, आपकी उम्र भी थोड़ी। आप बेटा कहां से हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? एमबीए। मदनलाल ढींगड़ा मतलब 19 साल की उम्र में जो नौजवान 1909 में जिसको फांसी लगी, करजन वैली का वध किया उसने, आज हमारे लिए। और उसने क्या कहा? उसको जब पूछा गया तुमने क्यों गोली मारी, उसने कहा मेरे लिए मेरा देश ही राम और कृष्ण है, मेरा देश ही मेरा भगवान है, और मैं अपने देश का अपमान नहीं सह सकता, और उसके लिए अगर अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो मैं देने को तैयार हूं। ये मतलब ढींगड़ा की बात है। दिक्कत यह है बच्चों कि हम जो हमारी यूनिवर्सिटियां हैं, वो यूनिवर्सिटियां कागज का टुकड़ा बांट रही हैं जिसको आप डिग्री कहते हो, और वो डिग्री निकलते ही बाहर आप बेरोजगार हो। इसीलिए कैंपस प्लेसमेंट आ रही है। आप थोड़ा अपने आप को पहचानो। मैं उल्टी धारा वाला आदमी हूं, हो सकता है अगली बार प्रोफेसर मुझे ना बुलाएं बोलने के लिए, पर मुझे लगता है बेटा डिग्री लेने के बाद आप बेरोजगार ना रहो, और डिग्री की कोई आवश्यकता ना हो। ये जो रश्मिंदर खड़ा हो रहा है, इधर आओ, ये बंदा एमटेक एग्रीकल्चर है पीएयू से, याद है ना? क्या शर्मा रहे हो? ये किसी नौकरी वोकरी में नहीं गया, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है और ऑर्गेनिक फार्मर्स के बीच काम करता है। इसके क्लासमेट्स जो हैं जिनके एमटेक किया, उनको तनख्वाह मिलती है लगभग 1,20,000 रुपया, और इसको अगर ऑनरेरियम मिलता है तो वो उनसे 4 गुना कम, और वो भी रेगुलर नहीं, इरेगुलर। होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। शादीशुदा है, अकेला होता तो शायद वो भी ना लेता, तो बीवी भी है, बच्चे भी हैं। डिग्री से कुछ नहीं होता, ये ख्याल रखिएगा। तो ये जो कृषि में हम बहुत बौद्धिक वो करते हैं ना एक्टिविटीज के एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, वो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, बैठी हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूं आपको अपने नायक दोबारा से ढूंढने पड़ेंगे।
कहीं नायक दोबारा ढूंढने की आवश्यकता है। हमने कहीं गलत दिशा में चले गए हैं। सो मेरा ये कहना है, भविष्य आपके हाथ में है। आप में से कितने लोग हैं जिनको लगता है कि हमको लंबा जीवन नहीं चाहिए, जल्दी मर मुर जाएं, तो हो सकता है कोई तय करे। और जिनको लगता है लंबा जीवन जीना है और रोग मुक्त जीना है, ऐसा है लंबा जीवन। आप वो क्या होता है, कोई आदमी कोमा में होता है, उसको ऑक्सीजन भी लग रही होती है और वो क्या मशीनें लगी होती हैं, कई तरह के मीटर टूं 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 कर रहे होते हैं ना, तो वो भी जिंदगी है, बेड पे पड़े। स्वस्थ जीवन है, निरोग जीवन है। और ख्याल रखिए, स्वास्थ्य अस्पतालों में नहीं है। स्वास्थ्य कहां है? आपकी रसोई में। स्वास्थ्य आपकी रसोई में है। तो जो आप मेरे छोटे भाई बहन हो, जिनको लगता है कि हमें अपना स्वास्थ्य अपनी रसोई में ढूंढना है, हमें लंबी जिंदगी जीनी है, बिना बीमारियों की जीनी है, और इस देश में भी पूरे दुनिया में आया वैसे में तो पर्यावरण का संकट, ये जो हमारे भोजन में जहर घुल गया है। एक बात कहूं, थोड़ी हो सकती है चुभने वाली हो, बेटा आज आप लोग नहीं चिंता करोगे ना अपनी, तो आपकी जो अगली जनरेशन आने वाली है वो आपसे भी ज्यादा बड़े संकट में जाएगी। आप में से कुछ लोगों के शायद परिचय हो, कोई गायनाकोलॉजिस्ट या जो पीडियाट्रिक सर्जन होता है या पीडियाट्रिशियन, किसी के हॉस्पिटल में जाके बैठना। अगर कोई पीडियाट्रिक सर्जन जानता है ना, जरूर जाओ। अगर वो कोई आपका रिश्तेदार अंकल आंटी है, उनको कहो मुझे आप पीडियाट्रिक सर्जरी के जो डाटा है थोड़ा सा शेयर कीजिए, आप दहल जाओगे। इस समय जो बच्चे हमारे पैदा हो रहे हैं वो 7 माहे 8 माहे पैदा हो रहे हैं। फोकोमिलिया बच्चों की बाढ़ आई हुई है। ये बहुत बड़ा एक सभ्यता मूलक संकट खड़ा है। सो बात खाली कृषि में सुधारों की नहीं है, बात कृषि को भोजन से जोड़नी और भोजन को स्वास्थ्य पोषण और जिंदगी से जोड़ने की है। कृषि समृद्धि का आधार बने और वो किसान जो आत्महत्या कर रहा है वो आत्महत्या ना करे, उस विषय से जोड़ना पड़ेगा। आप में से अगर कुछ लोगों को लगता है कि मैं अपने जीवन में जहर मुक्त भोजन उगाना, जहर मुक्त भोजन खाना, इसमें मैं लगना चाहूंगा, करना चाहूंगा, तो वो बड़ी बात होगी। और चलते चलते 2023 अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष, इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट्स घोषित हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी के ही प्रपोजल से यूएन ने उसको अडॉप्ट किया। आपकी यूनिवर्सिटी में भी मिलेट्स की बात होने वाली है। अगर मैं ये पूछूं, आप में से बाजरे की खिचड़ी कितने लोगों ने खाई है? बहुत लोग हैं भाई, अच्छा चलो। रागी भी खाई है, रागी वाले भी। अच्छा, कोदरा? 3 लोग हैं। आपसे दोनों, आप तीनों से मिलना पड़ेगा बाद में, ठीक है ना? किसी ने कंगनी भी खाई है क्या? कंगनी वाले भी, ठीक है। तो हम मिलेट्स की बात करेंगे, पोषण की बात करेंगे, आपकी जिंदगी की बात करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जीवन में 2 पक्ष होते हैं, परंपरा और आधुनिकता, और दोनों का संतुलन, दोनों का समन्वय ही जीवन है। हमें दोनों को साथ रखकर भी चलना है और उनके मध्य से मार्ग भी निकालना है, ये हमारा फर्ज है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आयोजन समिति के सभी सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि हमारे आदरणीय अतिथि का कोई आदर सत्कार करें। पहले ये सबसे पहला बाबा नहीं, बस एक है, ये करणवीर जो है मेरे साथी,
ये भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं, किसान यूनियन के साथ भी हैं, हमारे साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करते हैं। मैडम आ जाइए, आ जाओ यार, मैडम बुलाओ, मैडम आइए, छवि मैडम पीछे से आ जाओ, इधर आ जाओ। इनके बारे में हमने एक और बात बोली थी, ये जब सब पराली जला रहे थे, या अकेला में जब पराली सब भूल गए। हो गया, बैठिए, सर साहब ने बताया, करण जी आप यहाँ हो जरा, करण सर साहब ने, क्योंकि मैंने नीचे परिचय कराया वीसी साहब के पास चाय पीते पीते, किसान यूनियन के लोग इस बार सब जगह खड़ो के आग लगवा रहे थे, पराली को आग जलाओ। सरकार के कुछ लोग जाते थे, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लोग या पटवारी, तो उनको वो बांध लेते थे, खंबे से भी बांध देते थे। और ये शख्स ऐसा है जिसने ना खुद पराली जलाई और हमारे मंच पे आके जिसने जगह जगह बोला पराली नहीं जलानी, वो एक तालियों के हकदार ये है। तो मुझे लगता है कि हमारे पास असली नायक हैं, हमें वो नायक ढूंढने पड़ेंगे। धन्यवाद। एक मैं ये कहूँगा, जिन विद्यार्थियों को, नौजवान भाई बहनों को लगता है भोजन और जीवन की वो यात्रा में हमारे साथ, हमारे कारवां में शामिल हो सकते हैं, इसके बाद ऋषिपेंद्र जी को वो जरूर मिल लें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं इसी सत्र में आगे सत्र को बढ़ाते हुए डॉक्टर संजीव मंदेर सर को मंच सौंपता हूँ कि वे आगे की कार्रवाई को, अगले सत्र को देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। Very good afternoon, ladies and gentlemen. Before starting the introduction of the next speaker, I want to add few things in words given by the respected Umen Datta sir. Sir, as you spoke on about the nutrition, how our traditional crops help the people to gain the good health. So nutrition is required everywhere to keep you fit, to attain the good health, and it plays a significant role in my area. I belongs to a family of sports. तो खेल में न्यूट्रिशन का इतना महत्व है सर, इट इज लाइक एज इंजन कैन नॉट रन विदाउट फ्यूल। अगर आपकी गाड़ी में इंजन फ्यूल खत्म हो गया, आप जितनी मर्जी किक मार लो, गाड़ी नहीं बढ़ेगी भाई आगे। ऐसे ही स्पोर्ट्स में इफ यू आर नॉट गेटिंग द गुड न्यूट्रिशन, गुड न्यूट्रिएंट, you cannot be an athlete, forget about the championship. So sir, definitely your words are really very enlightening for this session. Thank you so much. And now I'm going to introduce the next speaker. As my colleague told me, only a brief introduction. This is quite tough task, but I will try. So next speaker among we have the Professor J.P. Booker, who is working in Central University of Haryana, having 32 years of experience in academics, sports, and defense. His expertise in sports psychology and track and field. He also a World Athlete Level 1 lecturer and former registrar of Central University of Haryana, visiting faculty of Assam Sports University, visiting faculty Ramakrishna Mission, Vivekananda Education and Research Institute, West Bengal, and member of the Academic Council of so many universities across the country. And he also associated with the government research project in sports science and delivered more than 1,000 lectures at national and international level. He also completed the diploma in strength and conditioning from Hungary, and he is also
at present, he is the national champion in 110-meter hurdles in his age. Recently won the gold medal in pole vault, silver medal in 100-meter hurdle, bronze in 400-meter hurdles in Asia Pacific Master Games held in Malaysia. He is also awarded the Krida Bharati Lifetime Sports Achievement Award from Krida Bharati Madhya Pradesh Prant, Gwalior. So with these words, sir, I welcome you here. Sir, it's over to you now. Thank you, sir. लैपटॉप इधर रखें। Shri Upinder Dutt, the Executive Director, faculty members, the conference conveners, the administration of the Central University Punjab. I am really honored that I had been given this platform to share the area which I am quite interested, and the conference that is rightly figured out as we are celebrating the 75th years of the independence, the achievements of the country, and in the same line, we are celebrating those sports heroes. So on the day of the celebration, I think the area, the Central University of Punjab has given the due importance. It's a positive sign that sports fraternity is highly motivated in the present scenario. So I'm really from my core of heart thankful to the administration, the entire Central University of Punjab for giving me opportunity to share my views with my professional colleagues and the galaxy of the renowned professors, the scientists, and then the social reformers, the agriculture experts. अभी उपेंद्र साहब ने जो बातें कही उनको मैं तहे दिल से स्वीकार करता हूं और इसको मानता भी हूं कि ये बातें बिल्कुल सही हैं कि रिफॉर्मेशन भी जरूरी है, बदलाव भी जरूरी है, लेकिन उन हेरिटेज को बनाए रखें और इनके बीच में सामंजस्य कैसे हो। स्पोर्ट्स भी उससे अछूता नहीं है। साथियों, मैं थोड़ा सा आपको एक ओलंपिक जर्नी की तरफ ले जाना चाहूंगा। ओलंपिक, जब हम कोई देश का माहौल जिसमें खुशियां बढ़ रही हो तो खेल भी उससे अछूता नहीं है। वो हमारे रियल हीरोज हैं, एक वार हीरोज जो देश के बॉर्डर्स पे ध्यान रखते हैं, एक वो हीरो जो देश की शान बढ़ाते हैं। इस शान बढ़ाने में मुझे लगता है जो खेलों का दायरा, उसमें काफी जो चर्चा करने की जरूरत है, कुछ उसमें अप्स एंड डाउन्स हैं। तो ये जो जर्नी है, आई थिंक 1896 started the modern Olympics, and the country has started participating since 1900. That time we were not the free country, British colonial system का हिस्सा थे। तो जर्नी जहाँ से शुरू हुई वहाँ से ओलंपिक की जो मेडल की शुरुआत है, और ये जर्नी पहुँचते पहुँचते अभी रिसेंटली we can call over the sports hero, everyone is aware of the javelin thrower, नीरज चोपड़ा। इतनी लंबी जर्नी को यहाँ रखने का क्या उद्देश्य है? ये कुछ फिगर्स हैं जिनको हमें थोड़ा सा जानना और समझना भी जरूरी है कि इस जर्नी में खेल कहाँ तक रहा। खेल अपने आप में एक सिंगल एलिमेंट नहीं है, इसके साथ बहुत कुछ इन्वॉल्वमेंट है उन चीजों का, बाकी सेक्टर्स का। वो अकेला मसल प्रूविंग एबिलिटी नहीं है, उसके साथ में एडवांसमेंट जिनकी अभी डायरेक्टर साहब बात कर रहे थे, वो एस्पेक्ट भी इससे अछूता नहीं है। अब हम इसको यदि ओवरव्यू करें
स्क्रीन को, तो आप देख पा रहे हैं शुरू में कंट्री, क्योंकि जब नए खेल शुरू हुए थे थोड़े देश हिस्सा लेते थे, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले गए, एक हॉकी जो 1924 से जर्नी शुरू हुई और 8 गोल्ड मेडल, जिसके लिए हम आज भी प्राइड फील करते हैं, एंड यस इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस, नो डाउट। लेकिन देखिए ये आंकड़े गलत नहीं बोलते हैं, आप बढ़ते चले गए और रैंक जो है आपकी पिछड़ती चली गई, और 96 के बाद में बीच में 20 सालों तक सूखा पड़ा रहा, कोई अचीवमेंट नहीं जिसके लिए हम थोड़ा प्राइड फील कर सकें। नाउ द सिनेरियो स्टार्टेड अगेन द चेंजिंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, क्योंकि देश भी ज्यादा आगे और खेल एक प्रेस्टीज का इश्यू बन गया पूरी दुनिया के लिए। जो फॉर्मल वार्स हैं वो धीरे धीरे कम होते चले गए और अपनी पावर को दिखाने का जरिया दूसरे टेक्नोलॉजी एंड द स्पोर्ट्स, द मसल पावर का रूप बदल दिया गया। हर कोई उसमें अपने आप को वर्ल्ड मैप पे दिखाने का प्रयास करने लगे। अब ये सीन यहाँ से थोड़ा चेंज होता है कि लास्ट ओलंपिक तक पहुंचते पहुंचते इंडिया आफ्टर गोइंग डाउन नाउ स्टार्टेड कमिंग ऑन द बेटर रैंक साइड। तो नो डाउट ऑन द डे ऑफ दिस सेलिब्रेशन इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर अस, एटलीस्ट हमारे पास में 7 मेडल की टैली इस ओलंपिक में भारत ले आ पाया, और जिसकी वजह से हम 48वें रैंक पे पहुंच पाए। लेकिन क्या इतना पर्याप्त है? शायद नहीं, आप भी सहमत नहीं होंगे। अब हम दूसरे देशों का भी सीन देख लें जो शायद हमसे बाद में आजाद हुए हैं या हमसे बहुत छोटे रहे होंगे। यदि ये टैली देखते हैं, उनका जो मेडल ग्राफ रिसेंटली ओलंपिक्स में 113 लाइक यूएस जो सुपर पावर, तो ये सारे वो देश हैं जो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी में बहुत साउंड है, कहीं ना कहीं उनका योगदान है। वो टेक्नोलॉजी कहाँ दिखा रहे हैं? वो अपना उस हर सेक्टर में। और जब आपने हॉकी की हमने अभी बात करी थी, तो आप सहमत होंगे जो ट्रेडिशनल हॉकी थी, इंडिया वाज अनडिफिटेबल चैंपियन अक्रॉस द वर्ल्ड, देयर वाज नो सब्स्टिट्यूशन। टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन आ गया, जो नेचुरल प्ले सरफेसेस आर्टिफिशियल सरफेस में कन्वर्ट कर दिए गए, टेक्निक बदल गई। अब आपकी अपनी जो स्किल्स हैं उसका साम्राज्य नहीं रह गया, बदलाव आ गया टेक्नोलॉजी। और हम धीरे धीरे जहां गोल्ड मेडल से थे, लास्ट जो परफॉर्मेंस 1980 मॉस्को ओलंपिक्स, उसके बाद 20-40 सालों का सूखा, अब जाके कहीं दोबारा से शुरुआत हुई। शायद ये आंकड़े हमें ये इंडिकेट करते हैं कि इंडिया में इतने सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी रही, वो देश जिन्होंने इन चीजों को बदलाव किया, वो खेलों में हमसे बहुत आगे निकल गए। और कहीं ना कहीं हम इन चीजों में टेक्नोलॉजी का ना होना, इस एरिया को नेग्लेक्ट कर देना, शायद ग्रेट साइंटिस्ट जो कि अभी थोड़ी देर पहले हम सवेरे अपने चांसलर साहब को सुन रहे थे, एग्रीकल्चर में कैसे रिफॉर्म आए, खेती बाड़ी में कैसे रिफॉर्म आए, बाकी और एरिया में कैसे रिफॉर्म आए। सो ये रिफॉर्म लाने के लिए ऐसे विजनरी लोग बाग बैठे हैं, गैलेक्सी ऑफ साइंटिस्ट यहाँ बैठे हुए हैं, पहले भी बैठे रहे होंगे कॉन्फ्रेंसेस में, सेमिनार्स में, और कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात को समझा और सोचा और समझा होगा, जिसका हम आज देख पा रहे हैं। प्रेजेंट सिनेरियो वी आर सीइंग दोज एरियाज आर आई थिंक वेरी गुड लेवल, दे आर डूइंग एक्सीलेंटली वेल। हाँ, मैं ये तो नहीं कह सकता, उपेंद्र जी की बात से बिल्कुल असहमत नहीं हूँ कि हाँ प्रोडक्शन बढ़ा एग्रीकल्चर में, बट वो क्वालिटी का भी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ा। अब देखिए साहब, ये छोटे छोटे देश लाइक बुल्गारिया, स्लोवेनिया, स्मॉलर देन और सम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स, अब कंट्री के छोटे डिस्ट्रिक्ट से भी छोटे देश हैं, लेकिन मेडल टैली में हमसे अभी भी कहीं बहुत आगे हैं। तो क्या वहां पर सब कुछ फेवरेबल कंडीशंस हैं? शायद नहीं। अभी उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, चाइनीज ताइपे, वेरी स्मॉल, ओनली लिटिल सिटी, नथिंग एल्स, हैड बीन देयर, लेकिन उनका भी कहीं ना कहीं सिस्टम सर्वाइव कर रहा है। आप उगांडा देख सकते हैं, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज, जहां आई थिंक दे आर इकोनॉमिकली दे आर नॉट दैट साउंड एज वी आर, उसके बावजूद भी दे आर स्टिल लीडिंग टू अस इन स्पोर्ट्स। ये जितने भी यहाँ जो इंटेलेक्चुअल ब्रेन यहाँ बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात को सोचने को जरूर मजबूर होंगे कि क्या हमारे अंदर कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। So let's see the sports heroes
started the journey from 1900s. आप देख पा रहे हैं हॉकी में starting from first Olympic, this Norman Petrich, that time Anglo-Indian, not the Indian, not the Indian origin, he was the British origin person, and subsequently 24 में जाके कितने सालों तक तो अपने पास ब्रिटिशर्स ने टीम ही नहीं फीड करी, 24 से अपनी जर्नी शुरू हुई। वहां से क्योंकि अपना हॉकी ट्रेडिशनल गेम जिसमें जो ट्रेडिशंस की हम बात कर रहे थे, कपड़े की बॉल बना के डंडे के साथ में अपना ही खुद का स्टिक डिजाइन करके पीपल यूज टू प्ले। जो पुराने लोग बाग होंगे या अपने पेरेंट्स से कहानी सुनते होंगे, जरूर ये कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। उस हॉकी में महारत हासिल और आप ओलंपिक में अपना डंका बजवा रहे हैं, लेकिन ये एक खेल तक सीमित क्यों रह गया? अब वो जो वेस्टर्न कंट्री देखिए यहाँ से टर्न अप लेना शुरू करते हैं। जब इंडिया बर्लिन के अंदर मेजर ध्यानचंद, जिसकी स्टिक को कितनी दफा आपने स्टोरी के तौर में कई लोगों ने सुना होगा कि उसको चेक किया गया, तोड़ के देखा गया, कुछ मैग्नेटिक सम मैकेनिज्म इज देयर और समथिंग, जिसको जादूगर बोलते हैं, हॉकी का जादूगर। बट कुछ नहीं, स्किल, सो प्रोफिशिएंट इन स्किल। तब तक टेक्नोलॉजी का इतना इंटरवेंशन नहीं। अब टेक्नोलॉजी जैसे ही आ गई है तो खेलों में दायरा भी बदल गया है। ये देखते अभी अपनी जर्नी देख रहे हैं, इन जो स्पोर्ट्स हीरोज को आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, कुछ फेसेस को, आपको शायद सभी को ना भी कर पाए, फिर भी हम बताना चाहेंगे कि 96 के बाद में लिएंडर पेस से जब 80 से 96 तक 16 सालों तक सूखा, हर बार टीम जाती, कितना खराब लगता कि इंडियन टीम क्वालिफाई नहीं हो रही है हॉकी के अंदर, जहां आप अपने आप को महारत हासिल की वर्ल्ड लेवल पे। तो ये जो 60s 70s में रिसर्च इन्वॉल्व हो गई और लोग बागों ने जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, उनका ट्रेनिंग के गैजेट्स, टेक्निक, मटेरियल, ये इनका इंटरवेंशन हावी हो गया, उनका एनालिसिस, उनका प्रोडक्शन, इक्विपमेंट, एवरीथिंग, और वहां से हम पीछे हटते चले गए। बाद में सिनेरियो आया कि गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स दे ट्राई टू लॉन्च। किसी ने कहा जी हमारे यहाँ स्टेडियम नहीं है, तो by virtue of the public desire they created few stadiums, जहां फैसिलिटी खड़ी हुई, कुछ लोगों को खेलने का मौका मिलने लगा, और उस खेल जर्नी में हम कहीं ना कहीं अपना एग्जिस्टेंस बना पाए, लेकिन कोई डेंट नहीं बना पाए वर्ल्ड लेवल पे। जब ये बड़े फैसिलिटी नहीं थी तो छोटे फैसिलिटी, छोटे ग्राउंड्स, लाइक आप देख पा रहे हैं आर्चरी, शूटिंग, रेसलिंग मैट पे आ गई, जो अपने ट्रेडिशनल अखाड़ों में, मैदानों में, मेलों में हुआ करती थी। और जब ये चीजें इक्विपमेंट्स परचेज करने लगी गवर्नमेंट, उसमें बहुत तरह के रेस्ट्रिक्शंस। वी आर नॉट सेल्फ सफिशिएंट, हम अपने औजार, अपने उपकरण, अपने खेलों के संसाधन तैयार करने में आज भी सक्षम नहीं है, आज भी सक्षम नहीं है। काफी पैसा अपना जो स्पोर्ट्स बजट का या तो आयोजनों में चला जाता है या इस सामान की खरीदारी करने में। अब खिलाड़ी के लिए तो कुछ बचता ही नहीं बात में। तो ये डाटा अभी रिसेंटली, ये जो आप इनका देखेंगे ब्रिटेन का, जब ये रियो ओलंपिक्स हुए, आई थिंक द ब्रिटेन हैज आल्सो रिवाइव्ड इट्स स्पोर्ट्स पॉलिसी। आफ्टर 1996 ब्रिटेन ने अपने जो स्पोर्ट्स पॉलिसी लेके आए, और वो जो नई पॉलिसी आई, दे हैव प्लान फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स, और जो कि इन्होंने 16 में और गेम होस्ट करे, लंदन ओलंपिक्स। So the scenario was totally different. In 20 years, lot of the amount has been spent on R&D, research and development in sports. So जो दुनिया के टॉप साइंटिस्ट थे डिफरेंट सेगमेंट में, उनका एप्लीकेशन स्पोर्ट्स एरिया में लेके आ गए। तो ये जो अपना शूटिंग का द एक्यूरेसी स्पोर्ट्स, अब यहाँ से साइंस का इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गया, वो गैजेट्स लोग लाने में सक्षम हो गए, कॉर्पोरेट हाउसेस थोड़ा आगे आए, दे स्टार्टेड सपोर्टिंग, गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स आई। अब देखिए कि रेसलिंग में कुछ हम अच्छा करने चले, शूटिंग में अच्छा करने लगे, तो फेडरेशंस ने बहुत तरह के बैन लगा दिए। कॉमनवेल्थ में आपका गेम हटा दिया गया शूटिंग। तो शूटिंग भी या जो स्पोर्ट्स भी है वो पॉलिटिकल सिनेरियो से अछूता नहीं है। हाँ, जो हमारे बाकी साथी लोग हैं, हो सकता है उन तक इतनी सामान्य जानकारियां मतलब शायद उस प्रत्यक्ष में ना हो, लेकिन जो स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए हैं, दे कैन अंडरस्टैंड दिस पेन वेरी वेल। अब यहां से देखते हैं कि क्या रीजन हो सकते हैं हमारे इन फेलियर्स के। रीजन हजारों की लिस्ट हो सकती है साहब, कोई ऐसा नहीं कि भाई आज कोई जादू की झप्पी मिल गई
और आज से कोई क्रांति आ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। कुछ तो गवर्नेंस सिस्टम है फेडरेशंस का, देयर इज नो कंट्रोल। फेडरेशन में जिसको डिसलाइकिंग आप डिस्प्यूट्स सुनते आ रहे हैं, आपने उदाहरण भी, इवन जो एमसी मैरी कॉम जो 4 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत के कंट्री के लिए ग्लोरी लेके आ रहे हैं, and even those people can be victimized by this the governance system of the federations. I don't think that any ordinary player can escape from that kind of the problems. तो ये थोड़ा सा इश्यू है, कंट्रोवर्शियल हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारी ट्रांसपेरेंसी जो स्पोर्ट्स फेडरेशंस की गवर्नेंस है, कहीं ना कहीं उसमें कमी है। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ, आज की तारीख में यदि हम ये बात करें तो इसमें काफी बदलाव आया है, काफी हद तक चीजों में सुधार भी आया है, चीजें आई हैं। हम अब ये अपील नहीं कर सकते कि टोटली नेग्लिजेंट है। हाँ, ये इतना इशू जरूर कहेंगे इस बारे में कि इनका इंटीग्रेशन नहीं है, रिसोर्सेज ऑप्टिमम यूज नहीं हो पा रहे हैं। एक जगह के लिए इतना बड़ा स्टेडियम बना दिया गया, लाइक रांची में 10-20 crores ऑफ द स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वाज क्रिएटेड फॉर नेशनल गेम्स एंड टोटली अबंडन नाउ। इतना करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट, जहां वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटी किसी एक सिंगल अम्ब्रेला के नीचे, वर्ल्ड क्लास शूटिंग रेंज, वर्ल्ड क्लास एथलेटिक स्टेडियम, आर्चरी, जिम्नास्टिक हॉल, स्विमिंग पूल, बट दे आर नाउ जस्ट सिंपली द वेन्यूज। अब इस पे कितना करोड़ों रुपए तो मेंटेनेंस का चाहिए, कैसे मेंटेन हो, क्योंकि इसको हमने कहीं लिंकअप ही नहीं किया। बनाने के लिए इवेंट ऑर्गेनाइज कर दिया, बट सब्सिक्वेंट उसका यूज कैसे हो, दैट those policy makers never given advice to the government how it will be used at later stages. तो इंटीग्रेशन की कमी कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त मिसिंग है। और दूसरा रही सही कसर अपना जो मीडिया, आई थिंक they have more focus or commercialization for few sports rather than taking due care of about the other sports, the traditional sports. हालांकि अभी भी कबड्डी को उन्होंने प्रमोट करना शुरू किया है, प्रीमियर्स उनमें भी शुरू है। So scenario is now still in the positive direction. That is one of the strong reason to celebrate. कि हाँ ठीक है, देर आए, पर कहीं ना कहीं हम इस राह पे चल पड़े हैं। बट क्या ये जो राह है, is it meeting the pace which we really need at this hour? Still, I think it needs a lot of intervention from the intellectual people who need to jump into in this area. जब तक आप अपने कहीं साइंस को स्पोर्ट्स के साथ सपोर्ट नहीं करेंगे, आगे भी कोई जल्दी बदलाव आने की उम्मीद नहीं है। ऐसे ही जो जेनेटिक्स की हम जीन्स की बात कर रहे थे, डॉक्टर साहब ने बताया कि कहीं न कहीं हमारे जो जीन्स हैं उनमें भी बदलाव होते जा रहे हैं। अब वो बदलाव कोई एक दिन में नहीं आए हैं, उसके कितने मल्टीपल फैक्टर्स रहे होंगे। जिस जगह जो चीज नहीं पैदा होनी चाहिए थी, वहां वो पैदा करी जा रही है। जो फूड हमारा नहीं होना चाहिए था, वो फूड जबरदस्ती खिलाया जा रहा है। खिलाड़ी दूसरे देश में खेलने के लिए जाते हैं, जो फूड हैबिट उसकी यहाँ इस प्रोटेक्ट में है, वो सिमिलर इन्वायरमेंट दैट डजंट गेट ओवर इन द अदर कंट्री, एंड दैट दीज आर द वेरी बेसिक इश्यूज बट दे कंसर्न। स्लीप डिसऑर्डर बदल जाता है बच्चों का, नींद उस आवर में नहीं आ पाती है जब उनका टूर्नामेंट, क्योंकि यहाँ जो जेट लैग की प्रॉब्लम है, फूड कल्चर का प्रॉब्लम्स है। इफ यू गो टू द डिफरेंट वेन्यू यू विल फाइंड ह्यूज डिफरेंस इन द बायोलॉजिकल बॉडी सिस्टम, टोटली अपसेट। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का सिस्टम आज भी नहीं है। हम टैलेंट छांट रहे हैं किस बलबूते पे? प्रूव्ड एबिलिटी। बच्चे की you had gone to some talent search selection process and for few days you have trained yourself by virtue of your few traits you have learned, you have spotted out, you are better than the other people at that point of time. आप आउटलायर हो गए, छट के आगे, बट बॉडी में पोटेंशियल है आपके जीन में, ये तो कहीं इन्वेस्टिगेशन में है ही नहीं। तो इसको भी तो देख, उस पे हम लाखों करोड़ों रुपया लगा रहे हैं। वो कहा जा रहा है कि 5 लाख रुपए सालाना एक बच्चे पे लगाया जाए, लेकिन वो उस बच्चे पे लगाया जाए कम से कम जिसके अंदर ही जीन में भी पोटेंशियल है, उसके अंदर वो एबिलिटीज हैं। एबिलिटीज को हम स्पोर्ट्स की भाषा में बोलते हैं वो बायोमोटर एबिलिटीज। So at least the child is good enough in those abilities, and if the person has those genes, responsible gene for relevant sports, अब ये कौन बताएगा? स्पोर्ट्स वालों को तो सिर्फ काम ट्रेनिंग देने का है, वो ट्रेनिंग को सपोर्ट कौन करेगा? The other scientists, those who are sitting in the hall. तो अब ये सिनेरियो यहाँ से बदल रहा है कि जब हम आजाद हुए थे तो और भी एरिया हमारे कोई बहुत साउंड कंडीशन में नहीं थे। अब इंडिया का साइंस का स्टेटस देखते हैं, सो एटलीस्ट हम अपने आप को कह सकते हैं कि हाँ,
like in space science, India is still making a good position at the top, the world body levels. उसका भी एक अपना existence है. अब defense system को भी कर सकते हैं. India का defense is reasonably very good. अब industries like the competitive index, industries, space, coal, steel production, electricity, and in terms of using the phone you have, which you have in your hand, in terms of the consumer, I think we are at the very good level. जब इन एरिया में इतना आगे हैं, तो फिर ये स्पोर्ट्स को क्या हो गया? कुछ तो इश्यू है. अब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी वजह से ये बदलाव आए होंगे उन सेक्टर में. So few of them like ISRO, CISR, DRDO, ICMR, BARC, ICAR, like these people working in these organizations, they are independent centers, organizations, and throughout the year their job is to create, make the life easy for the citizens of the country, bringing some innovations for their lifestyle. Yeah, those changes may be sometimes acceptable. जैसा अभी कुछ कंट्रोवर्सी हो सकती है कि प्रोडक्शन चीजों का बढ़ सकता है, बट कहीं ना कहीं वो जरूरत भी पूरा कर रही है. हमें उनकी जरूरतें भी तो पूरी करनी है. हम क्वालिटी की तो बाद में बात करेंगे, पहले कम से कम इतनी क्वांटिटी तो हो कि लोग बागों को सर्वाइव रख सकें. तो ये जो डोमेन है इन एरिया में कॉन्स्टेंटली तब से कहीं ना कहीं जो साइंटिस्ट लोग, जो कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट रहा है, और वो साइंटिस्ट कुछ ना कुछ रिसर्च करके जो सिटीजन्स की रिक्वायरमेंट को या लाइफ, जो उनकी क्वालिटी लाइफ है, कहीं ना कहीं बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं. अब आप कहेंगे कि जी फिर स्पोर्ट्स में कहाँ जरूरत पड़ गई रिसर्च की? ये हमारा मेजर इश्यू हो सकता है. तो मैं एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा. जहां हम सोच नहीं पा रहे हैं, वो 20-30 years back, like in I think one of the conference in 2018 only in Germany, we got a chance to visit one of the this research center. Of course that was not the research center, that was the facility center rather. कि आप इस हॉल को, इसी को बैठे बैठे आप हाई एल्टीट्यूड चैम्बर में कन्वर्ट कर दें. You need not to go to the mountains for getting a good effect of the high altitude training, and by sitting in your room itself, convert it to have a feeling of 10,000 feet height altitude in the same room, and you can train yourself with the gym training, running on the cycle or the bicycle, on treadmill, and what are the effects you are carrying. That will return with you. You come out of this center, and you will be carrying those effects with you. लेकिन यदि हम वो हाई एल्टीट्यूड सेटअप में रहते हैं, जाने में दिन लग जाएंगे, एक्लेमेटाइजेशन में दिन लग जाएंगे, और जब तक हम वापस बेस में आएंगे, वो जो एडवांटेज लिए थे ट्रेनिंग के, वी अगेन मिस दोस. अब वो कंट्री जब इस मैकेनिकली इतने साइंटिस्ट लोगों का तो योगदान रहा ना, वो किसी ने कोच का तो उन लोगों का तो सिर्फ विजन रहा होगा, प्रॉब्लम्स को किसने आइडेंटिफाई किया? दिस द टीम ऑफ द साइंटिस्ट. नाउ दे हैव क्रिएटेड द फैसिलिटी. वॉलीबॉल टीम आ रही है, हॉल इस अंदर ट्रेनिंग कर रही है. विद इन द लाइक हम एसी का वो रिमोट रहता है, और रिमोट की वजह से आप जो टेम्परेचर सेट करना चाहे उस टेम्परेचर में हम रह सकते हैं. आप एल्टीट्यूड सेट कर लो, जितने डेंसिटी आपको एयर मॉलिक्यूल्स की रहती है रूम के अंदर, यू कैन सेट इट एज पर द नीड. तो ये इफेक्ट कहाँ पॉसिबल हो रहे हैं? सो देयर आर मेनी एट दिस रिसर्च दैट इज एप्लीकेबल फॉर द स्पोर्ट्स पर्सन. उनकी डाइट जिसका बड़ा इशू है, वो डाइट सप्लीमेंट्स जो ऑर्डिनरी आदमी को सप्लीमेंट लेने लग रहे हैं, तो व्हाट अबाउट द स्पोर्ट्स पर्सन who consumes more than the 6,000 calorie in a day? जब हम 2-2,500 कैलोरी अपने भोजन में नहीं ले पा रहे हैं, तो कहाँ 8-10 हजार कैलोरी का रिक्वायरमेंट पूरा करेंगे? तो फिर किधर जाएंगे? डिपेंडेंसी ऑन दोस द बैंड सब्सटेंसेस. वो लेते हैं तो उसमें फंस जाते हैं, ड्रग्स में. नहीं लेते हैं तो कहीं स्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, और फिर हम उनको क्रिटिसाइज करते हैं. तो स्पोर्ट्स के अंदर भी ये बहुत जरूरी है कि उनका साइकोलॉजिकल, उनका फिजियोलॉजिकल पैरामीटर, उनका लाइक मैकेनिकल एनालिसिस, देयर स्किल एनालिसिस, जो आप क्रिकेट में वो देखते हो, मैच के बाद में उसका एनालिसिस आता है, डाटा जाते हैं, कहाँ बॉल जा रही है, किधर स्पिन हो रही है, वो गोल लाइन टेक्नोलॉजी है, उनकी ऑफिशिएटिंग इतनी स्मार्ट हो गई है. ये कौन लोग कर रहे हैं? क्या कोच या वो प्लेयर कर रहे हैं? वो काम कोई ना कोई साइंटिस्ट ही कर रहे हैं. आपका हार्ट रेट, आप कहीं रनिंग कर रहे हैं, अंडर वाटर स्विमिंग कर रहे हैं, पल्स रेट उसका बैठ के मॉनिटर कर रहा है कोच वहां से, एंड दे आर डिजाइनिंग देयर ट्रेनिंग प्लान. अब हमारे पास तो ये चीजें ड्रीम में ही है, कुछ है भी नहीं. सो वी नीड द लाइक सेफ्टी इक्विपमेंट्स फॉर स्पोर्ट्स पर्सन.
So those who are working in the industry, the scientists need to introspect. There is a open domain for them for the research. Recovery modalities, how to recover faster. आप वो जो hypoxia chambers हैं, artificially chambers to make you a quick recovery. आप लोग देखते हैं टीम्स के अंदर जब मैच होते हैं, जल्दी चला के उसको मास्क लगा के and then more condensed oxygen and they get quick recovery and again get back to the game. कौन लाएगा अपने लिए? हम कब तक कुछ प्लेयर्स के लिए वो परचेज कर लिया, कुछ प्लेयर्स को दे दिया, but those are only very penny, few examples. But what about the country is just like a subcontinent? How we will meet out the need of those all players? जो लाखों लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनकी जरूरतों को कैसे कौन पूरा करेगा? तो वहां पर आप साइंटिस्ट की जरूरत है, स्पोर्ट्स एनालिटिक्स, द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, द साइकोलॉजिकल सिस्टम्स. हम मशीनों पे काम नहीं कर रहे हैं, हमको उन बाजरे की या जो मिलेट्स की ब्रांड है, बिकॉज ऑल दोज थिंग्स आर नॉन लिविंग बेसिकली, मेजोरिटी ऑफ देम. यहाँ हम इंसान की बात कर रहे हैं, और वो इंसान जिसका एक छोटा सा स्टिमुलस दिमाग में आ गया मैथ से पहले, कुछ चीज डिस्टर्ब होगी, उसका इक्विपमेंट सही नहीं है, उसको पता चला मेरी एयर गन के अंदर प्रेशर कम है, बस उसका टेम्परामेंट गॉन टोटली. किसी ने छोटा सा भी टेम्पर कर दिया मैथ से पहले, थॉट प्रोसेस चेंज, स्टिमुलस हैंग हो गया, अब वो क्या परफॉर्म करेगा? ही लॉस्ट टोटली. वो बोलता मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा था उस टाइम पे. अब हम खूब सारी शाउटिंग करें, हुल्डिंग करें, नथिंग विल हैपन. कौन देखेगा? अगेन दिस ग्रेट साइंटिस्ट. तो दिस स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी स्पेशली डिमांड फ्रॉम the core scientists, please join this group, have exploration in the area of sports. There is abundant scope. Nutritional basis is the speaker, he was rightly mentioning out that you are producing quality, but what about the good content, the nutritional values? So again we need to focus for the sports person. Understanding about the response of various exercises, जो हमने 20 साल पहले सीखा, वही हम आगे वाली जनरेशन को सिखा रहे हैं. अबे ये कसरत कर रहे हैं, ये एक्सरसाइज क्या करेंगे, कहाँ असर होगा? कोचेस ने वो 10 महीने का डिप्लोमा कर लिया और 60 साल तक उसी से कोचिंग कराते रहेंगे. आयरनी, जेनेटिक एनालिसिस, इक्विपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड एडवांसमेंट, स्पोर्ट्स मेडिसिन, चोट लग गया भेज दो वहां पे हॉलैंड में वो रिहेबिलिटेशन सेंटर में. जो छोटे छोटे कंट्री हैं जिनका स्पोर्ट्स मेडिसिन एक टूरिज्म हब है, जहां लोग अपना सिर्फ रिहेबिलिटेशन पर्पस के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके वहां जाते हैं. हमारे जो इतने डॉक्टर्स हैं, क्या हम नहीं बना सकते? सिर्फ सोचने की जरूरत है. ये एरिया खुला पड़ा है, अभी भी इसके अंदर बहुत स्कोप. लाइक दोज कंट्रीज दे आर लीडिंग इन स्पोर्ट्स, लाइक ऑस्ट्रेलियन सेंटर फॉर द रिसर्च एंड रिहेबिलिटेशन. जितना खिलाड़ी अपना किसी न किसी रीजन से दे आर इंजर्ड, immediately they take due care, a very well established system with support of all those scientists, medical doctors, and perfectly, and they will get back to the sport scenario in true sense with the same performance. Do we have Institute of Sports Medicine and the Orthopedic Research Center, Copenhagen, everywhere you name it, like in Asia also, your Korea, Japan, China, majority of these leading countries, those who are performing really good in sports, they have one or other kind of a science supported system for sports person. So we also need, if country can think in this direction. Now let us appreciate about the few efforts made by the government. Like new sports policy was introduced in 2014, and that was the purpose, the alarming, that given a kind of the stimulating those great people, the policy makers, at least they agreed there should be a drastic change in the sports policy. जो 98 में बनी थी, 2014 में जाके कुछ न कुछ उसमें बदलाव लेके आए. कुछ उसका बजट का एलोकेशन की बात है. पर्पस क्या था कि कहीं ना कहीं कंट्री में एक सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर हो मिनिमम लेवल का. खेलो इंडिया स्कीम लेके आए, गवर्नमेंट का कुछ पार्ट आया. शायद आप जो युवा साथी हैं हमारे, खिलाड़ी भी लोग बैठे होंगे इसमें, या आपके कोई फैमिली के अंदर लोग खेलते होंगे, सुना भी होगा. खेलो इंडिया इज अगेन ए वेरी गुड ड्रीम प्रोजेक्ट. साइड ट्रेनिंग सेंटर्स, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज क्रिएटेड ए लॉट मनी सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री इन लास्ट डिकेड. 10-15 सालों में बदलाव आ रहे हैं. पर्पस क्या है? उन लोगों को सुविधाएं मिल सके
कम से कम रिमोट एरिया तक भी, तो साई के जो सेंटर बना दिए गए, नॉर्थ ईस्ट, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंटर, इन डिफरेंट लोकेशन, कम एंड प्ले स्कीम। आप आइए, आप 1 घंटा के लिए यू पे इट एंड देन गो बैक, कुछ स्कीम लेके आई है गवर्नमेंट। पंचायती युवा क्रीड़ा खेल अभियान एक स्कीम लॉन्च करी, गांव तक भी खेलों को जो ट्रेडिशनल गेम है उनको प्रमोट किया जाए। हर आदमी टेनिस नहीं खेल सकता, हर आदमी शूटिंग नहीं कर सकता, बट जो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है उनको सर्वाइव किया जाए, जो अपना हेरिटेज है, क्यों स्किल तो उसमें भी रिफाइन करी जा सकती है। गेम की लिस्ट भी बढ़ती जा रही है, आपने देखा होगा पहले कुछ गेम हुआ करते, अब AIU की बैनर के नीचे देख लीजिए आप, उसके जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर स्पोर्ट्स जिनको एफिलिएशन देती है गेम्स की, उसके नीचे देखिए जहां 15-20 गेम होते हैं, अब वो करीब 150-200 की लिस्ट पहुंच चुकी है। तो इतने वो गेम कौन है जो ट्रेडिशनल गेम्स, वो कहते हैं आप इनको प्रमोट करिए, लेट द किड्स प्ले, लेट द masses बी मोर एक्टिव। जो प्ले फील्ड फैसिलिटी का एक एसोसिएशन बना दिया गया, शायद यूनिवर्सिटी से भी डाटा मांगे गए हैं कि पहले ये पता चल जाए कि किस एरिया में व्हाट काइंड ऑफ फैसिलिटी इट एग्जिस्ट, हाउ मेनी आर द स्टेक होल्डर्स एंड वेयर इट कैन बी यूज्ड and where it can be built in the next plan। तो वो डाटा इंटीग्रेट कर रहे हैं, उसका एक ऐप बना दिया गया है कि आपके यहाँ फैसिलिटी है, कितने लोग यूज करते हैं, कितना बजट में बना था, उसका सस्टेनेबिलिटी कितना टाइम का है। तो जब ये आंकड़े आ गए हैं, रिसोर्सेज शेयरिंग का कॉन्सेप्ट आ गया, PPP मॉडल्स पे बात होने लगी, और इसी डायरेक्शन में आप देखेंगे कि जो खेलो इंडिया का कुछ थीम के साथ में एक बहुत ही ड्रीम प्रोजेक्ट लेके आए हैं प्रेजेंट गवर्नमेंट, कि जिसमें पूरा इकोसिस्टम को रिफाइन करने का इसमें जोर दिया गया, द एंटायर इकोसिस्टम फॉर द स्पोर्ट्स, जिसमें फैसिलिटी डेवलपमेंट का भी ध्यान रखा गया है, कम्युनिटी कोचिंग हर लेवल पे, हर ब्लॉक लेवल पे कोई ना कोई ट्रेनर हो जो कम से कम उस बेसिक लेवल की नीड को पूरा करे। छोटे छोटे सेंटर बना दिए गए स्टेट लेवल पे कि भाई आप बच्चा वहां से छट के आए, स्कूलों से लिंक कर दिया गया, और वो जो डाटा आए वो डाटा गवर्नमेंट के नेक्स्ट लेवल पे जाए और बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिले किसी नेक्स्ट लेवल की एडवांस ट्रेनिंग और कोचिंग के लिए। फिजिकल एजुकेशन का जो प्रोग्राम है इसके साथ कनेक्ट कर दिया गया प्राइमरी लेवल, यानी जिसको हम कहते हैं क्रिएट योर द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, सो द एलिमेंट्री एजुकेशन दैट हैज बीन क्लब्ड with the sports in terms of introducing by physical education cards, a program, promotion for sports among the people with the disability, जो पैरा एथलीट्स हैं, आप देखा होगा अभी भी हमारे लिए काफी पैरा एथलीट्स ने भी they made the country proud। टैलेंट सर्च डेवलपमेंट, टैलेंट सर्च का भी उन्होंने एक सिस्टम बना लिया गया, 3 tier सिस्टम, विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, वहां से कुछ एक टैलेंट सर्च का एक क्राइटेरिया बना दिया गया जिसमें स्किल का रोल ज्यादा नहीं रखा गया, बच्चे की नेचुरल एबिलिटी चेक करने की कुछ बैटरीज बना दी गई, फिटनेस बैटरीज, एंड आउट ऑफ दैट दे सेलेक्ट द पर्सन ओनली बिकॉज ऑफ देयर एक्स्ट्रा क्रेडेंशियल इन देयर मोटर एबिलिटीज, नॉट बाय वर्च्यू ऑफ देयर स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। ये नहीं जी बैडमिंटन आता है किसको टेनिस आता है, वो देखते हैं कि बच्चा किस एरिया में अपने सब सेम ग्रुप से कैसे डिफरेंट है, वो एलिमेंट देखा कि हाँ ये कहीं ना कहीं काम आ सकता है बच्चा आगे स्पोर्ट्स में। इसी का वो जो ट्राइबल स्पोर्ट्स हैं उनको भी इंक्लूड कर लिया गया, और इसी सिनेरियो में गवर्नमेंट ने कुछ इंस्टीट्यूशंस, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया पिछले 10-12 सालों में। देख सकते हैं कि एक मणिपुर नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का 2018 में पार्लियामेंट एक्ट में एक टोटली एक्सक्लूसिवली नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को इंट्रोड्यूस किया। थीम उसके पीछे भी यही था, 500 करोड़ का बजट दिया गया कि भाई यहाँ पे वर्ल्ड लेवल के जो टॉप एथलीट्स हैं, जस्ट लाइक इन जो एक कमेटी बनाई गई थी गवर्नमेंट से जब बीजिंग में ओलंपिक्स हुए थे कि जी वहाँ मैक्सिमम मेडल यूनिवर्सिटी के प्लेयर्स देते हैं, यूनिवर्सिटी सिस्टम में कुछ ऐसा वो सेंटर्स बनाए जाए। तो उन्होंने उसको ये तो मान लिया, यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी, लेकिन उसकी वायबिलिटी, फिजिबिलिटी वो प्लान आउट फिर भी नहीं रहा। तो अभी भी वो चीजें आ रही हैं, बट उसको कैसे क्लब किया जाए, उससे कैसे सिनर्जी बनाई जाए, अभी भी उसमें बाकी जो साइंटिस्ट हैं उनका इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है। विशाखापट्टनम स्पोर्ट सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ह्यूज प्रोजेक्ट। लद्दाख जैसे हाई एल्टीट्यूड पे एक एथलेटिक्स का, फुटबॉल का सिंथेटिक का ट्रैक बना देना, दैट्स अगेन ए बिग चैलेंज एट दैट सो हाई एल्टीट्यूड, creating crores of the infrastructure over there, it's not easy task. Chenna Swami Stadium, that is the self power sufficient stadium, I think the Pala IT जो stadium जिसे कह सकते हैं, the fully supported on the solar system, maintaining the ecosystem of the environment,
and the great private institution, Inspire Institute of Sport, IIS. If you sometimes get a chance to see the institution, it's no doubt the private organization, but जो कहते हैं कि भाई गवर्नमेंट यदि करने में इतनी सक्षम नहीं है, इतना ह्यूज बजट नहीं है, एटलीस्ट few corporate people they came forward and created a world class facility center for top players. Trans Stadia, the cricket stadium in the Nagpur, the Narendra Modi Stadium, Ahmedabad, the Rajkot Stadium. So these facilities are being increased in multifolds. लेकिन ये क्या हमारी जरूरतें पूरा कर पा रही हैं? Then जो गवर्नमेंट का दूसरा पक्ष रखा गया कि आप यूनिवर्सिटी सेटअप में ऐसे कुरिकुलम लेके आइए, प्रोग्राम्स, those who can cater the need of the sport scientist in terms of the sport scientist. और उसमें उन इंस्टीट्यूशन को 5-5 करोड़ रुपए दिए गए और 5 इंस्टीट्यूशन लेके आए कि जिनको सेपरेट उनके रूटीन बजट से सेपरेट बजट देके और वहाँ डिपार्टमेंट खोले गए, लाइक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन इन हैदराबाद, एमएससी स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, LNIP ग्वालियर, गुरु नानक देव GNDU अमृतसर, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान. They have created some sports sciences program, particularly related to the sports sciences. तो ये शुरुआत है, कहीं ना कहीं इनिशिएटिव लिया गया है कि कम से कम वो लोग उस एरिया में आए जिसमें हार्ड कोर साइंस के स्टूडेंट्स भी हों और जिसके अंदर प्लेयर्स भी हों. देयर इज ए स्ट्रॉन्ग नीड इन सिनर्जी. कोचेज लोग साइंटिस्ट को एक्सेस नहीं देते हैं, वो कहते हैं ये साइंटिस्ट अपना नहीं बहका देगा हमारे बच्चों को, दे डोंट अलाउ. ये अपने आप में एक प्रॉब्लम. और साइंटिस्ट कहते हैं जब हमारे पास कोई सब्जेक्ट ही नहीं है हम किस पे रिसर्च करें, वो डाटा ही शेयर करने को तैयार नहीं है. तो ऐसा कहीं इंटीग्रेशन की जरूरत है. तो इसी डायरेक्शन में कुछ हमने जब ये चीजें रिव्यू कर रहे थे, so there is a strong need for sport specific research center in the country. जैसे इसरो है, DRDO है, लाइक बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, स्पोर्ट्स रिसर्च सेंटर आज भी कंट्री के पास में नहीं. तो जिन कंट्रीज ने ये 20-25 साल पहले रिवाइव किया, अपना जो स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को ध्यान में रखते हुए रिसर्च सेंटर स्टेब्लिश किए, और ये जर्नी इतनी छोटी नहीं है, इसमें कोई चमत्कार नहीं होते, खेलों में कोई जादू नहीं होता. देयर इज नो शॉर्टकट इन स्पोर्ट्स. ये बहुत ही डेडिकेशन, और अब साइंस सपोर्टेड हो गया पूरा. अब अकेला ये मसल के बलबूते पे स्पोर्ट्स नहीं रह गया. ह्यूज सपोर्ट फ्रॉम द कोर साइंटिस्ट. नीड मोर स्पोर्ट्स बजट फॉर R&D. द स्कीम्स एंड पॉलिसी मस्ट बी क्वालिटी सेंट्रिक. अभी तक तो हम मास सेंट्रिक कर रहे थे. फिट इंडिया मूवमेंट, खेलो इंडिया मूवमेंट, फिटनेस ड्राइव, लेट दोस मासेस बी इन्वॉल्व इन वन और द अदर फिजिकल एक्टिविटी. बट अब इसको आगे वाले जो सिनेरियो है, जब हम आगे बढ़े, हम आगे की जब सेंचुरी सेलिब्रेट करें, कम से कम हमारे पास में वो जमात खड़ी हो जो यंग तो हो बट साथ में फिट भी हो, जो देश के लिए एसेट हो, लायबिलिटी ना बने. स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस इज मल्टीफेसिटेड. बहुत जरूरत है साहब. सो इट कैन बी क्लब विद द यूनिवर्सिटी सिस्टम. जैसे अभी थोड़ी देर पहले अपने चांसलर साहब कह रहे थे कि जो एग्रीकल्चर में रिफॉर्मेशन आए थे, तो वो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी सेटअप के साथ में उन्होंने जिम्मेदारी दी गई थी कि भाई खेती की जो जरूरत है उसको पूरा किया जाए, उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी लेके फूड ग्रेन्स की क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ें. हाँ, कहीं हम बढ़े, इसमें कोई दोहरा नहीं है. चलो ये डिबेट का इश्यू है कि उसमें इफ्स एंड बट्स हो सकते हैं, मान रहे हैं, लेकिन इसमें तो ये तो बैरन पड़ा है, अभी भी इस पर किसी ने शुरुआत ही नहीं करी है. तो ये यूनिवर्सिटी के सेंटर्स बना दिए जाएं. इन्हीं यूनिवर्सिटी में जो साइंटिस्ट प्रोजेक्ट लेके आते हैं, कोई DST से, कोई किसी अपने अपने डोमेन से, कोई ICCR से, गवर्नमेंट इसका एक सेपरेट बजट बना के यूनिवर्सिटी को नोडल सेंटर बना दिया जाए. कोई नॉर्थ में, कोई साउथ में, कोई ईस्ट में, कोई वेस्ट में, और एक उसका एक इंडिपेंडेंट रिसर्च सेंटर हो. उसमें पूरी टीम काम करे, कोई अकेला आदमी नहीं. उसमें कोई न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट भी हो, कोई फिजिक्स के प्रोफेसर भी काम करें, कोई उसके अंदर न्यूट्रिशनल बायोलॉजिस्ट भी काम करें, तो बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर्स काम करें. एंड लेट दिस द साइंटिस्ट bring with a model for the entire country. I think कि कहीं तो शुरुआत हो. लेकिन यदि हम ऐसे ही कोसते रहें, सेमिनार कॉन्फ्रेंस में अपने व्यू रखते रहेंगे, तो जो हम ये विजन रख रहे हैं अपने मंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मिशन है आगे वाला, तो शायद हम कहीं ना कहीं उसमें वंचित रह सकते हैं. So a team of hardcore scientists along with the trainers
need to work together in these sports research centers like ICCR, DST, etc. Project may be invited to promote research in sports and provide the opportunities for the upcoming researchers. And like in medical field, जैसे मेडिकल में अपन डॉक्टर के पास कोई भी परेशानी लेके जाते हैं और पूरा का पूरा आपको डायग्नोसिस करके मेडिकल प्रोफाइल देता है. आफ्टर सीइंग द मेडिकल प्रोफाइल वो प्रिस्क्राइब करता है अब आपको क्या करना है. डू वी हैव इन स्पोर्ट्स, मुझे ये खेल सीखना है, मुझे नहीं पता मेरी क्या एबिलिटीज है, मेरी क्या प्रॉब्लम है. हो सकता है बच्चा ट्रेनिंग में बहुत अच्छा करता है, सारे के सारे हम रिकॉर्ड अपने फेवरेबल कंडीशन में यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, जैसे दूसरी जगह जाते हैं हम नहीं कर पाते हैं, मीडिया क्रिटिसाइज करता है. क्या रीजन है, कौन बताएगा, उसको तो नहीं पता. बट कोई ना कोई साइंटिस्ट आके इस चीज को इन्वेस्टिगेट करें. लेट दीज पीपल फाइंड आउट द प्रॉब्लम्स और द टॉप प्लेयर्स. सो देयर इज अ नीड for the Indian Sports Research Center. You may call them by any name, and I'm sure if we can plan this way, so the future Olympic there will be an increase in the number of medals for the country, and most of the team in our countries are trained by the foreign coaches, so we need not to pay them heavy amount. We are paying self-sustained, self-sufficient, indigenous. जो देश का इस टाइम पे एक दौर भी चल रहा है कि भाई हम अपने आप में डिपेंडेंट हो जाए, बजाय कि हम दूसरों की टेक्नोलॉजी और जो दूसरे के इक्विपमेंट्स के ऊपर, कि वो चीजें आपको तब देंगे जब वो उसमें कंफर्टेबल हो जाएंगे, उनके काम का नहीं होगा और वो कमर्शलाइज करेंगे. एंड यू आर पेइंग ह्यूज अमाउंट. आज यही हो रहा है देश के साथ में. एक पोल वॉल्ट का मैट्रेस, लैंडिंग पिट आपको टूर्नामेंट कराना है या कोई ट्रेनिंग देनी है, छोटा सा वो मटेरियल दैट कॉस्ट मोर देन 10-50 लाख रुपीज, तो कौन सा इंस्टीट्यूशन उसको खरीद पाएगा, जबकि वही इंपोर्ट होके यहाँ तक डिलीवर हो रहा है छोटा सा स्पेस में. तो वो किसी जो ये आपके साइंटिस्ट है उन्होंने तो बनाया होगा, किसी ने अपने आप तो बनाया नहीं हो. जब वो ये कर सकते हैं तो हम भी तो वो टेक्नोलॉजी लाके हमारे साइंटिस्ट इस एरिया में आके काम करें. जब और चीजों में बाकी सेक्टर्स में हम कहीं ना कहीं वर्ल्ड लेवल पर स्टैंड कर रहे हैं, तो यदि वो सारे के सारे साइंटिस्ट का ये भी एक डोमेन को चूज कर लें, आई थिंक वी कैन डू द वंडर्स. So the training plan also can be refined, and constant research in field will definitely bring India glory in the sports like other fields like space, science, defense, etc. So with this, the sincere words I put before you my own view. If I have misplaced something in other way, I may be please excuse that someone may like, but still I had to try to take a due care कि हाँ ठीक है, हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, बट हम आज भी ओपन डिबेट के लिए तैयार हैं. देर आए दुरुस्त आए. कम से कम सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा ने इसको, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब ने इतना इनिशिएटिव लिया कि इसको एक सेलिब्रेशन का हिस्सा बनाया. तो कहीं ना कहीं इतना तो ये इंडिकेशन मिल ही चुका है कि लोग बाग अब इसको एक ग्लोरी का फॉर्म में समझने लग गए हैं और मानते हैं कि भाई जो हमारे स्पोर्ट्स स्टार्स हैं उनके लिए कंट्री ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेंस में कोई कमी मतलब मीट आउट हो रही है. अवार्ड एंड रिवार्ड मिलने शुरू हो गए हैं, लेकिन ट्रेनिंग एरिया अभी भी बहुत कुछ उसमें करना बाकी है. तो विद दीज वर्ड्स, थैंक यू. जय हिंद. कोई किसी साथी का मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि अपना एक विजन था, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई 2036 में इंडिया को ओलंपिक बिडिंग शुरू हो गई, उसका हिस्सा भी बनाया गया है. कोशिश कर रहा है देश कि हम 2036 तक शायद ये ओलंपिक बिडिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रोसेस 12 साल पहले बिडिंग 3 ओलंपिक्स इन एडवांस स्टार्ट बिडिंग प्रोसेस. तो हम भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का सिग्नल है कि भाई ये जो आज तक इस धरती पे कभी नहीं हुआ, और बड़ी बड़ी मेगा इवेंट्स अपने संपन्न कराई हैं, तो हम आयोजक सफल साबित हुए हैं, लेकिन हम परफॉर्मर भी साबित हों. आयोजक के साथ साथ में हम कहीं ना कहीं अपने आप को, जब हम होस्ट होते हैं, कंट्री जो होस्ट करती है वो ये मान के चलती है कि जिस जिस देश ने वो टूर्नामेंट कराए हैं वो उनका प्लान बहुत 20-30 साल पहले शुरू हो जाता है. तो हमारे पास भी अभी वक्त है, और जब हम सेंचुरी का सेलिब्रेट करें 2047 में, हम में से कई लोग रहें ना रहें, लेकिन ये जो थॉट है, आइडियाज हैं और ये साइंटिस्ट हैं, ये कहीं ना कहीं कुछ चमत्कार लेके आए और कहीं देश को ग्लोरीफाई करें. थैंक यू. किसी की कोई क्वारी हो? एनी? यस डॉक्टर साहब, आप प्लीज. हाँ जी, हाँ जी. कई सारी टाइमर्स हुए जो शायद
पिछले 4-5 सालों में हमने कभी सुने नहीं। मुझे कभी लगा नहीं कि कभी कोई स्पोर्ट पर्सन इस तरीके से बात करे। बट वी हैव a very dynamic sport person, डॉक्टर संजीव वंडे। तो जैसे कि आप बात कर रहे थे सर कि आपने किस तरीके से आपने एक टैलेंट आइडेंटिफिकेशन की बात की। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन by using the principles of genetics and nutritional value. तो सर आज से 1 साल पहले आई एंड डॉक्टर संजीव वंडे were working on some an idea and we shocked. लिटरेचर हमें इस कंट्री से मिला है, लिटरेचर उससे दूर से नहीं मिला। एंड Chinese people they just publish 3 or 4 papers. I think you are very much 100%, you are 200% right also. And मतलब पूरे इंडिया में हमने कहां जाके इसका दरवाजा नहीं खटखटाया कि we want to initiate this process. Listen, we want to do this particular study to identify the talent, but मतलब कहीं से हमें कोई हेल्प नहीं मिली और अंतों तक हमने वो आइडिया छोड़ दिया and that was totally a very enthusiastic, but You are 200%. आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, जो आपने चीजें बताई वो काफी सही है कि हमें स्पोर्ट्स ये रिसर्च सेंटर बनाने हैं, but it will take time, sir. Minimum it will take 10 to 15 years. Yes. अगर हमारी विल पावर आज 100% है तो आज से 10-15 साल बाद वो होगी। और क्या करंट में कोई ऐसी स्कीम हो सकती है या विचार हो सकता है किसी स्कीम में, because you are very much connected with क्रीड़ा भारती, that's why I'm just discussing with you कि अगर ऐसा कुछ हो सकता है कि जैसे हमारे आइडिया है इस तरीके से कुछ आइडियाज और भी कंट्री में होंगे तो उनको कोई चांस मिल सके क्या? ये हम खुद डॉक्टर साहब ये इस प्लेटफॉर्म को इसीलिए मिस नहीं करना चाहते, हमें जैसे मौका मिला डॉक्टर साहब ने चांस भी दिया। यार ये जो यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ सही बताएं तो हमारा खुद का विचार अपने मदर इंस्टीट्यूशन को छोड़ के स्विच ऑन करने का कि वहाँ सिर्फ एक खिलाड़ी और एक सिंगल डिसिप्लिन इंस्टीट्यूशन काम कर रही है, तो हम तो अपने आप कन्फाइंड हो गए। अब जब तक ये दूसरे अपने कुलीग साइंटिस्ट के साथ नहीं जुड़ेंगे, अब आपने जेनेटिक साइंस की बात कर रहे हैं, कोई न्यूट्रिशनल हमारे, हम वहाँ इसीलिए आए थे कि हमें उनका कहीं सपोर्ट मिले। भाई हम अपना स्पोर्ट्स का डायरेक्शन की तो बात कर सकते हैं, तो ट्रेनिंग की बात कर सकते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कैसे करें, मैं कैसे डिस्टर्ब होता हूँ टूर्नामेंट के टाइम में, वो कैसे पसीने छूटने लगते हैं, धड़कन बढ़ जाती है, क्यों बढ़ रही है, मेरे को फीलिंग्स पता है, बट ये हो क्यों रहा है। अब ये तो कोई साइंटिस्ट इन्वेस्टिगेट करके, यस वी नीड दोस पीपल। हम ये इरादा छोड़ के उस इंस्टीट्यूशन को शिफ्ट किया था। तो आपका और वी आर सेलिंग इन द सेम बोट, फेसिंग द सेम प्रॉब्लम। सो लेट दिस द विजनरी पीपल पुट दिस आइडिया टू द हायर प्लेटफॉर्म, जो जिसकी जैसी कुव्वत है यदि वो किसी भी मार्फत पे बात को पहुंचाया जाए, और कहीं ना कहीं जो ग्रेट थिंकर्स हैं कंट्री में, यदि वो भी इस डायरेक्शन का आइडिया को यदि एग्री करें तो एक सेपरेट फंड एलोकेशन जैसा कोई सिस्टम, वही हम कहना चाह रहे थे इसके मार्फत कि जी ऐसा कोई एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जिसमें सारे के सारे साइंटिस्ट इंटीग्रेट होके वो इंडिपेंडेंटली, दैट शुड बी सपोर्टेड विद गुड अमाउंट, क्यों ये साइंस अकेली जो मटेरियल के ऊपर नहीं हो रही है, ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर है, एंड दैट नीड्स एक्सटेंसिव रिसर्च डॉक्टर साहब। सो मैं तो यही कह सकता हूँ, मेरी तो खुद की डिजायर है कि शायद कभी हमें भी वो मौका देखने को मिले। थैंक यू। I request Honorable Vice Chancellor to felicitate the speaker who spoke on sports law.
warm good evening and a heartiest welcome to all in the valedictory session of the National Seminar on 75 Years of India's Independence, India's Achievements and Future Aspirations. At the very outset, I welcome our Honorable Vice Chancellor, Sir, Shri Professor Raghavendra Tiwari ji. At the very outset, I welcome our Honorable Vice Chancellor, Sir, Shri Professor Raghavendra Tiwari ji. Shri Upendra Dutt ji, Founder and Executive Director of Kheti Virasat, Professor J.P. Bhukkar, CU Haryana, and Dean in Charge Academics, Professor Vasurika Sir. I take this opportunity to present the brief proceedings on the national seminar that we are currently concluding. Over the last 2 decades, under the chief patronship of Honorable Vice Chancellor Sir Professor Raghavendra Tiwari ji, we were successful in conducting a 2-day national seminar. The attendees of the seminar have gained deep insights into several issues which primarily had been divided into 6 broad themes. We had divided our 2-day national seminar into 9 invited lectures and 5 plenary lectures. The broad themes were as follows. First, Indian education system and future reforms. Second, Indian science and technology. Third, Indian culture and economic development. Fourth, Indian agriculture. Fifth, sporting glory. And finally, law and governance. The seminar has been a milestone in the history of Central University of Punjab to reflect back on what we achieved over the last 75 years and what we more need to do. In the inauguration ceremony, we had the honor of listening to very high-profile academicians and dignitaries. Our Honorable VC Spur spoke on India's stature as Vishwaguru and the uniqueness of the Indian political system. Honorable VC Sir stressed on the economic lifestyle of the village that was self-supporting and revolved around the rotational cropping method. Thus, we always had a dual circulation policy in economy. Professor Tiwari ji also enlightened us that India's great knowledge centers like Nalanda, Takshashila, Vikramshila, Vallabhi, Vidisha and Kashi, which imparted education in different disciplines such as sports, yoga, Ayurveda, mathematics, economy, agriculture, geopolitics, astrophysics, surgery, military, music, dance, art, literature, and law defined India's grand stature in the world. The larger-than-life scholars such as Sri Adi Shankaracharya, Aryabhatta, Bhaskaracharya, Brahmagupta, Gargi, Maitri, Patanjali, Sushruta, and others were the leading figures of this great intellectual legacy that India inherited. Under the guidance of Honorable Prime Minister Modi ji, India's stature before the world has grown immensely and we were being looked upon as a potential superpower. But the stature of a great power is purely a Western or a Eurocentric perspective, which stands upon the bedrock principles of international anarchy and a deep-rooted lust for power. In the contemporary times, given the conflicts around the world, with a crisscross of interstate rivalries, India, with its unique approach of Sarve Bhavantu Sukhinah and Vasudev Kutumbakam, is poised to be the Vishwaguru once again. The Indian presidency of G20 from this December proves just that. We also had Professor Kuldeep Chand Agnihotri, Advisor, Ministry of Culture, Government of India, and former VC, CU Himachal Pradesh, stressing on the importance of the concept of basic idea in the mother tongue, and hence the importance of Government of India's NEP. Further, Sri Guntha Lakshman, National Organizing Secretary, ABRSM, enlightened us with his thoughts on civilizational uniqueness of India and the holiness of the land of Punjab in the ancient and the medieval times. He also guided the teachers and students towards a common aim of bringing glory to India with their affirmative thoughts and actions. Professor G.S. Bajpai, Vice Chancellor, Rajiv Gandhi National University of Law, Punjab, shared his knowledge on the importance of the democratic ideals of the country and how important it is for us to preserve them and work for the unity of the country. Also, Professor D.K. Singh, Executive Director of AIIMS Bhatinda, spoke of the importance of good health and exercise. He made us understand the importance of regular exercise, consumption of non-toxic food and air. It's indeed only a healthy body that can contribute towards a strong nation. The invited sessions too had added to our academic achievements. The invited sessions too added to our academic achievements. Yesterday, we were enriched with prominent speakers on culture, economics, and education.
In the field of Indian culture and economic development, Professor Ashwini Mahajan from Delhi University and Dr. C. Krishna Reddy from University of Hyderabad enlightened us with rich, glorious past that India had and how the economic system of ancient India had contributed in the world economy. India, in the past, had been a Vishwaguru. The ideas and practices emanating from Indian culture and philosophy had defining influence on the world. That is why India was the one and the only Vishwaguru to ever exist. Honorable Prime Minister Modi ji's vision of Atmanirbharta in the economic field has many various diverse aspects which are directly interlinked with one another. Professor Ashwini Mahajan especially focused on India's scientific and technical achievements. He shared his ideas on how the rural area should overcome the difficulties in order to progress. Further, the session on India's educational system and the future reforms was indeed very informative. It had eminent speakers in its field. Professor Sudarshan Panigrahi stressed on the importance of NEP and how India is quickly adapting itself to a rapid changing employment landscape and global ecosystem. The NEP adopted by the Government of India aims to move education towards less content and more towards learning about how to think critically and solve problems, how to be creative and multidisciplinary, and how to innovate, adapt, and absorb new material in novel and changing fields. Today's sessions were on Indian science and technology, glorious past and bright future, Indian agriculture, and the sporting glory of India. In the morning, we had the honor to listen to Dr. V. Ramanathan from IIT BHU and Dr. Rama Jayasundar, AIIMS New Delhi, stressing on the contributions of Indian science, especially mathematics and Ayurveda and yoga. Professor Ramanathan spoke of mathematical heritage, especially in the number system. He elaborated upon the various yantras, the ideas of which gave birth to the modern-day scientific equipment such as test tube, bases, etc. Dr. Rama Jayasundar, an Ayurvedic expert in New Delhi AIIMS, stressed on the need for the integration of the modern diagnostic methods with the ancient Indian medical knowledge. She focused on Ayurveda, having a systems approach which is a functional working concept. The future Indian medical practitioners should be considering the ancient Indian knowledge system, which focuses on the physiological and psychological parameters. The ancient Indian knowledge systems also dealt with the role of etiology of the disease, that is its progression. Finally, she highlighted how Acharya Bharadwaj and Sushruta Samhita contributed, and many of their original works have been translated into different languages for the betterment of the humanity. Nevertheless, the session on Indian agriculture, we all had the pleasure as well as the honor to listen to our former Chancellor, Professor Dr. Sardara Singh Johal, stressing on the geopolitical importance of the agriculture and food security. He stressed on a visionary approach that focused upon a balanced growth and is incorporative of the role of the small and medium industries to rural areas in order to reduce poverty. He also gave us the target of technology for revolution and market regulations suiting the Indian situation. Dr. Upendra Dutt highlighted Punjab's zinc deficiency and focused upon the food web security, which is being depleted by toxic substances. He also stressed upon the genetically modified seeds and how we should be avoiding them, which in turn creates privatization of seeds. Previously, the seeds used to be saved by the farmers for the next round of cycle. But today, seeds would then be owned by the companies. Such seeds also consume more water, and the use of urea and other chemical fertilizers affect human body, food cycle, as well as the biodiversity. Agricultural reform should then be well connected with our daily lives. And there is a presence of pesticides in the placenta. He has highlighted this particular fact. So therefore, our farming should be more organic in nature, and hence this is the need of the hour. For the last session, Sporting Glory of India and the Way Ahead, we were appraised by Dr. J.P. Bhukkar from CU Haryana to share with us India's recent achievements in sports apart from the government's initiative, such as Khelo India and Fit India movement, which aims to discipline the youth and bring about a certain sense of responsibility within them. The contribution of sports, healthy and fit body in the national development of any country has been immense and holds a lot of importance in the contemporary times, wherein we have had varied challenges such as outbreaks of epidemics like COVID, hybrid warfare, etc. Sports do channelize energies in a positive way and develop sportsmanship amongst the citizens. He highlighted the importance of sports, facilities, inclusion of women athletes, genetic and
nutritional analysis, sports psychological counseling, and finally, he stressed upon the idea of a sports research center. Finally, to conclude the brief report, we had representatives from different universities and colleges of Punjab, and which stressed upon the importance of cottonseed production, removal of toxins from the environment, and agricultural reforms that probably could help the global food shortages. To further guide us on India's glorious civilization past, present, and the future aspirations, may I kindly request our Honorable Vice Chancellor to please address and bless us. श्री उमेंद्र दत्त जी, इस कार्यक्रम में अपना समय और ऊर्जा लगाकर आने वाले रिसोर्स पर्सन्स, सभी विद्यार्थी और सभी प्रतिभागीगण, आपने 2 दिन तक हमारे विश्वविद्यालय में अपना समय दिया। इस सेमिनार के जितने टेक्निकल सेशंस थे उसमें आपने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। इसको रिसोर्स पर्सन्स को, इनकी बातों को बहुत ही गहनता और सघनता के साथ आपने सुना और इसके साथ ही उन विषयों पर, जो विषय आपके सामने रखे गए, उनसे आपकी समझ में और वृद्धि हुई होगी, ऐसा मुझे पूर्ण रूपेण आशा है। सेमिनार, सिंपोजिया, वर्कशॉप्स, डिस्कशंस, ये केवल फॉर्मेलिटी और सर्टिफिकेट लेने और देने के लिए नहीं होते। जिस विषय में इस तरह की चर्चाएं को ऑर्गेनाइज किया जाता है, उन विषयों पर जितने भी प्रतिभागी गण हैं उनको प्रशिक्षित करना और उन विषयों में उनकी समझ को बढ़ाना, ये इनका, ऐसे कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य होता है। आजादी का अमृत महोत्सव एक बहुत बड़ा बैनर है और इस महोत्सव के अंदर हमारे सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्र, each and every aspect of our social life is covered under this topic. And whatever progress we have made, not only from the day of independence, but right from the dawn of Indian civilization, whatever has happened in various aspects of our social life, and also the spiritual life. As we all know that India is basically known for spiritualism. And spiritualism was considered as a potent tool to achieve whatever we want to achieve in life. So, if we trace back the history of Indian civilization, we find that up to the dawn of medieval India, we were ahead in every aspect of life. We were the torch bearer of the society, and our ancestors gave several doctrines which were cutting across the political boundaries, and they cut across the time also. हिंदी में जिसको हम काल जयी बोलते हैं, ऐसी बहुत सारी अवधारणाएं, मान्यताएं और उन मान्यताओं को जीने की समझ। यदि हम भारतीय सिविलाइजेशन की बात करें
तो बहुत सारे डॉक्ट्रिन्स ऐसे हैं जो जिनका स्पेशियो टेम्पोरल सिग्निफिकेंस है. They are applicable everywhere and all time to come. For instance, the very first doctrine is Ekam Sad Vipra Bahudha Vadanti. This is the very first doctrine that we have had right from the start of our civilization. भगवान एक है, उस तक पहुंचने के रास्ते अलग अलग है. ये पहला डॉक्ट्रिन था. और जब ये बात है तो फिर हमें क्या करना चाहिए? Let the knowledge come from all around, from all directions. We should open our windows. We should open our eyes. We should open our windows of our mind to receive knowledge which is available everywhere. ये दूसरा डॉक्ट्रिन आया. और जब ये है तो फिर वसुधैव कुटुंबकम. And when we consider the entire mother planet Earth as a family, तो फिर हम जैसे एक परिवार में रहते हैं उस तरह का सद्भाव हमें एक दूसरे के प्रति होना चाहिए. तो उसके बाद आया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया. और जब ये बात आई कि सभी लोग खुशी रहें, सब लोग सुखी रहें, सब लोग निरोगी रहें, किसी को कोई कष्ट ना हो, किसी को कोई आपत्ति ना हो, किसी आपदा से न घिरे. तो जब ये बात है तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें अपना जीवन कैसे संचालित करना चाहिए? For that, the very first Upanishad, which is called Ishopanishad, the very first sloka of Ishopanishad says that whatever resources are available on Mother Earth, individuals have share only on that much, which is minimum required to live happily. And the rest belong to God, and other human beings have share on the rest of the resources. This is the very first lesson of our first Upanishad. And when Mahatma Gandhi learnt about this sloka, he made a very remarkable statement. And the statement is that if by chance all our Granths, our Vedas, all Upanishads, if they are lost due to some reason, but if this first sloka and its meaning remains in the mind of the humanity, Hindutva can never die. I'm not talking about Hindu, I'm talking about Hindutva. The culture, Sanatani culture, the meaning that it portrays in all the doctrines that I have spoken about and many others, all our Vedas, Upanishads, are treasure of knowledge which is for humanity, not only for Indians. And if we revisit these traits of our civilization, then we can safely conclude that we are lagging behind in every aspect of life. And this implies that we have to do a lot more to become self-reliant. Self-reliant here does not mean that only we are happy. For us, self-reliant means entire world is self-reliant and entire world is happy and entire world lives in very congenial atmosphere and ensures the longevity of humanity on this earth. That is the essence of human civilization, the Bharat Sanatan civilization. And with this essence only, we should commit ourselves to work in the areas, in the profession, in the job that is assigned to us by God. And if we work with this spirit, we are sure to progress in every aspect and we are sure to become self-reliant. My compliments to all resource persons again for sparing their valuable time to be with us.
and also to all participants. Whosoever visits our university, I always consider them that henceforth they become our ambassador. Whatever good things they see about this university, whatever value system they observe here, and the best practices they observe here, they carry back among themselves and they talk about these things. And whatever shortcomings, lacuna that they observe, that also they share with us. And this is the only way for our constant improvement and reforms. So again, my compliments to all of you, and my compliments also goes to Dr. Chaitanya and everybody who was involved, who have spared their time, energy, and even money to arrange this seminar, to make the transport and stay arrangement, and to make their stay in the university as comfortable as possible. The organizing team has made all efforts to give their best, whatever we have, to you all. And if there is any, if all of you are happy, credit goes to the organizing committee. And if you are even slightly unhappy, the discredit goes to me. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you very much, sir, for your guidance and encouragement. I'm sure the students, researchers, and faculty would try to explore the doctrines in their respective projects and research. We'll aspire to be self-reliant and make the country proud of us. CUPB as an educational institute is fully conscious of its important role in the northern state of Punjab to augment India's position and the stated goals of the government. We are in the process of building capacities of our students so that they can play a more positive role and bring laurels for the country. The CUPB has always a forward-looking approach since its inception. CUPB looks forward to host similar kind of national seminars for the students of our university along with the active collaboration from other universities. The national seminar would not have been possible without the blessings of the senior colleagues and the support of student volunteers and the other support staff. May I now request Dr. Chaitanya to give us a formal vote of thanks. Umendra Dattji wanted me to say something. As you all know that VC Bungalow is not yet made here inside the campus, so I stay in town in civil lines area. And there is a kitchen garden in that court. Last year, I planted around 100 saplings of maize with the hope that I'll get something to eat. But I did not get even one to eat because all were eaten by birds. This year, I planted around 50 paneeris of Band Gobi. And as soon as the bulb was formed, everything is eaten by squirrels and also the birds. Why I'm telling this is, see the scarcity of food for birds and other reptiles. We are not growing anything for them. We are growing only for ourselves, kanak and dhan, that they cannot destroy. That is why we are concentrating on these two things only. And when we talk about Sarve Bandhu Sukhina, it's not only the Homo sapiens should be happy. Each and every creature on the earth should be happy, and being the wisest form of life on the earth, we should ensure that everyone is happy. The onus for making everyone happy lies on us. And how we can make happy? See, Umendra Dattji's philosophy of growing millet is different, so that we eat and we become healthier. My philosophy of growing millet is so that birds get food. So these two philosophies pulling together,
if we organize International Year of Millet, we all know that we are celebrating International Year of Millet, and if we organize international conference in our university, that would be really, beautiful opportunity for all of us, and this is the way through which at least we can make some part of the creature happy. Thank you. A very good evening to one and all. जैसे कि अभी सर ने बोला कि a true leader is someone who attributes the success to the entire team and takes the shortcomings on himself. So that's what sir has told here right now, and the entire team was led by our Honorable Vice Chancellor, and he's the team captain and he's the team leader. Right from day one, this idea generated till this valedictory session. Everything, there was not even a single moment where we didn't receive a no or a non-cooperation, or he spent a lot of time, lot of energy, lot of inputs in making this happen. So from the bottom of my heart, as well as on behalf of the organizing committee, I thank Honorable Vice Chancellor for this. And obviously, to make a good conference successful, lot of teams, lot of departments get involved, right from dean in charge academics to registrar to finance to PRO section to computer section to multitasking staff to Swachhata Karmacharis. Everyone plays their role, and everyone has played their role tremendously to make this seminar successful. And again, thanks to all of them for this. And finally, I also thank all the team members, each and every team. I'm not naming them because there are more than 25 or 26 technically, but there are so many people beyond the screens, in front of the screens. प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से बहुत सारे लोगों ने इसके लिए काम किया, including student volunteers. So again, a big thanks to all of them. और इस जैसे कि कल कुलदीप सर बोल रहे थे कि इस सेमिनार की सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि हमारे स्टूडेंट्स जो कल सुबह 9 बजे से लेकर आज शाम 5 बजे तक बहुत ही पेशेंटली, बहुत ही रेस्पेक्टफुली और बहुत ही सिंसियरली सारे सेशंस फुल हाउस के साथ अटेंड किया है. आई थिंक दे डिजर्व अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस. Thank you, sir. Thank you, one and all. And we now raise for national anthem, and following which we will have a high tea. After this, there will be no announcements. Thank you so much. तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा. जय गण मंगलदायक, जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे.